check, check. Hello, check. Hello, check. Hello, hello, check, check. Hello.
Hello. भेटच ना कशी म्हणजे ना भाई माझा फोटो काढायचे नाही 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 ते आडवं कसं नाही फोटोची गरजच नाही उलटं नाही झालंय ना आमच्या
ते म्हणाले बेल्ट काढा, म्हटलं काढणार होतो, पॅन्ट निसून गेली तर करायचं काय. कुंकुमं तिलकं कृत्वा गंधामंगलंजा सुवक्षतः पांतो आयुष्य. तीन बार पानी प्यायचं, 3 बार पानी पीने का, चौथी बार पानी थाली में छोड़ देने का. ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, छोड़ दीजिए. ओम गोविंदाय नमः, 3 बार पानी पीजिए. ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णवे नमः, मदनाय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, जरिद्राय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, शंकराय नमः, वासुदेवाय नमः, प्रद्युम्नाय नमः, अनिरुद्धाय नमः, अधोक्षाय नमः, नरसिंहाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, उपेन्द्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमो नमः. भगवते वासुदेवाय. ये फूल हाथ में लेने का, गणेश जी का स्मरण करने का, सरस्वती माता का स्मरण करने का, उनको बोलने का आज पूजा कर रहे हैं आप सब, यहाँ पे आइए, ऐसा बोल के यहाँ पे रख दीजिए पत्ते के ऊपर. इष्टकुलारादिवदाभ्यो नमः. एतत्ते पुष्पदामलहं समर्पयामि, सुवर्ण पुष्पार्घ्य दक्षिणान् समर्पयामि, नमस्करोमि. हाथ जोड़िए, गणेश जी का स्मरण कीजिए, अपने कुल देवता का स्मरण कीजिए, सरस्वती महालक्ष्मी का स्मरण कीजिए. वरद मूर्धय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः, नारायणाय संगाय सुपरिवार देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. एतत् देवताभ्यो नमः. अभिघ्नस्तु. हाथ में चावल लीजिए. ओम सुमखश्चै शुक्लांबरं सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नमस्ते जामंगलानि शामृते भगवान् अमृतप्रिये तदेव विद्या लक्ष्मीपते दिव्यस्परामे लाभस्तेजां तेजां गुणतेजां राजा केशाविन्दिवरजां वरदेवतो जनार्दना गुरुभानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरान् सर्वधर्मयादव सर्वकार्यार्थिते अभिसिद्धार्थ्यर्थमुचितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नमहागणाधिपतये नमः. श्री भुवनेश्वरः देवादिशन्दन सिद्धि ब्रह्मेशान जनार्दनः तिथिर्देव च योगश्च कर्णञ्चैव सर्वं विष्णुमहिं जगदा आद्य वर्तमान एवं ग्रहगण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ. बोलिए मम आत्मनः. आपका गोत्र बोलने का, आपका पूरा नाम, नियुक्तः अहम, अपने कॉलेज का पूरा नाम बोलने का. आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम अस्माकं सहकुटुंबानां तथार्च मम इह विद्यार्थीनां शिक्षकानां उत्तम आरोग्य ऐश्वर्य सुबुद्धि सुयश सुकीर्ति सुफल प्राप्त्यर्थम तथा च इच्छित मनोरथ कामना सिद्ध्यर्थम तथा च मम इह वास्तुमध्ये सदैव महागणपति भवानी शंकर सरस्वती महालक्ष्मी देवता कृपाशीर्वाद कृपा प्रसाद सदैव प्राप्त्यर्थम तथा च अद्य दिवस शुभ दिवस प्रीत्यर्थे महागणपति वरुण पूजन नवग्रह पूजन तथा च यथाशक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञानेन यथा मिलित उपचार द्रव्य द्वारा पूजन तंत्रेण करिष्ये. छोड़ दीजिए. तत्रादो निर्विदासितर्दम महागणपति पूजनम सस्तिमुन्याह वादनम तथा च आवाहित देवता पूजनम अहं करिष्ये. हाथ जोड़िए, गणेश जी का स्मरण कीजिए.
ओम गणानन्द्वा गणपति हवामहे प्रियानन्द्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्द्वा निधिपतिगुं हवामहे वदो मम अहमजानि गणपतमात्मजारम्भ। चावल लीजिए, यहाँ पे गणेश जी को चावल चढ़ाइए। महागणपते नमः हवानार्घ्यक्षतां समर्पयामि। गणपति नमः, एक चम्मच पानी चढ़ाइए। पादयोः पाद्यं समर्पयामि महागणपतये नमः। चम्मच में पानी लीजिए। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि महागणपतये नमः। मुख्याचमनीयं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि महागणपतये नमः। पयोदधि कृतं चैव मधुशर्करायुतं स्नानार्थ प्रयच्छामि गृहाण परमेश्वर। पंचामृत स्नानं समर्पयामि महागणपतये नमः। शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि महागणपतये नमः। गणेश जी का अभिषेक शुरू हो रहा है। ओम सहनावोदो सहन भुनक्तु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्यावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम नमस्ते गणपते तमे प्रदेशं तत्त्वमसि तमे केवलं कर्तासि तमे केवलं धर्तासि तमे केवलं हर्तासि तमेव सर्वं खलिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं वृत्तं भजमि सत्यं भजमि अवत्वं माम् अवक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहितमन्तात् त्वं वाग्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदं तत्तो जायते सर्वं जगदं तत्तो तिष्ठति सर्वं जगदं त्वैलेमिषति सर्वं जगदं ते प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नमः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधरसुरित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वं योगिनो ध्यायेन्द्रित्यं त्वं ब्रह्मा स्तं विष्णु स्तं रुद्र स्तं इन्द्र स्तं अग्नि स्तं वायु स्तं सूर्य स्तं चन्द्रमा स्तं ब्रह्म पूर्वस्वरं पूर्वमुच्चार्य वर्णादितरं मनुष्यम् अर्धेन्दुलसितं आरुणरुद्धं मेधतो मनस्वरूपं ककार पूर्वरूपं मकारो मध्यं रूपम् अनुस्वार्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं सैषा गणेशविद्या गणकृषि निजरुगादि गणपति एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। रथं च वरदमस्तिर्विप्राणं पोषकं रक्तलम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवसं रक्तानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः देवं जगत्कारमिदम् आविर्भूतं सृज्यादो प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति नित्यं च योगी योगिनं नमो व्रातपदये नमो गणपतये नमः प्रमदपदये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शुभदोताय श्रीपरमूर्तये नमः। ओम नमो सावीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्यावहै। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। मोरया मोरया। महागणपति नमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे महागणपति नमः चावल चढ़ाइए। चंदनं च महदिव्यं पवित्रं पावनाशनं पदाहृदि नित्यं लक्ष्मी वृद्धः संपदां गन्धामलञ्चास्तु अक्षतः पान्तु आयुष्मस्तु। हल्दी कुंकू देते लावायला आप हल्दी कुंकू लगाइए। महागणपति नमः वस्त्रोपवस्त्रार्थे चावल चढ़ाइए। नहीं महागणपति नमः अक्षतः समर्पयामि। महागणपति नमः विलेपनार्थे चंदनं समर्पयामि। चंदन टीका लगाइए। गन्धद्वारां दरादर्शां नित्यविष्टां ईश्वरीं सर्वभूतानां तामेव उपवैश्यम् उपविदार्थे प्रत्यक्षेत्युपवीतं समर्पयामि। ओम भूर्भुवः स्वाहा। महागणपतये नमः। महागणपतये नमः। यज्ञोपवीतं समर्पयामि महागणपतये नमः।
महागणपति नमः। हरिद्रा कुंकुमं सौभाग्यद्रव्यं समर्पयामि। हरिद्रा कुंकुमं सौभाग्य सकल सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि महागणपतये नमः। माल्यादीन सुगन्धेन मालत्यादने प्रभो मयार्धने पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्। ओम काण्डात् काण्डात् प्रवहन्ति पुरुषपरि एवानो दूरे प्रतनो सहस्रेण च तेन च महागणपति नमः। प्रसन्न पूजार्थे दुर्वाङ्गुरपत्राणि समर्पयामि महागणपतये नमः। प्रसन्न पूजार्थे दुर्वाहंकुरान् समर्पयामि महागणपति नमः. 2 वेळेला पाणी तांबण्यामध्ये सोडून दे. महागणपति नमः. धूपम समर्पयामि महागणपति नमः. धूपर छोड़ दीजिए पानी. धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि तत्परि नैवेद्यार्थे चतुष्कोणी मंडलं कृत्वा नैवेद्यार्थे दुग्धवटिका नैवेद्यं समर्पयामि. इसके ऊपर से पानी घुमाइए. ओम प्राणाय नमः पनाय नमः व्यानाय नमः उदराय नमः समनाय नमः ब्रह्मणे नमः देवता प्रीत्यर्थे नैवेद्यं नैवेद्यमध्ये पानीं समर्पयामि. पुनरपि पूज्यम्. ओम प्राणाय नमः पनाय नमः व्यानाय नमः उदराय नमः समनाय नमः ब्रह्मणे नमः. उत्तरापोषणं समर्पयामि. हस्तप्रक्षालं समर्पयामि. मुखप्रक्षालं समर्पयामि. करोदवर्ते चन्दनार्थे पुष्पद्वारा चन्दनं समर्पयामि महागणपतये नमः. निष्क्रिय दक्षिणां समर्पयामि महागणपतये नमः. वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्. अष्टविनायक प्रसिद्ध गणपति या पुण्यभूमी मध्ये कसबा गुपचुपमाती मोदी चिमण्याच्या दर्शन जाऊया. चार सभाग तळ्यातला गणपती त्याच्या पुढे दशभुजा. आठवा श्रीमंत दगडूशेठ गणपती कार्यास बोलावूया. गणपती बुद्धी मोरया. ओम सर्वेशामाश्रया भूमित्रवृता आनंद सादरीय तान नमामि वसुंधरा. चावल को लगाइए. या सामरशदामित कलशार्चने कलश. ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्मृताः मूले रुद्रशिरो ब्रह्मा मध्ये मातृमृताः कुक्षौ सागराग्रे सप्तदीपावसुंधरा. ऋग्वेदो यजुर्वेद ध्यानविधिकृताः आयान्तु पूजार्थं दुर्दशयकारकाः गंगे च मुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले सन्निधिं कुरुः. घनसारं मनोरम सौभाग्य संतति करे सर्व कार्येषु शोभनाः. फलेन प्रथम सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् प्रदानेन सफलाश्च मनोरथाः. स्वरूपचारार्थे माल्यार्थेने सुकान्धेने मालत्यादने प्रहो मयार्धने पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम्. पूर्णपात्रनिधाय वरुणं पाशहस्तं च यातसा मधिमेश्वरम् आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् वरुणाय नमो नमः. उत्तरकलशे वरुणाय नमः. वरुणं सांगं सह परिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि. वरुणाय नमः ध्यायामि चिंतयामि. यहाँ पे चावल चढ़ाइए. वरुणाय नमः. आसनाध्यक्षतान् समर्पयामि. समर्पयामि वरुणाय नमः. यहाँ पे चढ़ाने के बाद में यहाँ पे चढ़ाइए. आसनाध्यक्षतान् समर्पयामि वरुणाय नमः. चन्दनं समर्पयामि वरुणाय नमः. वारुण्ये नमः. सुमनोहरं विलेपनं सर्वश्रेष्ठ चन्दनं प्रतिगृह्यताम्. सर्व अलङ्कारार्थे अक्षतान् समर्पयामि वरुणाय नमः. वारुण्ये नमः. हल्दी कुंकू चढ़ाइए. हरिद्रा कुंकुम सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि वरुणाय नमः. वारुण्ये नमः. रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि. हे पाहिजे की कॅमेरा सांग. पुष्पाणि समर्पयामि. सेवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्ना गजान्ति करविरगालपुष्पे बिल्वप्रवाल तुलसीदलमालतीवे त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद. सचिन सर अंकुरपत्राणि समर्पयामि वरुणाय नमः. वारुण्ये नमः. हे हालत नाही काय बघा फुल पब्लिक हे दाखवणार सर्व. दीपं समर्पयामि. दुग्धवटिका नैवेद्यं समर्पयामि. इसके ऊपर से पानी घुमाइए.
ओम प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदनाय नमः समनाय नमः ब्रह्मणे नमः नैवेद्य मध्ये पानीयं समर्पयामि पुनरपि भोज्यं प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदनाय नमः समनाय नमः ब्रह्मणे नमः उत्तराभोजनं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि चन्दनं समर्पयामि वरुणाय नमः वरुण्ये नमः सुवर्णपुष्पार्धे निष्क्रिय दक्षिणां समर्पयामि यातसामतिमेश्वरम् आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् वरुणाय नमो नमः मन्त्राक्षतान् समर्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतपूजनेन अपां पतिवर्णः प्रियतान्न मम कलश की प्रार्थना कीजिए सब बैठे हुए हैं। ओम कलशस्य समुखे विष्णु कंठे रुद्र समाहृता मूलसितो ब्रह्मा मध्ये मा कृगणासः कुक्षौ ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अंगै सहिताश्रवणता अंतिबलीकृता आयान्तु मम बोलिए सब चांद्यर्धम दुर्दशकारकाः कलश अक्षतान् क्षिपेत देव ठहर में चावल दीजिए आपके माता जी का स्मरण कीजिए यहाँ पे चावल चढ़ाइए मातृदेवो भव पिताजी का स्मरण करके चढ़ाइए पितृदेवो भव आचार्य बोलने का और चावल चढ़ाने का आचार्य देवो भव अतिथि यानी मेहमानों का स्मरण करके चढ़ाइए अतिथि देवो भव सब चावल राइट हैंड में लीजिए सब भगवान का ब्राह्मणों का स्मरण करके यहाँ पे चढ़ाइए सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः ओम तताः अवनिकृतजानुमण्डलाः कमलमुकुलसदृशम् अंजलिं दक्षिणे नमामि प्रार्थयते प्रार्थना हो एता सत्या आशिष सन्तु प्रमाणे पुण्यहम पुण्यहम दीर्घानातु दीर्घानागान ज्योति प्रमाणे पुण्यहम निर्गमदेव दीर्घमायुरस्तु मध्ये संत शिवापः गन्धामङ्गलं चासो अक्षदा पान्तु आयुषमसो पुष्पाणि पान्तु श्रीमसो ताम्बूलानि पान्तु आयुष्यमसो दक्षिणा क्रतु दमदान विशिष्टानां ब्राह्मणानां मनः समाधीयता समाहित मनसस्माः बोलने का प्रसिद्धन्तु भवन्तः बस प्रसन्ना स्माः इसका मतलब है आप को बोले कि आप यहाँ पे आके प्रसन्न है क्या हम बोले प्रसन्न है इसका मतलब भी ऐसा टेढ़ा हाथ रखने का और सब अस्तु अस्तु बोलिए अस्तु यानी जो अच्छा है वो हमको चाहिए इसलिए अस्तु बोलने का यहाँ पे अस्मिन् कर्मणे यजमानस्य गृहे सदा सर्वदा शान्तिरस्तु पुष्टिरस्तु तुष्टिरस्तु वृद्धिरस्तु अविघ्नमस्तु आयुष्यमस्तु आरोग्यमस्तु शिवं कर्मास्तु कर्म समृद्धिरस्तु धर्म समृद्धिरस्तु वेद समृद्धिरस्तु शास्त्र समृद्धिरस्तु पुत्र समृद्धिरस्तु धन धान्य समृद्धिरस्तु हाथ जोड़िए सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सब बोलिए मह्यम सह कुटुंबिने महाजना नमस्कृणाय आशीर्वाद संकल्पित पूजनाख्य स्नान पुण्याहम अनुपुरंतो अस्तु पुण्याहम अस्तु पुण्याहम सब बोलिए मह्यम सह कुटुंबिने महाजना नमस्कृणाय अध्यक्षमान संकल्पित पूजनाख्य स्नान आयुष्मदे स्वस्ति आयुष्मदे स्वस्ति बोलिए मह्यम कर्मवर्धिताम कर्मवर्धिताम कर्मदाम वृद्धि समृद्धि ये चावल देने का दोनों कलश के ऊपर डालने का ततः उत्तर शनशले वामसे गृहीत्वा ताभ्या धारमंत्रे अभी ये जो कलश है वो राइट हैंड में लेने का ऐसे पकड़ने का पत्ता भी पकड़ने का
ओम असिधिर्मं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतवर्षाकालेकणिपत्रमोर्वे लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तत्पितव गुणानामीशवरनयाति। बोलिए शिवम शिवम शिवम। शिवम। सब हाथ जोड़ के बैठिए। ओम जपादनंकाशम काश्यपेयम महदुदिम नमो हरिम दरबाबं नमरुदोस्मि दिवाकरं दतिजंगद्यारापं क्षेरोदारसंभवं नमामि क्षीरं सोमं शंभरमग्रभूषणं धरणीकृतं भूतमिदुत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्ति असञ्च मङ्गलप्रमाम्यहं प्रियं गुलिकाशं विपुणप्रत्यं बुधं सर्वमिदं तमुधर्माम्यहं देवानां च ऋषीणां च गुरुङ्काञ्च सन्निपमतिभूतं त्रिलोकेऽहं तन्नमामि प्रहिपतिं हिमकुन्दमनालाभं दैत्यानापरङ्करं सर्वचातुर्वृत्तारं भार्गणमाम्यहं नीलाञ्जनसमाभासनोदरयमाग्र्यं छाया मार्तनभूतनमामि शनैजलम् अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यप्रतलं सुभिकाकृतं भूतन्तं राहुं नमाम्यहं पलायधनङ्काशं तारकाग्रमसकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं नमाम्यहम् अमृताभिषेकोस्तु शान्ति पुष्टि तुष्टि शास्तु। नेत्रोदकस्पर्शः प्रार्थना प्रचारम समर्पयामि नमस्करोमि। अभी हाथ जोड़िए, अपने कुलदेवता देवी जो है उनका स्मरण कीजिए। ओम गिरिनन्दिनि नन्दितमेदिनि विश्वविनोदिनि नन्दनुते गिरिवरविन्द्यशिरोदिनि भासिनि विष्णुविलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशितिकण्ठकुटुम्बिनि भूरि कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। आत्मकुलदेवताभ्यो नमः। प्रार्थना प्रसारं समर्पयामि नमस्करोमि। अनेन कृतपूजनेन तेन श्री आवाहित देवता प्रियतान्न मम। आप फूल रखिए। आप चावल चढ़ाइए। आप सर फूल रखने का पहले ये लाल फूल सूर्य ये लाल लीजिए आप। ओम नहीं, आप चावल चढ़ाने का सर फूल रखेंगे, बाद में आप उसके ऊपर चावल रखिए। ओम जपाकंगाशम पांढरे द्या इकडे, पांढर सफेद फुल इथे द्या। सूर्याय नमः। सूर्यमावाहयामि। चंद्र भगवान को सफेद चंद्र कोपऱ्यात आहे। दधिशंकर्यारापं क्षीरोदाहरणं सोमं नमामि क्षीरं सोमं सर्वभूषणं सोमाय नमः सोममावयामि। मंगल जो है लाल कलर का है, इसलिए मंगल को लाल फूल। धरणी गर्दम बहुत विद्युत कांति समप्रभं कुमार शक्तिं मंगलम प्रणमाम्य मंगलाय नमः मंगलम आवाहयामि। बुध जो है वो बुध पीला कलर का है, इसलिए पीला यहाँ पे। ओम प्रियं गुलिकाय बुधम आवाहयामि। फिर गुरु भी पीला कलर का है। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुकाञ्चन सन्निपं बुद्धिभूतं त्रिलोकजनकं बृहस्पते नमः बृहस्पतिम् आवाहयामि। पूरा सफेद कलर का है। चांदनी स्टार हिमकुन्दमनालाभं दैत्यानापरङ्करं सर्वशास्त्र प्रोक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहं शुक्राय नमः शुक्रम् आवाहयामि। समाभासं रविपुत्रयमाग्रजं छायामार्दण्डसम्भूतं तं नमामि शनिश्चरं शनिश्चराय नमः शनिश्चरम् आवाहयामि। श्रीकाग्रपसम्भुतं तं राहु प्रणमामि राहवे नमः राहुम् आवाहयामि।
पलाशनङ्काशं तारकाग्रमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मघोरतं केतुं प्रणमामि केतवे नमः केतुमावाहयामि ग्रहदेवताभ्यो नमः स्वरूपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि पूजार्थे पुराङ्गपत्राणि समर्पयामि आवाहितदेवताभ्यो नमः नवग्रहदेवताभ्यो नमः धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि तदुपरि नैवेद्यार्थे कदलीफल पेड़ा के ऊपर पानी को पाइए दुग्धवटिका नैवेद्यं समर्पयामि प्राणायाम नमः समनाय नमः ब्रह्मणे नमः नैवेद्यमद्यपानीं समर्पयामि पुनरपि भोजं प्राणाय नमः पराय नमः व्यानाय नमः उदराय नमः समनाय नमः ब्रह्मणे नमः देवता प्रीत्यर्थ उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि करोद्वर्ते चन्दनार्थे पुष्पद्वारां चन्दनं समर्पयामि सुवर्णपुष्पार्थे निष्क्रिय दक्षिणां समर्पयामि केला के ऊपर पानी छोड़ दीजिए कदली फलम समर्पयामि नमस्करोमि ओम कलशस्य मुखे विष्णु गण्डे रुद्र समाश्रितां मूले तत्रासितो ब्रह्मा मध्ये मातृणाहृतः कुक्षो दुसागरा सर्वेति वसुन्धरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो आयान्तु पूजार्थं दुर्देशकारकाः गङ्गे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु लगाइए कलश को श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गन्धाढ्य सुमनोहरं विलेपनं सर्वश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां कलशाय नमः सर्व अलंकारार्थे चावल चढ़ाइए सर्व अलंकारार्थे अक्षतां समर्पयामि हल्दी कुमकुम लगाइए कलश को हरिद्रा कुंकुमं सकल सौभाग्य द्रव्यं समर्पयामि गन्धद्वारां दरधर्जां नित्यपुष्टां करिजणि विजयधरपुत्रां दाम्योपवै श्रियं लगाइए ऊपर का कलश के ऊपर माल्याद्र सुगंधेन मालत्याद्र में ब्रह्मयार्धन पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् कलश को नीचे फूल रख दीजिए प्रसन्न भुजार्धे ऋतुकालो पुष्पाणि कलशाय नमः प्रसन्न भुजार्धे दुर्वाङ्गुरपत्राणि समर्पयामि कलशाय नमः धूपं समर्पयामि धूपं पानी में छोड़ धूपं समर्पयामि दीपं समर्पयामि कलशस्य देवता प्रीत्यर्थं नैवेद्यं समर्पयामि पेड़ा के ऊपर से प्राणायाम ओम नमः पराय नमः व्यानाय नमः उदराय नमः समनाय नमः ब्रह्मणे नमः देवता प्रीत्यर्थ नैवेद्य मद्यपानीयं समर्पयामि पुनरपि भोज्यं प्राणाय नमः पराय नमः व्यानाय नमः उदराय नमः समनाय नमः ब्रह्मणे नमः उत्तराभूषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं समर्पयामि मुखप्रक्षालं समर्पयामि करोद्वर्ते चन्दनार्थे पुष्पद्वारं चन्दनं सम्पूज्यं समर्पयामि नमस्कृत्यामि वरुणं शासन च यातसामदिवेश्वरम् आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन् वरुणाय नमो नमः कलश को चावल चढ़ाइए आप भी चढ़ाइए उधर चावल मंत्राक्षदान समर्पयामि नमस्करोमि आप यहाँ पे गाय है गाय को चंदन टीका लगाइए आप हल्दी उनको लगाइए गवा देवे नमः गवा मंगेशी संति भुवनानि चतुर्दश गवा देवे नमः विलेपनार्थे चंद्रम समर्पयामि गवा देवे नमः स्वरूपचारार्थे चावल गन्धाक्षतपुष्पं सम्पूज्यं गवा देवे नमः माल्यार्थे ऋतुकालोद्भव पुष्पाणि समर्पयामि गवा देवे नमः गाय को नमस्कार कीजिए प्रार्थना पुरस्कारं समर्पयामि नमस्करोमि आप वहाँ पे जो धान्य रखा है धान्य सप्त धान्य उसके ऊपर हल्दी को लगाइए सुपारी को बीच में ओम धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शतसंवत्सरं दीर्घमायुः धान्य राशि देवे नमः स्वरूपचारार्थे गंध अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि धान्य राशि देवे नमः धान्य राशि देवे नमः नमस्कारम समर्पयामि नमस्करोमि वहां पे जो साड़ी है वो हाथ में लीजिए आप बोलूंगा वो बोलिए आप तांदूळ ठेवा गुरुजी
बोलिए। देही सौभाग्यम आरोग्यम देहि देवी परम सुखम रूपं देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जहि पुत्रान देहि धनं देहि सर्व कामांश्च देहि में। कलश को टच करके वहां पे रख दीजिए। वस्त्रो वस्त्रार्धे कंचकी वस्त्राणि समर्पयामि वारुण्ये नमः समीच्यै नमः प्रार्थना प्रचारम समर्पयामि नमस्करोमि। हाथ के ऊपर से पानी छोड़ दीजिए आप। अनेन कृत भोजनेन आवाहित देवता प्रियदान मम। पीछे होने का हवन के लिए तैयारी। ये निकालना पड़ेगा। ओम अग्नि पुरुषा रक्त सर्व देवमयव्यः धूम्रज तस्मै तन्मन्मः अग्निनारायण देवताभ्यो नमः। आच्छादनंदुरित्य वो ढक्के लाने का, इसलिए वो पान रखा है। वो ढक्कन निकालने का, उसको बोलते हैं आच्छादन। आच्छादन यानी उसका ढक्कन। आच्छादनंदुरीकृत्य वेणु धमन्या प्रबोध्य ध्यायेत। थोड़ा सा फूंक मारने का। वेणु यानी फूंकनी। वेणु धमन्या प्रबोध्य ध्यायेत। अग्नये नमः। पानी लीजिए, 3 बार पानी ऐसे घुमाइए। अग्निम परिसमोहनम अग्निम परिसमोहनम अग्निम परिसमोहनम। अभी 4 बार उल्टा घुमाइए। अग्निम परियोक्षणम अग्निम परियोक्षणम अग्निम परियोक्षणम आवाहित युदाभ्यो नमः अग्नये नमः। तो ऐसे डालने का थोड़ा ऐसा। आप तिल दिए ना, तिल, वो तिल डालने का। ओम सदा सिद्ध्यर्थम मुझतो यह सुरासुरैः सर्व विघ्न तस्मै गणाधिपति नमः गणपतये नमः स्वाहा बोलने का। गणपतय इदं न मम। अभी स्वाहा बोलेंगे तो डालने का है। अभी नवग्रह की आहुति है। ओम जपादनंगाशम काश्यपेयम महादेव नमो हरिम सर्वपापग्नमरदोस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः स्वाहा जपाकुलं काशम काशीधरम नमो हरिम सर्वपापग्नमरदोस्मि दिवाकरं सूर्याय नमः स्वाहा ओम दतिशंकर्यालापं शेरोदारदं भवां नमायिद्रं सोमो शंपरमुकुटधरं सोमाय नमः स्वाहा सोमाय नमः स्वाहा धरणीकृतं भूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्ति असञ्च मङ्गलं प्रणमामि मङ्गलाय नमः स्वाहा धरणे गर्भदम्पतं विद्युत्कान्ति समप्रभं घोरशक्ति मङ्गलं प्रणमामि मङ्गलाय नमः स्वाहा
बुधम द्रविदम तमु धर्मामि बुधाय नमः स्वाहा। ओम सौम्य सुनविदम तमु धर्मामि बुधाय नमः स्वाहा। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन देवां बुद्धिभूतं त्रिलोके हिन्दमां बृहस्पतिं नमः स्वाहा। ओम देवानां च ऋषीणां च गुरु काञ्चन सन्निपं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं बृहस्पते नमः स्वाहा। ओम लाभं दैत्यानां गौरवं सर्वजातप्रदानं शुक्राय नमः स्वाहा। ओम हिमकुन्दं प्रलां दैत्यानां परं गुरुं शरसार पारगं प्रणामामि शुक्राय नमः स्वाहा। ओम नीलांजन समाभासं प्रतरयमाग्र्यं छाया मार्तनं भूतत नमामि शनैश्वरं शनैश्वराय नमः ओम स्वाहा। नीलाचल समरविद्रामग्रजाय मारतंडसमुतं तं नमः शनैश्वरं शनैश्वराय नमः स्वाहा। महावीर्यं चन्द्रादित्यमर्दनं विवेकाकृतं भूतं तं राहुं नमामि राहवे नमः स्वाहा। श्रीकाकर्मसम्भूतं तं राहु प्रणमामि राहवे नमः स्वाहा। काशं दार्घ्यग्रहमसकमरुद्रात्मकं घोरं तं केतवे नमः स्वाहा। काशं कर्मस्तकं रौद्रात्मक घोरतं केतुं प्रणमामि केतवे नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। ओम मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय नमः रुद्राय नमः स्वाहा। रुद्राय शंभवे प्रदेशाय सर्वाय महादेवाय रुद्रायो इदन नमः, इसका मतलब है हमने जो दिया है उसका स्वीकार कीजिए। अभी जो वास्तु है यहाँ पे जो वास्तु रहता है इसका हवन करने का है। ओम वास्तोष्पदे नमस्तुभ्यं ओषयवरोह मधुरं धनधान्यादि समृद्धिं कृता वासुपदे नमः स्वाहा। वास्तोष्पदे नमस्तुभ्यं ओषयवरोह मधुरं धनधान्यादि समृद्धिं कृता वासुपदे नमः स्वाहा। ओम वास्तुष्पते नमस्तुभ्यं भूषाय प्रतिवर्धन दानि संपरिं गुरु वास्तुष्पते नमः स्वाहा। ओम वास्तुष्पदे नमस्तुभ्यं नमः स्वाहा। तुभ्यं भूषाय प्रतिवर्धन दानि संपरिं गुरु वास्तुष्पते नमः स्वाहा। वास्तुष्पते नमस्तुभ्यं भूषाय प्रतिवर्धन दानि संपरिं गुरु वास्तुष्पते नमः स्वाहा। नमस्तुभ्यं भूषाय प्रतिवर्धन दानि संपरिं गुरु वास्तुष्पते नमः ओम वास्तुष्पते नमस्तुभ्यं भूषाय प्रतिवर्धन दानि संपरिं गुरु वास्तुष्पते नमः
ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतादारोपमृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात् स्वाहा स्वाहा। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। मृत्युंजयाय नमः स्वाहा। ओम त्र्यंबके यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। मृत्युंजयाय ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। लक्ष्मी नमः स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। महालक्ष्मी नमः स्वाहा। अग्निनारायण देवताभ्यो नमः। या फिर रुक दीजिए। नमस्करोमि। नैवेद्यार्थे दुग्धोनिका नैवेद्यं समर्पयामि। सत्यन्तमृदुरच्चामि। नमस्ते। काढा गुरुजी बॉक्स काढा करा ओपन. दोष परिहारार्थम दुर्वासुर कचरा आणि दुग्धोनिका नैवेद्यं समर्पयामि। ओम प्राणाय नमः महाव्यानाय नमः उदराय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि पुनरपि भोज्यम्. ओम प्राणाय नमः पराय नमः नमः उदराय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि चन्दनार्थे. नमस्करोमि। खड़े हो जाइए। अभी यहाँ पे जो है पूर्णाहुति है।
थाली दे दीजिए वापस। हाँ बोलेंगे तब ये थाली का सब अंदर डालने का, बाद में सब हाथ में जो है वो डालने का अंदर, पूरा पूरा एक साथ। स्वाहा होने के बाद, हाँ स्वाहा होने के बाद बोलेंगे मैं। हरिओम आदे दान तव च महिमा वाङ् मनसयो रतद्व्यावृत्यायन् चकेतमभिधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्य कतिविध गुणः कस्य विषयाः पदे त्वरवाचेने पततेन मनः कस्य न वचः इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमच्छङ्करपादयोः अर्पिता तेन देवेश प्रियता मे सदा शिव स्वाहा। औषधर्मं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरदवर्शाखा लेखने पत्रमुर्वे लिखति गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपिदव गुणानामेशवारण्ययादे। हरि ओम हर हर महादेव। गणपति बाप्पा मोरया। मंगल मूर्ते, मोरया। सरस्वती माता की जय। महालक्ष्मी माता की जय। महाविष्णु प्रभु विष्णु महेश्वरानि प्रदैत्यानां तन्नमामि पुरुषोत्तमम्। अग्निपुरुषरक्त सर्वदेवमयोव्यः धूम्रज्योत तस्मै तन्नमो नमः। अग्निनारायणदेवताभ्यो नमः। सब हाथ जोड़िए, अग्निनारायण की प्रार्थना कीजिए। बोलिए स्वस्ति श्रद्धाम मेधाम यशः प्रज्ञां विद्यां बुद्धिं श्रियं बलम आयुष्यम आरोग्यम देहि मे हव्यवाहनो देहि मे हव्यवाहनो। अग्निनारायण देवताभ्यो नमः। प्रार्थना प्रचारम समर्पयामि नमस्करोमि। अभी आरती शुरू हो रही है, सब खड़े हो जाइए। श्रीमंगला निर्भवन्तु सुखकरदा दुःखहरदा वार्ता विघ्नाजी दुर्वी कृपायाजी
सर्वांगी सुंदर वटजेंदुराची कंठी जळके माळ मुक्ता जय देव जय मंगल मूर्ती श्री मन कामना मूर्ती जय देव जय देव गवरी कमरा चंदनाची ओढी कम कम केशरा हिरे जळिता मुकुट शोभतो वरा करुण तीर्ण कोरे चरणे सागरिया जय देव जय मंगल मूर्ती जय देव जय देव तांबर फणिवर वंदना शरण सोंड वक्र तोंड त्रिनयना रामाचा वाटपाहे सदना संकटी पावे निर्वहे रक्षावे दुर्वर वंदना जय देव जय देव संसारी अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी जन्म मरण देवारी वारी बदलो आता संकट निवारी ईश्वर तारक संजीवनी जय देव जय देव चारी कमलै परंदन बोलवे गाई विवाद करिना पडलो प्रवाही तू भक्ताला लावलाही प्रसन्नवदने प्रसन्नवदने दासा बाजून जोडी थोडी भाषा अव्वे तुझो जोडी कोण पुरवेला आशा नरहर दल्ले झाला पदभंग जडेजा ब्रह्मांडी माळा विषय कंठ काळा त्रिनेत्री ज्वाळा लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा निर्मळा जय देव जय देव जय नयनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमरांच्या माळा देवरीचे उदळण शशगंडाणेला सीता शंकर शोभे उमावेला जय देव जय देव जय शंकरा जय देव गौरा जय देव जय श्यामागे अवधीत लालवडले सुर बणे नीलकंठन प्रसिद्ध झाले आरती ओवाळू तुझकर पर गौरा जय देव जय देव सर्वदनारी पंचानन मनमोहन मुनिजन सुतकारी शतकोटी देवी उच्चारी रघुकुल तिलक दासांदोरे जय श्री शंकरा आरती ओवाळू तुझकर पर गौरा जय देव करुणावतारम संसारसारम भुजगेंद्र वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि डोळ्यांनी पाहिलं रूप तुझे प्रेमे आलिंगन म्हणे नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः त्वमेव त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव करोमि यज्ञं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं शिवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हृदयं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे मोरया मंगल मूर्ति ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ओम यज्ञेन यज्ञमये स्थानि धर्माणि प्रतिपादन्ते हनः पूर्वे साध्या सन्ति देवाः नमो वयं वैश्रवणाय गुरवे समे कामाय मह्यं काले गुरुवे रोणादातु कुलेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं परमेष्ठं राज्यं सत्यमयं समन्वपर्या ईशात् सार्वभौमस्था समुद्रपर्यन्ताया एकराळि तदप्येषु शोको हीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्ग्रहे आविच्युतस्य कामप्रेर्विश्वेदेवसमासदैः वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते दन्तिः प्रचोदयात् शाय विद्महे देवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् न कुमारी च धीमहि तन्नो प्रचोदयात् विष्णुवन्दे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् समर्पयामि गणपती बाप्पा मोरया मोरया जय वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधिनन्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भदमा त्वमजासि गर्भदम् ॐ नमो गणेभ्यो गणपतिभिषवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभिषवो नमो नमो गृसेभ्यो गृसपतिभिषवो नमो नमो विश्वरूपेभ्यः विश्वरूपेभ्यो नमः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वज्रेमाक्षभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वं जतनुभिर्वशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नस्तापूगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षुरिमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः सामा शान्तिः ओगदयः शान्तिः सर्वगुं शान्ति सुशान्तिर्भवतु
Hello, 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 hello. Hello. Dear friends, so we have a unique practice which is called oath-taking ceremony in front of Lord Ganesha. I request all the faculty members and staff members, those who are here, please come forward and come and assemble with us. All the faculty and staff members. Now all the students and the parents, kindly stand up. The oath-taking ceremony will be administered by none other than our beloved Vice Chancellor, Dr. G.K. Shirude. Sir. Namaste. Good morning. सब स्टाफ मेंबर्स आ गए, सपोर्टिंग स्टाफ, एडमिन स्टाफ, सब सामने आ जाओ. सर रजिस्ट्रार सर आइए. मोरे मैडम आगे जाइए. इसको दिखना चाहिए, इसको दिखना चाहिए. Hello. This of taking oath, and before taking oath, this is which we are following since the establishment of Sri Balaji Society, and it is more than 27 years. We are following this rich legacy, and it is everything to respect the dignity and dreams of our students. Companies in India and abroad. May God, Lord Ganesha, give me a good strength and wisdom to perform my role and responsibility.
Now the oath taking ceremony for the faculties and my authorities is over. Now, all my young student managers, you are also supposed to from very long distances, maybe from different states. Yesterday, I met so many parents also coming from Rajasthan, as well as some of them from Lucknow, and some of them also from Maharashtra. Now, we have to take this oath. Oath taking means in front of God, we promise, we follow, we respect, and we will follow each and every time the what oath you are taking today in front of Lord Ganesha. Similarly, I would like to request all my students, when I say I, then you have to take your name. And then thereafter, since you are coming from different religions, different states, different languages, your God may be different. Okay? So take the name of your own God. Okay? And now the oath taking ceremony for the students will go. And it is as, yeah. You have to keep your right hand on your left chest. All of you are following? All of you are doing the same thing? I take this oath in front of Lord Ganesha. जरा जोर से बात कीजिए, सबने ब्रेकफास्ट किया है. That I will invest and use my time constructively towards studies, working hard, religiously, and fulfill the objectives of my joining Sri Balaji University. I will regularly be in touch with my parents and work tirelessly to fulfill the dreams of my parents and teachers and university. I shall stay in harmony with my fellow batchmates and respect others' privacy. May God, Lord Ganesha, give me the good strength, better vision, and wise wisdom. The oath taking ceremony of students is over. Now the further instructions will be given by our Senior Director, Dean, Dr. Biju Pillai. Now we have kept the prasada here. You can come and collect that thing. And people, those who are not taken breakfast, you can have your breakfast also. Then kindly move towards, those who want to have a darshan to the temple, you are most welcome to do that. And then you may please proceed towards the building number B. And the auditorium is on the 3rd floor. Please be assembled there. Thank you very much. आ जाओ एक ग्रुप फोटो. For centuries. Hello.
Hello, hello. 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 Check, check. Hello. Hello, hello. Mic check. Hello. Check, check. Check, check.
A very good morning to everyone present here. Esteemed, respected faculty members, dedicated non-teaching staff, dear students and beloved parents. I am Paridhi Shah, student of School of Humanities and Social Sciences. And I am Anirudh, student of School of Commerce and Management, and it is with great enthusiasm that I welcome you all to Diksharambh, the induction program of 2025-26 for the first year students of the SBUP schools. Welcome to the SBUP family, which comprises of four major institutes for MBA, namely BIMM, BITM, BIIB, and BIMHRD, a law college known as Balaji Law College, and a Science, Arts and Commerce College, BCACS. And the youngest member of this family is the SBUP schools, under which we have The School of Computer Studies, School of Commerce and Management, School of Humanities and Social Sciences, School of Actual Sciences, School of Liberal Arts, Balaji School of Law, School of Sports Sciences, and School of Defense and Strategic Studies. This day marks the beginning of an exciting journey for our new batch of students, and we are privileged to have you all join us in this significant event. To commence the function, let's pay tribute to the visionary who laid the foundation of our esteemed institution. We have a special video presentation on our revered founder Chancellor, late Dr. Colonel Professor A. Balasubramanian Sir. His legacy and values continue to inspire us every day. I request the technical team to play the video. Pune is known across India as the Oxford of the East. It's a city filled with great minds, top universities, and students who come here from all over the country. But when we talk about Pune's education scene, one name always stands out with respect and love. Professor Dr. Colonel A. Balasubramanian, or as everyone called him, Bala Sir. Bala Sir wasn't just a teacher or a director or a chancellor. He was a builder of dreams, of careers, of people. His life itself was no less than an epic journey, from a small village in Tamil Nadu all the way to founding one of the finest universities in India, Sri Balaji University, Pune. Let's go back to where it all started. Bala Sir was born in a poor family in a tiny village in Tamil Nadu. His father was a farmer. His mother, a homemaker, worked hard day and night. Life was tough, but he was tougher. He studied in a government school where teachers were like family. From a young age, Bala Sir was curious, hardworking, and hungry to learn. But when he wanted to study further, his father refused, asked him to stay back and take care of cattle. But Bala Sir had dreams, and dreams don't sit quietly. So one day, he ran away from home, he joined an orphanage, tried to study, failed in 10th standard, and again ran away. This time to Chennai. In Chennai, he worked in a hotel as a waiter. He cleaned tables, washed dishes, but he never stopped observing, never stopped learning. He got a job as a makeup boy in the film industry for a while too. Then one day, he saw an army recruitment poster. It promised food, travel, respect, and a uniform. That uniform called out to him. He joined the army, and that changed everything. He served in the Indian Army for 28 years. He traveled across the country. He also studied, earned multiple degrees, and got married around 1980. Slowly, life became a little more stable. In the early 80s, after Operation Blue Star, he was posted to Pune. That posting turned out to be life-changing, not just for him, but for thousands of students. While in Pune, he joined Masters in Personal Management program at SYMBIOSIS. And guess what? He stood first in the entire university. A Jawan, now a topper in a management program. Bala Sir proved that it's not about where you come from. It's about how far you are willing to go. After retiring from army, while most people would relax, Bala Sir got to work again. He had a new mission now, to build a world-class institution with nothing but passion and purpose.
He started Sri Balaji Society in 1998. He didn't have a fancy campus, just a few rooms in a rented school building, but he had big dreams. And one by one, he built Indian Institute of Modern Management, now known as Balaji Institute of Modern Management, Indian Center for Telecom Management, now known as Balaji Institute of Technology and Management, Indian Center for International Business, now known as Balaji Institute of International Business, and Indian Center for Management and Human Resource Development, now known as Balaji Institute of Management and Human Resource Development. Every course was designed with one aim: make students industry ready. And he did it. Placements top class, discipline like the army, respect well earned. Balasar believed in something simple: discipline, dedication, and determination. The 3 Ds, not just slogans, these were principles he lived by. Balasar retired as a Subedar from the army. But considering his contribution to the field of management education, he was awarded the rank of honorary colonel by none other than the President of India. Apart from Balasar, few of the luminaries who have been granted the honorary rank of colonel include South Indian actor Mohanlal, legendary cricketers MS Dhoni, Sachin Tendulkar, Kapil Dev, and many such legendaries. But even with all the success, he lived a simple life. For over 15 years, he stayed in the student hostel on campus. One cot, a small TV, some newspapers, and thousands of students around him. For Balasar, students were his world. He used to say, never have a defeatist mindset. If you believe, you can achieve. That's how he lived. That's what he taught. Many people built buildings. Balasar built people. He gave us confidence when we had none. He made ordinary students feel extraordinary. He never saw problems as problems. He saw them as opportunities. Even today, his values run deep in the university. Strong systems, quality education, focus on placements, and student-first culture. His dreams, we are fulfilling them one by one. The PhD program, done. All-round development, ongoing. Industry presence, stronger than ever. From We have the Bhishma Pitama, who really, he is the soul of this institution. He is the founder. And see from where he started, where he has brought it up. I mean, and I consider these educational institutions as the great temples of democracy. So according to me, he is doing much greater service than the so-called prime ministers of this country or members of the cabinet. Professor Balaji, who has always been my inspiration in terms of taking on any entrepreneurial challenge, whether it is in industry or academia, and making it successful. Professor Bala Subramaniam, whom we call Bala, is an interesting person. He is not an individual. He is not an institution. But Bala is a phenomenon. And phenomenon which is similar to a thunder. Bala said, sir, there are lakhs of officers in the army, navy and air force. But because of their frequent transfers, the education of their children suffers. So I asked him, so what? He said, sir, I have an idea. And what was his idea? He said, if you start institution, department for the children of defense personnel, it will be a great service not only to the army officers, but also to the country. A 400 square feet room to a 21-acre world-class campus. From a lone visionary to a family of almost 1,000 faculty and staff.
and 27,000 plus alumni. The journey Balasar began is going stronger than ever. We are celebrating 27 years, and there's no better time to say thank you, Balasar, for believing in us, for building this incredible university, for teaching us how to turn struggle into strength. You may be gone from our sight, but you're forever in our hearts, because as long as discipline, dedication, and determination live on, Balasar lives on. May the visionary spirit and enduring values of our founder Chancellor, late Dr. Colonel Professor A. Balasubramanian Sir, continue to guide us as we move forward on this journey together. In the business world, relationships and networking are key. And what better way to connect them through our lively cultural and social events? A student's life should never be limited to the four walls of the classroom. Hence, a balance between sports and academics becomes important. At SBUP, we give importance to all aspects of the student's personality development. Therefore, the yearly sports and cultural event of Josh is eagerly awaited by all. It's bursting with energy, emotions, packed with games, dance, music, and all the fun you can imagine. Along with Josh, there are many other events that we have witnessed last year. This video captures the energy, passion of our vibrant student community. I request the technical team to play the video.
The esteemed dignitaries will be arriving shortly. I have a small kind request. Please keep your cell phones on silent. I repeat, please keep your cell phones on silent and maintain the decorum of the auditorium. Thank you.
Now, as we welcome our esteemed dignitaries on stage, I'd like to request everyone to stand up and join me in giving them a warm welcome of corporate claps. To move forward with the program, I request all to please rise for the national anthem. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे At the outset, we extend our deepest appreciation for the esteemed presence of our distinguished dignitaries today. It is a profound honor to welcome Professor Paramanandan Balasubramanian Sir, Honorable Chancellor, Sri Balaji University, Pune, and Professor Dr. G.K. Shirude Sir, Honorable Vice Chancellor, Sri Balaji University, Pune. We are also privileged to be in the presence of our esteemed chief guest, Mr. Suresh Mahalingam Sir, Chairman of the Aviva Group India, and the guest of honor for the function, Dr. Srijan Pal Singh, co-founder and CEO, Dr. APJ Abdul Kalam Center, New Delhi. We also welcome respected Dr. S.B. Agase Sir, Registrar, Sri Balaji University, Pune. We are privileged to have with us Dr. Dimple Saini Ma'am, Senior Director of Corporate Relations, Head of Operations and Supply Chain Management, CDC Chairperson, and Dean of Sri Balaji University, Pune. It is a pleasure to recognize the presence of Dr. Biju G. Pillai Sir, Director of the Balaji Institute of International Business, Senior Director of IT and Admissions, and Dean Faculty Commerce and Management, SBUP. We also acknowledge the presence of Dr. Mithil Mohite Ma'am, Controller of Examinations, SBUP. We also welcome all the directors and deputy directors who were gracious enough to take out time from their busy schedules to grace us with their presence today. A very warm welcome to all of you. To begin this special occasion, let us proceed with the lighting of the traditional lamp, a time-honored tradition symbolizing knowledge overcoming ignorance, hope surpassing darkness, and a bright journey ahead. I would like to invite our esteemed dignitaries to come forward for this auspicious ceremony. गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि. And in honor of our beloved founder Chancellor, late Dr. Colonel Professor A. Balasubramanian Sir, I also request the dignitaries to offer flowers to his photo as a mark of our respect and gratitude.
Thank you, esteemed dignitaries. I request you to take your seats on the dais. Get ready for an incredible ride. You'll all look back on these days with a smile. From your seniors, here's a simple wish: make memories, have fun, and enjoy every second. I am sure you're very eager and enthusiastic to start this new chapter of your life, and you should be. Because here you will be presented with endless opportunities and you will have the potency to structure your life. This journey will be full of magical moments. Don't forget to explore them with an open mind and open arms. And dear parents, as your children embark on this new journey filled with aspirations and ambitions, we understand the difficulty in entrusting them to others. Please be assured that our institution is committed to providing a safe, nurturing, and supportive environment to care for and guide your children every step of the way. Now I'd like to introduce our guest of honor, Dr. Sijan Pal Singh Sir, co-founder and CEO of Dr. APJ Abdul Kalam Center, New Delhi, whose esteemed presence graces this occasion and lends it greater significance. A gold medalist from IIM Ahmedabad and recipient of the Best All-Rounder Award, Dr. Singh began his journey with the Boston Consulting Group and also worked with the United Nations World Food Programme, developing tech-driven solutions to aid food distribution among the world's most marginalized communities. From 2009 to 2015, he had the profound honor of serving as advisor to the 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. In this role, he worked closely with ISRO's Indian Institute of Space Science and Technology and collaborated with top global institutions like MIT, Harvard, NASA, and Fermilab, contributing to futuristic research in areas such as nuclear energy, astrobiology, reusable launch vehicles, and even human longevity. He is the co-author of several best-selling books with Dr. Kalam, including Reignited, What Can I Give, Advantage India, and Target 3 Billion, works that have inspired lakhs of youth across the country. As the CEO of the Dr. APJ Abdul Kalam Center, he now has mentors Kalam digital schools and oversees the world's largest free library network, impacting over 2.5 lakh children across India. He is also a respected columnist, policy advisor, international speaker, and mentor to governments and institutions, including his work with the Statue of Unity project and multiple state and central ministries. हमारे आज के एक्सपर्ट दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सृजन पाल सिंह जी उनका नाम है। ये एक ऑथर होने के साथ साथ एजुकेशन इनोवेटर और पब्लिक स्पीकर भी हैं। पेंगुइन इंडिया द्वारा प्रकाशित कई बेस्ट सेलिंग किताबों के ये को ऑथर रह चुके हैं और सृजन जी 2009 से लेकर के 2015 तक स्वर्गीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के एडवाइजर ये रह चुके हैं। लैंग्वेज, लिटरेचर, साइंस, टेक्नोलॉजी में इनकी विशेष रुचि है।
And my friend Srijan has visited some of the very difficult villages where type of people, different types of people, like dissatisfied people. He has interviewed them in the village level, difficult villages. And we have the very eloquent Srijan Pal Singh, Senior Scientist, Founder, Kalam Center and CEO of the Homi Lab with us. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming a torchbearer of Dr. Kalam's vision, a beacon of innovation and service, Dr. Srijan Pal Singh. I now request our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. G.K. Shurude Sir, to welcome our distinguished guest of honor, Dr. Srijan Pal Singh Sir, with a token of gratitude. Now, it is my utmost honor to introduce our chief guest for the day, a distinguished leader and an inspiring figure, Mr. Suresh Mahalingam Sir, Chairman, Aviva Life Insurance Company, India, whose presence truly adds grace and significance to this occasion. Suresh Sir is a transformational leader and catalyst for change in corporate India, with over 35 years of visionary leadership across the BFSI and FMCG sectors. Known for his strategic foresight and ability to drive high-performing cross-functional teams, he has consistently delivered future-ready, impact-driven strategies with passion and precision. His illustrious career includes leadership roles such as MD and CEO of Tata AIA, member of the Group Management Council at WGC, General Manager at HDFC Life, and Business Head at ITC Limited. He currently serves as chairperson of Aviva Life Insurance India and brings his expertise to the boards of Muthoot Housing Finance, Care Health Insurance, and Religare Broking. His past board positions include vice chairman and director at Pramerica Life Insurance and key roles at Principal AMC, Aadhar Housing, Avance Financial, FPSB India, Navi General Insurance, and PGIM India. A trusted mentor and advisor, Suresh Sir supports startups across fintech, insurtech, and edtech as part of advisory boards for Insurance Dekho, TMI Group, and FireEdge, while also shaping BFSI investments strategies for a leading private equity firm. He is also a certified leadership, transition, and team coach, working closely with CEOs and CXOs to enable personal and professional growth, particularly during career transitions. As a dynamic keynote speaker, he regularly shares deep insights on leadership, strategy, and excellence at prestigious national forums, continuing to inspire the next generation of leaders and organizations. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming our distinguished chief guest, Mr. Suresh Mahalingam Sir. I request our Honorable Chancellor, Professor Paramanandan Balasubramanian Sir, to welcome our esteemed chief guest, Mr. Suresh Mahalingam, with a token of gratitude. Now, to extend a warm welcome to our new students and esteemed guests, we have a series of welcome speeches from our esteemed leaders and representatives.
Each one of them plays a pivotal role in shaping the future of our students and our university. I hereby request Dr. Bijuji Pillai sir, Director of the Balaji Institute of International Business, Senior Director of IT and Admissions, and Dean Faculty Commerce and Management, SBUP, to grace our students with his inspiring words. Respected Chief Guest, Mr. Suresh Mahalingam, Chairman, Aviva Group. Guest of honor, Dr. Srijan Pal Singh, Co-founder and CEO, Dr. APJ Abdul Kalam Center, New Delhi. And Honorable Chancellor, Paramanandan Balasubramaniam, Honorable Vice Chancellor, Dr. G.K. Shirude, my fellow Dean, Dr. Dimple Saini, Directors, Principal, Faculty members, students, and dear parents. I will speak in Hindi as well as English today. मला मराठी येते आणि मराठीला बोलण्यासाठी मला भीती वाटते. कशाला भीती वाटते? आपल्या मराठीमध्ये विथ रिस्पेक्ट आणि विदाउट रिस्पेक्टचे वापरते आम्ही. माझी मराठी विदाउट रिस्पेक्टची आहे. सीखला मी प्यून से, मेरा नेटवर्क इंजिनियर से. प्रयत्न करतो, उत्कृष्ट मराठी बोलण्यासाठी प्रयत्न करतो मी. Next time, before you leave this campus, I'll ensure that I will deliver a speech in Marathi itself. Today, it's a very great day for you. Lot of enthusiasm, lot of energy. The challenge here is, can you maintain this enthusiasm, this energy throughout your stay in this campus? देखिए, लास्ट संडे मैंने कुछ फैशन फ्रूट का प्लान लाया इधर, around 150. Then I went to the MBA class of BIB and I asked, can you come coming Sunday? It's holiday for you. We'll plan this plan together. Lot of volunteers, I want only 50. So I have to do a selection. But if I go to them, maybe after a month, whether I will get this kind of enthusiasm, it will slowly go down. At this occasion, I wanted to tell you a story. It's not a story, it's an experience of Bala sir, which he has shared in this auditorium. Long ago, this experience happened somewhere in 2000. In 2000, Bala sir was staying in a resort, 5-star resort in Chennai. It was not booked by him. It was booked by some industrialist, an MD of the company for him, because he needs some kind of guidance from Bala sir. So Bala sir was staying there. With him, one of his relatives was also there. So he was sitting near the swimming pool. That time, one foreigner, एक अंग्रेजी, उनके बाजू में से गया. Then he said, "How are you, professor?" Bala sir astonished. How can someone say that to a foreigner and coming and saying that, "How are you, professor?" Then Bala sir asked me, "How do you know me? I'm not that a popular person." He said, "I am staying next to your cottage." So I asked, "Who are my neighbors?" And they said, "He is a professor." Then I went and Googled. Then I realized that you are not only a professor, you are also an army man. Then they picked up the relationship. Conversation started. Bala sir offered a beer to him. They sit there, they were discussing. Suddenly, the relative of Bala sir has come. Then he said, "Gary Krishnan." Anybody knows Gary Krishnan in this group? Gary Krishnan? Yes. Gary Krishnan is a legendary cricketer from South Africa. That point of time, he was the Indian team coach, Indian cricket team coach. In that team, Ganguly was the captain. In that team, Tendulkar, Rahul Dravid, all these people were also there. Then Bala sir asked, see, his approach is totally different. If we meet a person, how we interact, but his approach is totally different.
Bala sir asked him, what are the three good qualities, great qualities of Sachin Tendulkar? Then Gary Krishnan said, Sachin Tendulkar comes for the practice very regularly. He is the first person come for the practice every day. Such a senior player. One. Two, he said he play with the juniors and he feel for them when they do the practice, which normally the senior players doesn't do that. The third thing he said is that he treats each and every match as if it's a first match. Even though such kind of a history he has, he treats every match as his first match. Then the next thing was, Bala sir asked him, can you tell me some negative qualities of Sachin Tendulkar? Very difficult question. He said, there is no such negative qualities as such. He's a great man, a humble man. But I found one negative quality. Then he said, what is that negative quality? He said, when Sachin gets out, he comes back to the dressing room and immediately pick up his phone and he speaks his wife. Then Bala sir ने बोला, इसमें क्या गलती है? वो अपना बीवी के साथ बात कर रहा है, अच्छा क्वालिटी है. दूसरे बीवी के साथ नहीं बात कर रहे हो. So Gary Krishnan ने बोला कि yes, it is a good quality as a person is concerned, but Sachin has got such kind of experience, legendary player, versatile player. He has got that kind of experience. When Sachin gets out, the team gets panicked. That point of time, we need his guidance for the rest of the players, which we miss for 10 to 15 minutes. Now, years passed. In 2013, Sachin got retired. Then I happened to see an interview of Anjali Tendulkar. Anjali Tendulkar is Sachin's wife. She said she never seen a live match of Tendulkar in the stadium. Whenever Tendulkar plays, she used to sit at her home, a particular place, watch on live TV with a Ganesh idol in his lap. And he switch off her mobile. When Sachin gets out, immediately switch off his mobile and she used to get a call. That is what she said. Then I was relating that thing to what Bala sir experience was. Why I said this story over here is two reasons. Sachin is such a great player. Why did he treat each and every play as all the practice, everything he does as if he's going for his first match? That means the enthusiasm which he has continued that thing throughout his career. Same is the case with Bala sir. There are so many HR meets we have conducted, so many drishtis have been conducted, so many induction programs have been conducted. But he always sit just like he's doing for the first time. Every draft he makes himself. He can easily give that thing to somebody else. He go to 200 companies, more than 200 companies, such a great man, Chancellor of a university visiting 200 companies for the students' employment, dimple incentive. 25 different cities he goes for the admission process in person. There was no need for him. But what I want to say is he loves those things. Okay? There is a lot of similarity you will find in these two great personalities. There are a lot of great cricketers are there, but Sachin is the only one person that's the god of cricket we call. There are a lot of educationalists in this country, but Bala sir has been treated as totally different. The principal secretary, education secretary, they visited this campus for approval, the university inspection. They went and met Bala sir, and what they said was, we have seen so many educationalists in this country, but we've seen first time a yogi of education, Samrat of education. That was a feedback they given to our Vice Chancellor. Now, that is why we have only one Tendulkar, we have only one Bala sir. I get a lot of opportunities to interact with the students, but then I won't be getting such kind of an opportunity to interact with the students in front of, in the presence of their parents. So today I wanted to say something to the parents also. Students, we can interact later. I just want to sing 2 lines of a song with the permission of the Chancellor.
हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकता तुम्हारे सिवा. So there is what is the need of singing this song? The song means I just do not know how much I love you, but I know one thing, I just cannot live without you. This is what it means. Now I have a question to all the students sitting over here. That is how much you love your parents. आप आपका पेरेंट्स को कितना लव करते हैं, कितना प्यार करते हैं. Love can't be quantifiable. Love can't be measured. You may say that you love a lot, but I know one thing. I do not know how much you love your parents, but I do know one thing, that your parents loves you much, much, much more than what you love you. You won't be able to realize this thing now, but one day you'll realize. For that, you should become a father. You should become a mother. That time you will realize how much your parents loved you. I never said to my father or my mother, they are really great in person. But when I become a father, I must have told them in mind 1,000 times, Tuchi great too, you are great. So for that realization, I have to become a father. So what I want to say is, be sincere with them. Your mother knows. She's a burst doctor. You just can't lie. From your face, she will understand, read your mind. Because bachpan se aapko janta hai. Why I am saying this thing is, you be very sincere with your parents. Chagda hota hai. Fight happens. Where there is a love, there will be a fight. You need not be worried about that thing. At this age of adolescence, lot of adrenaline in your body, so this kind of fights happens. There is no harm in fighting with your father. You can fight with your father only. You cannot fight with my father. So that is okay. See, in my home also, most of the time, there are regular fights, verbal fights between mother and daughter. I keep quiet. I won't say anything. Suddenly one day she will come and my wife will come and say that, why are you behaving like this? देखो आपका बेटी ऐसा करता है, वैसा करता है, आप कुछ नहीं बोलते. Okay, fine. As a father, then I go there and I'll start advising my daughter again, just like she's almost your age, adrenaline. She also started picking a fight with me. Then I started shouting at her. Suddenly the mother make a twist. She'll come. अरे आप ऐसा कैसे बोलते हैं उनके साथ? ये सबका घर में होता है. ऐसा मेरा घर पे, it's not an exception. So suddenly will come. अरे चलो बेटा. And it will be an insult to me. But I don't feel like insulted. No father will feel like insulted. Rather, I will tell you, the father feel happy inside that his mother is supporting the child. This happens everywhere. This is a chemistry between father and mother. देखिए, when your father is young, when they get married, new couple are getting married, they love each other, fine. But when a child is born, the husband will start not only loving to the wife, but he start adoring the wife. Because now she is not only your wife, now she is the mother of your child. That kind of status has been elevated. So you have a great life, great exercises so far. Now there is always a saying, younger children are smarter. Elder children are not like that. वो गलत है. It is because when a child is born, it is said that a mother is also born. I am the eldest in my family. I have 2 sisters. Every alternative day, I used to get punished by my mother. Sometimes it goes very severe. Then when it goes severe, रात को 9 बजे मैं सोने के बाद मेरा मम्मी आता था मेरे पास. मैं सोता नहीं था. I used to pretend like sleeping. And she'll come and sit next to me, and wherever मारा था उन्होंने, then they'll थोड़ा massage करेगा, and she'll kiss on my forehead, and then she will go. I used to watch this thing. The moment that exercise gets over, I am relaxed. That's a child psychology. I know that my mother really loves me. This happens with you also. I stop punishing my kids. Punishing the kids means that's a punishment to yourself. फिर बाद में हमको नींद नहीं आएगा. So what I want to say to all of you is that whatever you are doing in your life, understand your parents' life is around you only.
please be sincere with them. Before doing something, think about themselves. Bala sir used to say to bring a family photo and keep it on your table every day, or slides. Every day you should start your day from there. I was talking about that second child. Now what happens is that I was telling my story only. I used to get beaten by my mother every day, most of the time. The youngest sister is of 8 years younger than me. If you ask her how many times my father beaten her, she distinctly remembers only once. If you ask me how many times, I do not know. Several times it happens. It is not because of the first child problem. It is because the parents were inexperienced. The parent, they are newly become father, newly become mother. When the third child born, that point of time, they are highly experienced. 8 years of experience as parenting is concerned. That is the reason of this thing which I felt myself. Now, Bala sir was, for me, he was a fatherly figure. He used to say, Biju is like my son. He was like my son. But Anand is here. Anand is his son, my son, he says. So what is the difference between my son and son-like? There is only one difference. I'll tell you that thing. He loves me a lot, Bala sir, so he loves Anand also a lot. He shouted at me so many times, yelled at me so many times. आनंद को भी किया होगा, लेकिन डेफिनेटली आई एम श्योर जितना मैं गाली खाया बाला सर से उतना इन्होंने खाया नहीं होगा. बट देन व्हाट इज द डिफरेंस? अभी देखे तो हम बराबर में, फिर भी वो बाला सर का बेटा है, मैं बेटा जैसा है. व्हाई दैट डिफरेंस? देयर इज ओनली वन डिफरेंस. आज तक बाला सर ने मेरे ऊपर हाथ नहीं लगाया, बट जरूर मैं बोलता हूँ उनको हाथ लगाया होगा, क्योंकि अपना बेटा है, मैं उनका बेटा नहीं है. दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सन. लाइक 2-3 occasions आई वॉज अनफॉर्चुनेट, ही वॉज अबाउट टू बीट मी. एक बार एक पेपर वेट उठा के फेंकने वाला था, किया नहीं है. अगर किया होता तो आई वुड हैव एनी सन. सो मैं आपको क्या बोलना चाहता हूँ, जितना बच्चे इधर बैठा है वो हमारे लिए अपना बेटी जैसा है या अपना बेटा जैसा है. विच मीन्स हम आपको शाउट करेंगे लेकिन आपको हाथ नहीं लगाएंगे. पिछले 30 साल में, मेरे एक्सपीरियंस में 30 साल में मैं आज तक किसी बच्चे को हाथ नहीं लगाया. इसलिए मेरे पास है ओनली 2 daughters. अगर मैं किसी को हाथ लगाएगा मेरा नंबर इंक्रीज हो जाएगा. नाउ बिफोर आई finish, I just wanted to tell you only one thing. Good stories we discussed. Please ensure, please tell your daughter, please tell your son, those who are coming over here, to wear a crash helmet. This is my humble request to all of you. अभी ये देखिए, कल मैंने पकड़ा 3 लोगों को विदाउट क्रैश हेलमेट. मैंने क्या एक्सरसाइज दिया? I was riding a 2-wheeler without wearing a crash helmet. I know wearing a crash helmet while riding a 2-wheeler is for my safety only. I will not repeat this mistake in the future. ये ऐसा 25 बार लिखा के ले दिया. This will go to now his personal file. अगर वो नेक्स्ट टाइम भी विदाउट हेलमेट आएगा, उसको 1 रुपया फाइन भरना पड़ता है, 1 रुपया फाइन. लेकिन वो फाइन उनसे नहीं लेगा, उसके लिए उनका पापा या मम्मी इधर आना पड़ेगा. ऑनलाइन नहीं चलेगा, इधर आना पड़ेगा. इधर आके हमारा ऑफिस में आकर 1 रुपये का रसीद काटना पड़ेगा. वो रसीद भी फाइल में जाएगा. अगर उसके बाद भी वो विदाउट हेलमेट आया, फाइन लगाएगा 10,000 रुपीज. एक ISI मार्क अच्छा वाला हेलमेट भी हम खरीद करके आपको देंगे. बाकी पैसा पैराप्लेजिक सेंटर इधर चैरिटी में चला जाएगा. और उसके बाद भी अगर बिना हेलमेट पकड़ा गया, फिर पेरेंट्स को बुला देंगे, एक ट्रांसफर सर्टिफिकेट बनाएंगे, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाएंगे, हैंड ओवर करेंगे आपको. इसके लिए क्लैप करो. See, the best thing is we have started bus service. I was told, those who are staying local, please ensure that your children coming to the campus in the bus. The advantage of bus service is आपका घर से निकलेगा, टाइम पे निकलेगा, टाइम पे वापस घर पे आ जाएगा. I take this opportunity once again, welcome to you in the campus. Thank you very much. Thank you.
Thank you so much, sir. Your words are a source of immense inspiration and encouragement for us. We are privileged to have with us Dr. Dimple Saini Ma'am, Senior Director of Corporate Relations, Head of Operation and Supply Chain Management, CDC Chairperson, and Dean of SBUP, to address our audience with her words of wisdom. Good morning, everybody. Respected guest of honor, Dr. Sujin Pal Singh, co-founder and CEO, Dr. APJ Abdul Kalam Center, Delhi. Respected chief guest, Mr. Suresh Mahalingam, Chairman, Aviva Group. Dignitaries on the dais, dignitaries off the dais, uh, faculty members, staff, parents, and of course my incoming freshers and the senior students if you're in the auditorium. It's my absolute privilege to come in to stand before you and welcome you to the formal induction ceremony. And I'm really delighted to have all of you here. Now, you have seen the other dean. Usne gana ga liya, Marathi mein baat kar liya. He's given you all the, do's and don'ts. So I was wondering now, what am I supposed to speak here now? All right. So I will go probably with the, what SBUP stands for, and and what we are expecting, what you can expect out of us, and what are we expecting out of you, right? So Sri Balaji University Pune is committed to providing excellent education to our students. Again, when I say excellent academic education, it's not only in class. It is also, so when you're here, please make sure that you take part in a lot of extracurricular activities. We have beautiful clubs. We have all my institutions are very vibrant. We have a very inclusive, very inclusive. We have outstanding faculty and staff members. So my dear students, as you step in here, make sure that you make use of all of this. Make sure that you explore, all of this for your own, for your development, right? Now, another important thing. See, academic success, of course, will come as you progress in your, in your academic careers. The three values which I want to really want each one of you to imbibe in your daily life is respect, responsibility, and excellence. Right? So treat anybody that you meet in campus the way you want to get treated. So respect is, is something which सिर्फ बड़ों को नहीं है, छोटों को भी respect होना चाहिए. So it is for all of us. So a faculty respects a student respects the faculty. So these three things I will definitely want you to, imbibe. Make sure that you stay here because education is for life, right? At the university, we also have, academic excellence, of course, is a motive, but we also play a very big role in making sure that we have a lot of character building for you, right? Like your degrees, your character stays with you for life. We are the only institute probably, in Pune, I think one or maybe one odd more than us. We will make sure that our School of Defense and Strategic Studies exposes you to aspects of national security. All right, that I think in the ongoing, you must have seen, the current the world. You must have seen the world situation today. The world itself is fighting 3 wars, right? So the university will make sure that you get exposed to aspects of national security, which is important for each one of us sitting here, right? You will have visits, very nice visits. There'll be a lot of visits planned, of course, outbound programs, but noticeably we'll make you meet, we'll take you to CME, which is the Indian military's engineering services. We'll try to take you to NDA. We'll also try to take you to BEG. I don't know how many of you know, whenever there's any natural calamity, it is the forces who take a lot of forefront. We will also try to take you, for the Topbaji in Ahmednagar. All right. And I think that will add a lot of aspect, to your overall, educational journey. So please make sure that, you participate wholeheartedly.
All right, you should have no other thing. All the parents that who are sitting here, I seek your partnership. Like Biju mentioned, देखो इनको एकदम कम पैसे देना. Why do you want to give them money? We have very good 3 messes in the campus. All right, the food is extremely good and it is not that expensive. Please do not give them too much of money. All right. Secondly is the head is very precious. Jaan hai to jahan hai. All right. Of course, the helmet, should be there. Another thing, parents, which I really want you to, to keep in mind. See, we are dealing with generation, the Gen Z. They are different. All right. So maybe we will have to take a few steps to understand them. So spend time whether they are attending class. We will make sure that at the university, the academics and extracurricular is not compromised. But from your side, please make sure that you have maybe once in 15 days or a month, you definitely sit with them, talk it out. How is it going? All right. Um Another thing, for the freshers, the incoming batch. See, you are a batch. You're so lucky. You're born in this era, in the era where AI is the lead thing. The generative AI is taking over, right? So make full use of these opportunities. It is a very beautiful time of your life. All right, you're coming into a great college. You have a beautiful life in front of you. Capitalize on all those opportunities. All right, nothing is going to go anywhere. Don't get into drugs, vaping, all of that. Stay out of that. Right, this is the time for you to focus on yourself. This is the time for you to focus on your health. This is the time for you to focus on your dreams. This is the time to for you to focus on your character. You can become whatever you want to become. Right, on that note, once again I welcome you to Sri Balaji University Pune, and it is our commitment to ensure that your stay here will be excellent. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am, for such enlightening words. I now have the honor to invite Dr. S.B. Agassi, sir, Registrar SBUP, to kindly share a few encouraging words with our gathering. Good morning. Good morning. तुम्ही अजूनही फार यंग आणि एन्थुजियास्टिक आहात. मी या वयामध्ये एवढ्या जोरात बोलतो. माझ्यापेक्षा जास्त जोरात तुमचा आवाज यायला पाहिजे. गुड मॉर्निंग. थँक यू. ऑनरेबल चान्सलर सर, ऑनरेबल वाइस चान्सलर सर, today's respected guests, Dr. Sujanpal Singh and Mr. Suresh Mahalingam, all the deans, directors, principals, parents who are there in this auditorium, and my dear most young and enthusiastic students, you all students. Good morning to you once again, and I heartily welcome you on Sri Balaji University campus. You see, earlier our Dean Madam and Biju Sir Dean both have explained you many things. I would like to attract you. See that photo there, Bala Sir. Very smiling and is it not? Looking that he is very happy and smiling. So you may think that he is a very silent person. Look at this photo here. If you don't study, then वैसे वो हाथ दिखा के आपको पनिशमेंट करेंगे. So what I mean to say is, बाला सर का ट्रेनिंग हमें जो मिला, हम जो उनके कार्य से यहाँ ट्रेंड हो गए, वो हमने खुद आंखों से देखा है, फॉर्चुनेटली. तो आपको उनके जो सिस्टम्स यहाँ
यूनिवर्सिटी कैंपस पे डेवलप किए गए हैं वो सिस्टम से गुजरना है। 3 Ds mantra he started: discipline, dedication, and determination. Look, he was not a politician. He did not take any help of a politician. But then he started SBUP, Sri Balaji Society's institutions, 4 standalone institutions in 1998. And now you see, शिक्षण साम्राज्य म्हणू आपण याला, एवढा मोठा कॅम्पस त्यांनी उभा केला. आपल्याला नुसतं आपलं घर, तुमच्या वडिलांना माहित आहे ते घर सांभाळणं सुद्धा किती कठीण असतं, पण एवढं मोठं साम्राज्य त्यांनी उभं केलं ते केवळ त्यांच्या या 3D मंत्रावर आणि त्यांच्या मेहनतीवर. हजारो विद्यार्थी त्यांनी तयार केले. दे आर ऑल इन व्हेरी गुड पोझिशन्स. त्यासारखंच तुम्ही सुद्धा फार मोठे व्हावेत अशी आमची इच्छा आहे, जी तुमच्या आईवडिलांची सुद्धा असू शकते, असतेच. प्रत्येक आईवडिलांना वाटतं की आपला मुलगा मोठा ऑफिसर व्हावा, सूटबुटात दिसावा, टाय घालावा त्यांनी. आणि त्यांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी तुम्हाला मेहनत करण्याची गरज आहे. बी प्रिपेअर्ड टू वर्क हार्ड ड्युरिंग युअर टेन्युअर इन दिस कॅम्पस. तुम्हाला आता लक्षात येईल हळूहळू. हाऊ मेनी स्टुडंट्स आर देअर हू कॅनॉट अंडरस्टँड मराठी? प्लीज रेज युअर हँड्स. ओके, व्हेरी फ्यू. एनिवे, माझं एकच सांगणं तुम्हाला आहे की तुमच्या कर्मावर, तुमच्या कृतीवर तुमचं भवितव्य हे अवलंबून आहे. सो बी प्रिपेअर्ड टू वर्क हार्ड ऑन दिस कॅम्पस. आवर टीचर्स आर देअर टू हेल्प यू. दे आर लर्नड टीचर्स. अगदी चांगले शिक्षक आहेत, मेहनतीचे शिक्षक आहेत. विद्यार्थ्यांना मदत करण्यासाठी त्यांची नेहमीच तयारी असते. सो इफ यू आर रेडी टू ॲक्सेप्ट व्हॉट एव्हर दे डिलिव्हर, then it is up to you to mold yourself as expected by your parents, as expected by teachers, as expected by our Honorable Bala sir. Anand sir, who is the current Chancellor, present Chancellor, he too is taking his legacy ahead, and we are all supporting him. I myself worked with Bala sir for 17 years. Our Honorable Chancellor, he was in his contact maybe more than 30 years. Deans, both the deans, they worked very hard with Bala sir. They supported Bala sir, and there are many teachers here who worked with Bala sir and helped in developing the 4 management institute in this campus. आर्मी के सब लोग बाला सर ने इधर बुलाया था कैंपस पे, so that in administrative positions they will also help you. अगर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ डिफिकल्टी आती है, आई एम द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी. सिटिंग एज द रजिस्ट्रार इज ऑल्सो नॉट वेरी इजी, बिकॉज मुझे भी बहुत सारे लीगल इश्यूज देखना पड़ता है. टीसी सबमिट नहीं करते बच्चे, माइग्रेशन नहीं करते, और ऐसा मुंह करके खड़े रहेंगे बाद में. सब कल एग्जामिनेशन रहता है, मैं क्या करूं? लीगल फॉर्मेलिटीज अगर कंप्लीट नहीं होते हैं तो मैं बोलूँगा कि भाई आप एग्जाम को बैठ नहीं सकते. But then we take the risk. We allow students to go for further examinations. But after 8 days at least, or after 15 days, or after 1 month, submit the documents so that your eligibility will be completed. TC migration, very important documents हैं. Parents also, you concentrate upon this. आपके बेटे ने TC and migration अगर नहीं सबमिट किया तो उनका एलिजिबिलिटी नहीं हो सकता है, वो कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है.
तो बाद में आप यूनिवर्सिटी को दोष नहीं देना है. Whatever difficulties are there, you tell us your difficulties, we may help you. We may write letters to the parent earlier institutions. और आपका काम थोड़ा सा हल्का कर भी सकते हैं. मेरी आप सबको स्टूडेंट्स को एक विनती रहेगी, यहाँ आते हैं पेरेंट्स, आपको हमारे बालाजी इंस्टीट्यूट्स में आपको एडमिशन दिलवाते हैं, तो डिसिप्लिन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन तो है ही है. You can enjoy the campus during your tenure on this campus. But don't forget, at the same time, you should study hard. You should show the positive results, good results after you complete your course. That would make your parents happy. That would make us happy. मैं यहाँ बता सकता हूँ कि हमारा एक लॉ कॉलेज है, एक 2-2.5 किलोमीटर अवे, डांगे चौक टू रावेत लॉ कॉलेज है, कॉमर्स कॉलेज है, उधर हमारी संस्था का है. वो यूनिवर्सिटी में मेरिट्स में आते हैं 4-4, 5-5 बच्चे. तो कितना खुशी होता है हमको. वैसा यहाँ हम खुद ही यूनिवर्सिटी रहने से हमें क्या लगता है कि हमारे बच्चों के टॉप 3 स्टूडेंट्स ये हैं, टॉप 3-4 स्टूडेंट्स ये हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा गर्ल स्टूडेंट्स रहते हैं जो टॉपर्स रहते हैं. तो बॉयज़ क्यों पीछे रहते हैं बताइए. देयर शुड बी ए हेल्दी कंपटीशन इन गेटिंग रैंक्स. वैसा आप स्टडी करिए, वैसा आप काम करिए, आपको ज़रूर यश मिलेगा. एंड हमारे गुड विशेस आपके साथ में हमेशा रहेंगे. तो इतना मैं आप और आपका फ्यूचर, ब्राइट फ्यूचर के लिए मैं आज विश करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ. एंड मेरे 2 शब्द यहीं समाप्त करता हूँ. धन्यवाद. Thank you, sir, for such insightful words. To enlighten us with their valuable insights and inspiring vision, we are truly honored to have among us our esteemed leaders. I now have the privilege of inviting the Honorable Vice Chancellor of Sri Balaji University, Pune, Professor Dr. G.K. Shirde, sir, to kindly address the gathering. नमस्कार, सुप्रभातम. ये मूवमेंट थोड़ा कम हो जाए तो अच्छा होगा. बैठ जाइए. एक रिक्वेस्ट है, बहुत लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, बच्चे भी मोबाइल यूज कर रहे हैं और हमारे प्यारे पेरेंट्स भी मोबाइल यूज कर रहे हैं. तो मेरी सबको एक रिक्वेस्ट है, ये मोबाइल देवो भव उसको थोड़ा बाजू को रख दो. और 5 मिनट के लिए मैं बात करना चाहता हूँ, ज़्यादा तो टाइम नहीं लेना चाहता हूँ. विद द ग्रेट ब्लेसिंग्स and divine memories of our founder chancellor, founder president, Professor Dr. Colonel Ayyaswamy Balasubramaniam, with a very deep respect we call as our Bala sir. His Excellency, the Chancellor, Professor Paramanandan Balasubramaniam, the today's chief guest of the function, the Honorable Suresh Mahalingam, Chairman, Avia Group. The guest of honor, our colleague before which we met at Delhi, AIU. I have listened to your session very carefully. And with that respect and affiliation, we have invited you here. Dr. Srujan Pal Singh, all my colleagues, senior directors, deans, controller of examination,
principals, advisors, all my faculty members, and मेरे प्यारे बेटे और बेटियां और सम्माननीय पेरेंट्स, आज हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है। हवा भी अच्छी बह रही है, मौसम भी अच्छा है, और इतना अच्छा मौसम होने के बाद बालाजी में, ये बालाजी के कैंपस में आप आने के बाद हमारी बाग फूल गई है। बहार ही बहार कैंपस में आ गई है। और बाहर किस लिए आई है? तो आप लोग हमारे कैंपस में आए हैं, और इसीलिए मैं आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। एंड it gives me immense pleasure and pride to welcome each and every one, those who are sitting in this auditorium. हमारे दो डीन्स है, सीनियर डीन्स है, डॉक्टर बीजू पिल्ले, डॉक्टर डिम्पल सैनी। उसने तो बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है, आपको प्यार से भी बात किया है। हम जितने प्यार करते हैं उतने ही जब आपने मौका दिया तो हमें बहुत स्ट्रिक्ट भी रहना पड़ता है। बालाजी इज नोन फॉर excellent education. Yesterday I was just wandering here and there in the campus. I met some of the parents coming from different states. बहुत दूर दूर से आए हैं पेरेंट्स, और इतने छोटे छोटे बच्चों आफ्टर द 12th फॉर हायर एजुकेशन एंड देयर ब्राइट फ्यूचर आप बालाजी में एडमिशन लिया। यू हैव अ ट्रिमेंडस फेथ ऑन बालाजी, tremendous trust on Balaji, and we are assured you on behalf of my team of faculties, admin staff, and everybody in this campus that your future will be certainly bright. But bright कब होता है? जब अंधेरा दूर होता है। और अंधेरा किसको बोला जाता है? जहां something which is going to be neglected purposefully, that neglected areas we are here to wash it out from your mind. And therefore मुझे अभी कबीर का एक दोहा याद आ गया, और संत कबीर जी ने ये बात की है कि आप समय पे काम करना कितना जरूरी है, समय को रिस्पेक्ट देना कितना जरूरी है। हम समय पे काम करेंगे, आपको भी समय को रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इफ यू रिस्पेक्ट टाइम, टाइम विल रिस्पेक्ट यू। साथ साथ में आगे जाना है। और संत कबीर जी बात करते हैं कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। ये दूसरी लाइन और भी अच्छी तरह से कह जाती है, वो है कि कल करे सो आज, आज करे सो अब, जब चिड़िया चुग जाएगी खेत तो करेगा कब। तो टाइम जो होता है, तो समय का मूल्य ये अनमोल होता है। समय पे काम करना जरूरी है। मैं पेरेंट्स को एक बात कहना चाहता हूं। आप तो अभी आपके बच्चे हॉस्टल में रहेंगे। I assume that all the students, either they are staying in the hostel or near areas or with the parents also, relatives also. But now, since you are our students, we are your parents. We have accepted this role and responsibility to become your parents. And whenever we consider ourselves that we all are your parents, it means आपको तो हमारा मानना ही पड़ेगा। और जब आप मानोगे तो हम आपको बहुत अच्छे प्यार से पढ़ाएंगे, भर भर के खाना भी खिलाएंगे। बहुत रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी है, मौज मजा के बहुत यहाँ सुंदर सुंदर ऐसा परिसर है।
आप ध्यान दीजिए, आगे चलिए, साथ साथ में आगे बढ़ना, इसमें ही हमारा कर्म है, हमारा धर्म है और हमें पूरा लाइफ बनाना है. Swami Vivekananda, once in his speech, he said, and what he said, try to understand. हम पढ़ाई क्यों करते हैं? What is the purpose of education? क्यों पढ़ना चाहिए? Education is for man building. मतलब आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए, इसीलिए एजुकेशन जरूरी है. एजुकेशन इज फॉर मैन बिल्डिंग. एजुकेशन इज फॉर लाइफ मेकिंग. अगर जीवन में कुछ करना है और सबके साथ रह के सबके आगे भी जाना है, तो एजुकेशन मेक्स यू द डिफरेंस. एंड व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट the education is also for character shaping. It shapes your character. It shapes your wisdom. It shapes your attitude, behavior, and respecting the human beings. So this is what the purpose of education is. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांची आपल्या मातृभूमीसाठी अतिशय सुंदर एक ओळ त्यांनी त्या ह्याच्यात म्हटलेली आहे. आणि मातृभूमीला वंदन करताना ते असं म्हणतात, जे जे उत्तम उदात्त उन्मत महन मधुरते ते. जे जे उत्तम, आता उत्तम काय असतं, तर उत्तम होण्यासाठी शिक्षण गरजेचं असतं. एज्युकेशन इज फॉर टू बिकम अ बेस्ट ऑफ द बेस्ट इन दिस पर्टिक्युलर सोसायटी. देन उदात्त उन्मत. उदात्त मीन्स व्हाट? मेरे पास जो है मैं सबको देना चाहिए, सबके साथ रहना चाहिए और सबको सम्मान भी देना चाहिए. जे जे उत्तम उदात्त उन्मत महन मधुरते ते. महन मधुर. मधुर क्या होता है? सुंदरता में मधुर होता है. मधुर और क्या होता है? जिसमें अपना प्यार जो होता है, इज्जत जो होती है, वो महन मधुर होता है. At the end of my few sessions, I always conclude it like this. Since the Marathi understanding number of students are more, I will conclude in Marathi as well as in English. चालण्यासाठी वाट असते. चालण्यासाठी वाट असते. म्हणजे वाट दिसते म्हणून आपण चालतो असं नाहीये. आपल्याला ज्या वाटेने जायचं असतं तीच वाट आपण निवडतो. तुम्ही बालाजीची वाट निवडली आहे आणि म्हणून या वाटेवर आम्ही तुम्हाला उत्तम आमच्या पर्वत शिखरावर घेऊन जाणार. चालण्यासाठी वाट असते, वाटेसाठी चाललं नसतं. उत्तम भरारी घेणाऱ्याला आकाशाचंही ओझं नसतं. बालाजीमध्ये जे येतात त्यांना आकाश सुद्धा ठेंगणं असतं आणि म्हणून बालाजीमध्ये येण्याचं भाग्य तुम्हाला लाभलं, आम्हाला तुम्हाला शिकवण्याचं भाग्य लाभलं. याच्यामध्ये विन विन सिच्युएशन आहे हे लक्षात ठेवा. कर भला तो हो बघा. अँड टू कन्क्लूड इन इंग्लिश, I will say and I will refer what Mahatma Gandhi has mentioned. Self-understanding and self-awareness gives you a lot of energy. You all are young, young India. विकसित भारत का सपना पूरा करना आपके हाथ में है. Whenever I say you are young boys and girls, it means you are having energy, ideas, desire, dream, ambitions, a lot of inspirations, and at the same time you are also having that ability to work, to prepare and to be perfect. So be perfect at Balaji and we will give you opportunity to become perfect. Thank you very much. Once again, a very warm welcome to one and all. Thank you so much, sir. Your words full of motivation and enthusiasm are a source of energy for all of us. It is our privilege to welcome the Honorable Chancellor of Sri Balaji University, Pune, Professor Paramanandan Balasubramanian, sir, to address the gathering.
Chancellor Sir, your presence today is a beacon of inspiration for our lovely juniors and the entire university. We eagerly await your words of wisdom. आपके क्लैप से ऐसे लगा कि ये आखिरी स्पीच है करके। अभी तक आई थिंक आप लोगों ने 4-5 लोगों से सुन लिया, राइट? आई एम एक्चुअली वेटिंग टू हियर टू फ्रॉम आवर चीफ गेस्ट सुरेश सर एंड ऑफ कोर्स सृजन पाल सिंह सर. बोथ आर वेरी इंटरेस्टिंग पीपल. I was very curious to see, their profile and what kind of work they had done. So it will be interesting to hear from them. हम तो घर की खेती हैं, हम लोग तो आपको बार बार मिलने ही वाले हैं. सो पहला चालू करते हैं गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ से. बैड न्यूज़ से है कि हम लोग लेट चल रहे हैं, तो आपका लंच डिले होने वाला है. बट व्हाट इज़ द गुड न्यूज़ कि लंच तो है. और दूसरा गुड न्यूज़ क्या है? लंच अच्छा है, टेस्टी है, हैवी है. फिर उसके बाद एक और बैड न्यूज़ आता है कि आपको वापस ऑडी में आकर बैठना है और आंख खोल के बैठना है. बट बालाजी में इसलिए ना बोलते हैं कि 2 चीज़ें होती हैं, मतलब आपको सुख भी देंगे, थोड़ा दुख भी देंगे. थोड़ा लाइफ में सिखाएंगे भी और कुछ हम लोग आपसे सीखेंगे भी. लाइफ के ना 2 पहलू होते हैं. सुबह आपने पूजा देखी है ना, मतलब कुछ लोग तो थे, मेरे को मालूम है, बाकी लोग तो नहीं थे. सुबह उठना मुश्किल होता है, राइट? सो लाइफ में ना 2 पहलू होते हैं. जैसे सुबह हमने पूजा की, पूजा में क्या होता है, जो पूजा करता है उसको थोड़ी शांति मिलती है. बेसिकली इट्स अबाउट पीस इन लाइफ. वी आर ऑल सर्चिंग फॉर पीस इन लाइफ. वी आर ऑलवेज रनिंग. सब लोग बोलते रहते हैं ये करो वो करो, और आपके एज में तो आप लोग को तो लोगों ने बोल बोल के मार ही दिया होगा, हाँ, कि ये करना है वो करना है, ये नहीं करोगे तो दुनिया आपको छोड़ के चली जाएगी या आप दुनिया में पीछे हट जाओगे. एक रेस है जहाँ पे आप लोग नहीं कूदोगे तो आप पता नहीं रेस के बाहर हो जाओगे. खासकर 10th और 12th का एग्जाम देने के बाद ऐसा फील होता है ना. 10th के एग्जाम के बाद आधे लोग बर्नआउट हो जाते हैं और 12th के बाद से तो आदमी पक जाता है. फिर सोचता है कि यार कितना सुनेंगे. सो आई अंडरस्टैंड देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ लिसनिंग, ऑफ कोर्स. सो देयर इज पीस विच वी आर लुकिंग फॉर, और काइंड ऑफ बैलेंस इन आवर लाइफ. देयर इज अ सेकंड थिंग वी आर आल्सो लुकिंग फॉर इन लाइफ, दैट इज कॉल्ड आस्था. पूजा करने का मतलब क्या होता है? एक पीस, और पूजा करने से एक आस्था भी होती है. आस्था मतलब फेथ, faith in ourselves. It's not faith in God. When you believe in a God, it basically means you're putting a faith in yourself also. So there are 2 things in which is required in life. One is faith and one is peace. Both are required. Faith in yourself. This university believes कि student makes his own destiny. मतलब लाइफ में कुछ भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन आपको अपने आप में थोड़ा फेथ रखना पड़ेगा और थोड़ा अपना पीस भी रखना पड़ेगा. पीस क्यों चाहिए लाइफ में? कि विदाउट दैट पीस यू कैनॉट क्रिएट अ बैलेंस. अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कब ब्रेक होगा और कितना सुनना पड़ेगा. बट लाइफ में कुछ सुनोगे नहीं तो सीखोगे कब? और जब तक पूछोगे नहीं तो समझोगे कैसे? सो यू नीड टू हैव बैलेंस. लाइफ में लर्निंग जितना इंपॉर्टेंट है ना, उतना अनलर्निंग भी उतना इंपॉर्टेंट है. बैलेंस. आपको लर्न भी करना है, जो चीजें काम की नहीं है उसको अनलर्न भी करना है. सुख भी चाहिए तो दुख भी आएगा. अगर फेरारी चाहिए तो पेट्रोल खरीदने की कैपेसिटी भी होनी चाहिए. औकात की अलग बात है. ठीक है ना? अभी जैसे अगर फेरारी जैसी गाड़ी खरीदनी है और पूना में चलाना है तो पेशेंस भी चाहिए ना, नहीं तो चलाओगे कहाँ पे? ट्रैफिक जैम्स देखे यहाँ पे? कब चलाओगे? रात को 2 बजे बैटमैन बन के? तो आपको अगर बैटमैन बनना है तो फिर रात को आप फेरारी लेकर घूम सकते हो जब कोई नहीं मिलेगा आपको. लेकिन फिर दिखाओगे किसको? अपने आप को दिखाओगे क्या? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज ट्राई टू बैलेंस योरसेल्फ. अपने आप को बैलेंस करना सीखो. डोंट मेक योरसेल्फ एंग्री ऑल द टाइम. ये मत सोचो कि कुछ रेस छूट रही है, कोई तो छूट रहा है, ये छूटने वाला है. सो कीप योरसेल्फ हैप्पी, कीप योरसेल्फ एट पीस. नहीं तो एक बहुत साल पहले ना
आपने पता नहीं, आप लोग को ओटीटी और ये टीवी की आदत इतनी नहीं है, मतलब अभी है थोड़ा बहुत, बट हमारे ज़माने में एक दूरदर्शन करके हुआ करता था। आपको पता है ना दूरदर्शन? सुना होगा आप लोगों ने। वो दूरदर्शन में ना एक ज़माने में एक सीरियल आया, वो 300-400 एपिसोड चला, मतलब इंडिया का पहला मेगा सीरियल। उसका नाम क्या था मालूम है? हाँ, हम लोग तो अलग है मैडम। 300-400 सीरियल, सोचो इतना एक्साइटिंग सीरियल था वो। रामायण रामायण नहीं मैडम, उससे हाँ शक्तिमान। मैं दूरदर्शन की देश की बात कर रहा हूं भाई। जब वो सीरियल आया ना, तो इंडिया में ना जो सीरियल का नाम था ना उसके विपरीत कुछ हुआ, मतलब उसके ऑपोजिट कुछ हुआ। वो एक सीरियल का नाम था शांति, जिसमें इंडिया में बहुत सारी अशांति आ गई। वो शांति में जो जो दिखाया वो इंडिया में सब लोगों ने देखा है नो, और लोगों की बहुत सारे के लोगों में कि लाइफ में अशांति आ गई। सो नाम कुछ और होता है, होता कुछ और है। सो आजकल के ज़माने में जैसे हम बोलते हैं ना, शक्तिमान देख लो या सुपरमैन देख लो, द एस्पिरेशंस आर वेरी हाई। वी ऑल वांट टू बी सुपरमैन, वी वांट टू बी बैटमैन। हमको लगता है कि आयरन मैन बन जाता, नहीं पता नहीं क्या करेंगे। और आज के ज़माने में आप लोग, मुझे नहीं लगता आप लोग राम के बारे में बात करते हो या लक्ष्मण बनना है, इतना कोई सोचता नहीं। हनुमान बन के उतना मेहनत नहीं करना है। हाँ, वी आर लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स, वी आर लुकिंग फॉर इजी लाइफ। दिस इज अ लाइफ वेयर यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग बैलेंस। याद रखो, थोड़ा मेहनत करोगे रिजल्ट भी आएगा। ये बहुत पुराने चलो से आ रहा है, इंडियन कल्चर में होता है। सो व्हेन वी डिड अ पूजा इन द मॉर्निंग, इट इज नॉट अ पूजा टू मेक यू हैप्पी। इट इज अ पूजा फॉर वी आर आस्किंग फॉर ऑलमाइटी टू ब्लेस यू, टू स्टार्ट योर जर्नी इन अ मोर पॉजिटिव वे। सो लाइफ में ना सुबह बोलते हैं हमेशा ना, स्माइल करके उठा करो, एक दूसरे को देख के थोड़ा स्माइल करो। पेरेंट्स लोग को गुड मॉर्निंग बोलो, अपने आप को भी जरा गुड मॉर्निंग बोलो। Eat some food, your body will feel stronger. Start positive. Peace will come when you start positive. Start thinking positive. Don't always think negative, negative, negative only. ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा. Start thinking positive and start thinking balancing yourself. Don't think कि मेरे को ये अचीव करना, वो करना, वो सब आ जाएगा। लाइफ में कहीं कहीं कुछ नहीं भाग के जा रहा भाई। Start thinking positive. Balance. और हैव फेथ इन योरसेल्फ। बाकी तो हम लोग आज प्यार से बात करेंगे, पेरेंट्स भी यहीं पे हैं। कल हम पेरेंट्स को बोल देंगे यहाँ पे साइड में मॉल है, चले जाओ उधर, हमको भी डिस्टर्ब मत करो। तो पेरेंट्स लोग के लिए ये एक तरह से वार्निंग भी है कि कल से आना मत। साइड में मॉल अच्छा है, मैडम लोग सर को पकड़ सकते हैं शॉपिंग करने के लिए। सो डू दैट। ऑफ कोर्स वी केप्ट सम couple of days for you to interact with many speakers. The idea is to listen, also ask questions, also start thinking, ज़्यादा नहीं सोचना, but start thinking and start thinking about yourself, what do you want and how you want. फिर धीरे धीरे एक एक दिन से स्टेप लेते हुए चलेंगे। डो नॉट थिंक अबाउट कि मेरे को अभी 3 साल में क्या करना है, 5 years में क्या करना है। वो गवर्नमेंट प्लानिंग होती है एक ज़माने में, 5 साल के बाद क्या होगा। ये ट्रम्प के ज़माने में, वो पुतिन के ज़माने में कुछ होने वाला है क्या? कौन कहाँ मिसाइल दाग रहा है कुछ पता नहीं। सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आवर सेल्फ, आवर लाइफ, one day at a time, focusing on yourself and mostly having faith in yourself. And start thinking positive. Thank you. Thank you so much, sir. Our juniors, we are sure, are grateful for your immense support and guidance. It is indeed a privilege for me to invite our esteemed guest of honor, Dr. Srijan Pal Singh Sir, co-founder and CEO, Dr. APJ Abdul Kalam Center, New Delhi, to grace the stage and share his inspiring thoughts with us. I request the audience to join me in welcoming him with a warm round of applause.
थैंक यू, धन्यवाद। कितने लोग चाहते हैं कि आई शुड स्पीक इन इंग्लिश वर्सेस हिंदी? इंग्लिश कितने लोग कहेंगे? अच्छा, हिंदी कितने वाले हैं? चलिए, ऊपर वालों का कोई ओपिनियन ही नहीं है, मैटर ही नहीं करता। चलिए, नहीं, गुड। सो आई हिंदी करते हैं थोड़ा, ज़्यादातर हिंदी लोग हैं और बीच बीच में थोड़ी अंग्रेजी स्लिप इन हो जाती है, दैट डज हैपन। सबसे पहले तो मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ सारे इनकमिंग स्टूडेंट बैच को। सबसे पहले आप सबके लिए तालियां कि आप यहाँ तक आए। और उससे बड़ी तालियां होनी चाहिए और बधाइयां होनी चाहिए उन पेरेंट्स की जिनके आपके ही एफर्ट से ये मुकाम हासिल हुआ है, तो आपके लिए तालियां। मैं ग्रीट करूंगा ऑनरेबल चांसलर सर का, वाइस चांसलर महोदय का, जिनको AIU में मैं मिला था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने आपके वाइस चांसलर को पढ़ाया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या सिखाता है? सीखने की कोई उम्र नहीं है, कभी कभी सिखाने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो जो वाइस चांसलर सर कह रहे थे कि you will learn something but we will also learn something from you, that is truly a wonderful message. I greet all the deans and of course I greet a great icon of Indian industry, हमारे जो chief guest साहब हैं, who's got a legendary career of transforming India, for which the nation is in gratitude to him. So thank you sir, Suresh ji, for being here. It's wonderful to meet you. The first time I'm meeting you, but I've heard about you a lot. आज आपके जीवन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिवस है, क्योंकि आज जिस प्रकार से चिड़िया जब बड़ी हो जाती है, घोंसला छोड़ती है, पहली बार उड़ने की कोशिश करती है, आज आपके पहली बार पंख खुलने शुरू हुए। ये थोड़ा लंबा समय लगेगा, अभी तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन आज आपके पेरेंट्स यहाँ आपको छोड़ने आए हैं, मतलब आप में से कई लोग घर से दूर जा रहे होंगे पहली बार, करेक्ट? कई अधिकतर लोग ऐसे ही होंगे। ये जीवन की एक नई शुरुआत है। अब से आप जो भी करेंगे उसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। अब से आप जो भी अचीव करेंगे वो आपके एफर्ट्स उसमें बहुत तगड़े लगेंगे। और अब से शुरू होगी जीवन में एक लंबी यात्रा शुरू होगी, जिसमें आप कई बार लड़खड़ाएंगे, कई बार गिरेंगे, और फिर आपको उठना है और फिर चलना है। और चांसलर सर वाज सेइंग ए वेरी नाइस थिंग कि आज क्या करना है वो इम्पोर्टेंट है। आपके पास सिर्फ आज का दिन है, जो बीत गई सो बात गई, है ना? इतिहास के ऊपर रिग्रेट करने से कुछ नहीं मिलेगा, भविष्य के ऊपर एंग्शियस होने में भी कुछ नहीं मिलेगा। भविष्य की प्लानिंग करिए, लेकिन भविष्य के लिए एंग्शियस और एंग्जाइटी लाने की आवश्यकता से कुछ नहीं होने वाला। आपके पास सिर्फ एक दिन है, जो आज सुबह शुरू होता है और रात में खत्म हो जाता है। वो 24 घंटे आपके पास हैं। 24 घंटे में 1440 मिनट होते हैं, 86,400 सेकंड होते हैं। आप इसी में कुछ कर सकते हैं। रोज सुबह से लेकर शाम तक, सोने से जगने से लेकर के सोने तक, आपने अपना जीवन कैसे बेहतर बनाया, दूसरों का जीवन कैसे बेहतर बनाया, और अपनी टैलेंट के साथ जस्टिस कैसे किया, वही आपके पास है। यही आपकी पावर है। वाइस चांसलर सर ने आपको मोबाइल फोन बंद करने की सलाह दी थी। अगर आपकी अनुमति हो तो मुझसे उनसे कुछ काम कराना है मोबाइल फोन पे। करा सकता हूं मैं? ठीक है, चलिए। अब सर ने अनुमति दे दी है तो मैं करवा देता हूं। तो आपने अपने मोबाइल निकालिए। खुश हो गए ना सब? ऊपर वाले भी निकाल सकते हैं। आप भी पार्टिसिपेंट हैं बाय द वे। आप हमारी फील्ड ऑफ विजन से थोड़े ऊपर हैं, लेकिन पूरी निगाह में है। ठीक है, निकालिए। कैलकुलेटर खोलिए। ठीक है, हो सके तो साइंटिफिक कैलकुलेटर खोलना। कैलकुलेटर में 2 मोड होते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर आता है ना? अच्छा चलो, अभी एक इजी सा सवाल है, इसमें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 1 में 1% जोड़ें तो कितना नंबर आता है? 1.01। और 1 से अगर 1% हटा दें तो कितना आता है? इधर वाले बताएंगे। 1 से 1% हटा दें, इधर वाले बताएंगे क्या? उधर वाले नहीं बताएंगे? चलिए, 0.99,
0.99, ठीक है। तो एक काम करें, अब ये सोचिए कि अगर आप रोज अपने आप को 1% बेहतर करें और 365 दिन ऐसा करते रहें तो क्या नंबर आएगा। तो 1.01 टू द पावर ऑफ 365 करिए, 365 डेज होते हैं, करिए 1% एक्स्ट्रा, कितना नंबर आता है, करिए कैलकुलेटर वालों, कितना, कैलकुलेटर से निकालना है आंसर। 1.01 to the power of 365 is roughly 37। वह ताली बजाओ उसके लिए यार, आप कैलकुलेटर बहुत अच्छा चलाते हैं, ठीक है। सो 37.78 इज द आंसर। और अगर 0.99 यानी 1% लेस एफर्ट अगर आप रोज करिए और 365 दिन करिए तो कितना नंबर आता है। 0.99 टू द पावर ऑफ 365 इज 0.025, करेक्ट, ओके। एक साल तक अगर आप 1% बेहतर बनेंगे रोज तो आप 37 गुने हो जाते हैं। अगर एक साल तक 1% कम काम करेंगे, 1% कम बेहतर बनेंगे यानी नीचे की तरफ जाएंगे तो आप 0.025 यानी कि आप 1/40 बचेंगे। एक तरफ ऑलमोस्ट 40 टाइम्स बढ़ेंगे और एक तरफ ऑलमोस्ट 40 टाइम्स गिरेंगे। इट इज इन योर हैंड व्हाट यू डू। दिस ऑल हैज टू बी डन इन अ डे। हर रोज 1% बेहतर बनने की कोशिश कीजिए, बस इतना करके देखिए, लेकिन रोज करना है। कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट। वन थिंग यू विल लर्न इन लाइफ, जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे, काम करेंगे, यहां भी पढ़ेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन टैलेंट। People who are consistent, people who have integrity, people who are regular are more valuable than just raw talent. You know, one of the deans was talking about cricket. A difference between Tendulkar and a Sehwag. Sehwag was a great talented player, but not is good, but not as good as Tendulkar, because Tendulkar was consistent. So be consistent. That will take you places. मैं आपको 3 चीजें ऐसी हैं जो बदल रही हैं बहुत तेजी से, और वो चीजें हैं जो इतनी तेजी से कभी नहीं बदली जितनी आज है। कुछ अच्छी चीजें, कुछ थोड़ी चिंताजनक चीज भी है, और कुछ ऐसी हैं जो अपॉर्चुनिटी भी है आपके लिए। पहला तो आप एक ऐसे भारत में हैं जो उस मुकाम पर है, उस जगह है जहां पर पिछले 500 साल में भारत कभी नहीं था। 12वीं शताब्दी से लेकर के 1947 तक भारत किसी न किसी विदेशी इन्वेडर के अधीन था, चाहे वो अफगान तुर्क थे, चाहे वो अंग्रेज थे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत आजाद तो हुआ ही 47 में, उसमें आपके दादा दादियां ने वो भारत देखा होगा, आपके माता पिता ने वो भारत देखा जिसने बहुत मेहनत करके, बहुत बड़ी संकट भरी स्थितियां थी जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा देश था जिसको पूरी दुनिया टूरिज्म करती थी गरीबों को देखने के लिए और भूखों को देखने के लिए, कि कौन भूख से इंसान कैसा दिखता है और गरीब इंसान कैसा दिखता है। वो भारत भी था सन 70-80 का। आज आप उस भारत में हैं जो बिल्कुल अलग है। वो भारत दूसरों की तरफ मदद के लिए नहीं देखता, दूसरे उसके लिए मदद की तरफ देखते हैं, उसकी तरफ देखते हैं। जब दुनिया कोरोना वायरस में थी और दुनिया को वैक्सीन की आवश्यकता थी तो इस शहर की तरफ देखा। इसी शहर में, आप उस शहर में बैठे हैं जिस शहर ने दुनिया भर के लिए वैक्सीन बनाने वाला सबसे बड़ा शहर ये था। आप उस शहर में हैं, आप उस देश में हैं जो जब ना सिर्फ वो कहता है कि मैं चंद्रमा पे जाऊंगा, वो कहता है मैं चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे जाऊंगा जहां कोई नहीं गया। उस देश के अंदर वो विश्वास है, उसको नाकामी का भय नहीं है, और वो दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान 3 का प्रोजेक्ट करता है। आफ्टर फेलिंग इन चंद्रयान 2, क्रैश हुआ था वो, लेकिन हमने चंद्रयान 3 किया, कुछ ही साल बाद किया और उससे बेहतर किया। और हम अकेले देश हैं अभी भी जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहरा चुके हैं। आप उस देश के पार्ट हो, आप उस देश के पार्ट हो जिस देश में आपके
आप अपने पिताजी, अपने दादा दादी से पूछिएगा, पावर कट्स हुआ करती थी इतनी, कुछ घंटों के लिए बिजली आती थी, बाकी टाइम आती ही नहीं थी। आज वो देश पावर सरप्लस है। भारत अपना न्यूक्लियर रिएक्टर खुद बना पाया है। ऐसा बनाने वाले बहुत कम देश हैं दुनिया में। 4 देश ऐसे हैं जो अपना रिएक्टर बना पाते हैं और हम उनमें से एक हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ दिन क्या मतलब 4-5 दिन पहले की बात है कि भारत ने अपना एस्ट्रोनॉट दूसरी बार अंतरिक्ष में भेजा। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का नाम सुना है आपने? सुना है ना? हमने अंतरिक्ष में भेजा एक मिशन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, ऑफकोर्स कोलैबोरेशन में भेजा। और अगले साल हम एक 4 एस्ट्रोनॉट का मिशन खुद अपनी टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष में भेजेंगे। और ये उसका प्रीकर्सर था, ट्रेनिंग थी। जैसा ओरिएंटेशन आपका हो रहा है आने वाले 2-3 साल के लिए, वैसे ही ओरिएंटेशन था वो हमारे लिए। 2035 तक भारत सपना देखता है कि हम अपना स्पेस स्टेशन बनाएंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। आप ऐसे भारत में हैं, आप ऐसे भारत में हैं जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इनफैक्ट हमारे ऊपर 200 साल काबिज रहने वाले ब्रिटिश लोगों से बड़ी अर्थव्यवस्था हमने बनाई है। इसमें मेहनत लगी है, इसमें खून और पसीना दोनों बहा है। और इस मुकाम पे हम आपको ला करके, जिस कुर्सी पे आप बैठे हैं, ये कुर्सी सन 47 के भारत में सपना था। आप जिस कोर्स को पढ़ने जा रहे हैं वो एक स्वप्न था उन लोगों का। तो इसलिए यू हैव टू डू जस्टिस टू द इंडिया विच हैज बीन बिस्टोर्ड अपॉन टू यू। जो भारत, जो पुणे, जो परिवार, जो फैसिलिटी, जो यूनिवर्सिटी आपको मिल रही है, आपको जस्टिस करना होगा अपने खुद के टैलेंट से, बाय डूइंग योर बेस्ट। अगले 2 साल 3 साल जो भी आपका कोर्स है वो आपके हाथ में है, समय आपके हाथ में है। आप बिल्कुल बेशक आप हैव फन, दैट्स गुड, बट नो व्हाट इज फन टू यू। फन इज ऑल्सो इन डिवोटिंग योर सेल्फ, इमर्सिंग योर सेल्फ इन द कॉज। फन इज ऑल्सो इन हैविंग अ ग्रेट एम्बिशन, अ टारगेट इन लाइफ। इसमें भी फन है। इस फन को भी आप अनुभव करने की कोशिश कीजिएगा। दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा बदलाव आप सबने सुना है, इज एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रांति। सुना है आपने? सभी ने सुना है। जिसने नहीं सुना है भाई सुन लो, बहुत बड़ी बात है। मैं चाइना अगर जब जाइए, यू गो टू चाइना, वहां पे अगर आप उनका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलिए, वो अपना चलाते हैं खुद का, उस पे आता है कि बच्चे जो है आपके जैसे, आप बच्चे ही हो, युवा हो, अभी भी बच्चे ही हो एक तरह से, वो पढ़ाई कर रहे हैं, वो ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं, वो नोबेल प्राइज के लिए कर रहे हैं, वो स्पेलिंग्स अच्छी कर रहे हैं, वो लैंग्वेज कोर्सेज कर रहे हैं, वो अचीवर्स बन रहे हैं, वो देश के लिए कुछ कर रहे हैं। अगर आप यूएसए जाइए और इंस्टाग्राम खोलिए तो उसमें आता है लोग लड़ रहे हैं, युवा लोग गोरे काले में लड़ रहे हैं, रिपब्लिकन डेमोक्रेट में लड़ रहे हैं, ट्रम्प वर्सेस बाइडेन में लड़ रहे हैं, लेकिन बहुत नेगेटिव है और झगड़े की भावना है। अगर आप इंडिया में अभी रील खोलिए तो 10 में से 9 रील स्टूपिड जोक्स होंगे, बेमतलब की बातें होंगी, बकवास होगा, यूजलेस ड्रामा। ये आप नहीं सेलेक्ट कर रहे हैं, आपने नहीं सर्च किया। ये रील तो जब आप देखते हैं तो आपको जो एल्गोरिथम दिखाती है वो देखते हो ना, एल्गोरिथम दिखा रही है आपको। भारत एक बहुत ही बुद्धिमान देश है। ये वो देश है जिसने जितनी भी दुनिया में चीजें हुई हैं, 90% चीजें हमने किसी न किसी रूप में इमेजिन दुनिया से 100 से 1000 साल पहले के बीच में कर ली थी। और इस देश को और इस देश के विशेषकर युवा को रोकना बड़ा मुश्किल है। और इसके लिए हमेशा स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन हुए हैं हमारे देश के ऊपर। अंग्रेजों ने किया समथिंग कॉल्ड मैकॉलिज्म। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ढूंढ लीजिएगा। समथिंग कॉल्ड मैकॉलिज्म, जिसने ये कह दिया कि भारत में, मैकॉले एक व्यक्ति थे, इनको भेजा गया था 1830 में कि ये बताओ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसे बनाई जाए कि भारत के जो उस समय के युवा हैं वो अंग्रेजों के अधीन आ जाएं अंतर्मन से, मतलब खुद से आ जाएं, चाबुक चला के नहीं आ जाएं, खुद अपने मस्तिष्क पे खुद ही सरेंडर कर दें। तो लॉर्ड मैकॉले जब भारत आए, लॉर्ड पता नहीं किस बात के थे, बट वो ब्रिटेन हर आदमी के आगे लॉर्ड लगा देता है, तो उन्होंने एक काम किया, उन्होंने कहा कि भारत की जितनी वैदिक नॉलेज है वो उसको इकट्ठा कर दें। तो ब्रिटेन में एक गांव की लाइब्रेरी की एक शेल्फ के बराबर नहीं है।
दिस इज मैकॉले, जिसने भारत की शिक्षा व्यवस्था बनाई। आज का मैकॉले एल्गोरिथम है, आपको ये बिलीव करा रहा है कि आपको यही देखना चाहिए, कि आपको यही आपको कंज्यूम करना चाहिए, आपको यही स्टूपिडिटी देखनी है, क्योंकि जो व्यक्ति कहते हैं ना, जो आप जिसके साथ हो आप वैसे ही बन जाते हो। तो अगर आप स्टूपिडिटी देखोगे तो आप सोचोगे हम भी स्टूपिड है। अगर आप इंटेलिजेंट चीजें देखोगे, इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहोगे, तो आप इंटेलिजेंट बन जाओगे। सो ये आपके हाथ में है। नए भारत के ऊपर ये एक तरह का स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है, जिसके पीछे एक गहरी प्लानिंग है, और आप इससे कैसे सावधान रहोगे। देखो, इंटरनेट तो यूज करना ही है, मोबाइल फोन तो यूज करोगे ही, इंस्टाग्राम भी चलाओगे, लेकिन बी कॉशियस कि कहीं आप उस ट्रैप पे तो नहीं पहुंच जाओगे, क्योंकि अब आपके मम्मी पापा तो देखेंगे नहीं कि आप क्या कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो सब आपके हाथ में है। सो यू शुड बी वेरी कॉशियस कि भारत इज ऑलवेज बीन अ टारगेट, की पहले में कॉले थे, अब एल्गोरिथम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टाइम में एजुकेशन इज ए वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। आपको सिर्फ वो नहीं पढ़ना है जो आपको पढ़ाया जा रहा है किसी कोर्स में। अगर आपको लगता है कि आप एक दूसरे से सीख सकते हैं तो वो करिए। अगर आपको लगता है कि आप कहीं सब कुछ तो फ्री अवेलेबल है, अगर आप चैट जीपीटी से भी कुछ सीख सकते हैं तो सीखिए, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना टूल बनाइए, अपना गुलाम बनाइए, उसके अधीन मत चले जाइए। आई रन ऑफिसेज एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ यू वुड हैव एक्सपीरियंस, जो यहाँ मंचासीन लोग हैं, विशेषकर हमारे चीफ गेस्ट भी, इज दैट लोग चिट्ठियां लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं छुट्टी की भी, तो वो एआई से लिखने लगे हैं, और ऐसा एआई से लिखने लगे हैं कि वो प्लेस होल्डर छोड़ देते हैं, योर नेम हियर लिखा आ जाता है। हम अपने आप को इतना आलसी नहीं बना सकते, ना हम अफोर्ड कर सकते हैं, और ये भारतीय मानसिकता भी नहीं है। तो इसलिए एआई को अपना गुलाम बनाइए, उसको अपना टूल बनाइए, आप उसके अधीन मत चले जाइए। ये बड़ा आसान है, आसान तरीका है, लेकिन जिंदगी में जो आसान होता है उससे अचीवमेंट नहीं मिलता। मेरा जो ज्यादातर एसोसिएशन रहा है वो अंतरिक्ष सेक्टर से रहा है, एस्ट्रोफिजिक्स, स्पेस साइंस, रॉकेटरी। आपको एक कहानी मैं सुनाना चाहता हूं उसके संदर्भ में, जो मुझे लगता है कि उस कहानी में आप अपने जीवन में भी बहुत सारे सूत्र ढूंढ सकते हैं। कहानी है उस भारत की जिस भारत में 1970s की इंडिया, जिस भारत में विक्रम साराभाई थे, और जिस भारत ने, हालांकि उस भारत के पास खाना पूरा नहीं था, लेकिन सपना देखा कि हम अंतरिक्ष में जाएंगे। और 1970s, इनफैक्ट 1969 वाज द एग्जैक्ट ईयर, जस्ट आफ्टर ह्यूमंस लैंडेड ऑन द मून, भारत ने कहा कि हम इसरो बना। 1965 में इंकोस्पार बना, 1969 में इंकोस्पार से इसरो बना, 1969 विक्रम साराभाई। और हमने ये लक्ष्य रखा कि भारत अंतरिक्ष में अपने सैटेलाइट डालेगा, और भारत अंतरिक्ष में सैटेलाइट अपनी टेक्नोलॉजी से डालेगा, यानी रॉकेटरी भी करेगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि 65 में हमने मिशन शुरू किया, लेकिन 1964 में पाकिस्तान ने सुपार को पहले ही बना लिया था। अब पाकिस्तान ने आज तक एक सैटेलाइट ही लॉन्च किया, 3 सैटेलाइट लॉन्च किए, वो भी चाइना से करवाया। तो शुरू कुछ लोग पहले कर सकते हैं, लेकिन आगे कुछ लोग बाद में निकल जाते हैं। हम 1 साल पीछे थे। 1969 में जब इसरो बना, तब सारी दुनिया ने हमें इग्नोर कर दिया। भाई, अंतरिक्ष तो उन लोगों की डोमेन थी जो अमीर थे, अंतरिक्ष उन लोगों के पास था जिनके पास कोल्ड वॉर की 2 पावर्स थी, सोवियत और अमेरिकन, और उन दोनों के एलाइज थे, ब्रिटिश थे, फ्रेंच थे। 10 साल तक किसी ने हमारी ओर देखा ही नहीं। लोगों ने लगा ये एक भूखे लोगों का देश है, पागल हो चुका है, ऐसी ऐसी बातें सोचता है, ये सिलेबस के बाहर है इनके। तो जब आप जीवन में कुछ अनोखे सपने देखेंगे तो ऐसा हो सकता है कि कई लोग आपके ऊपर ध्यान भी ना दें। उनको लगेगा कि आपके सपने मुंगेरी लाल के हैं, आपके सपने शेख चिल्ली हैं। लेकिन वो बड़ा अच्छा मौका था भारत का, क्योंकि हम 10 साल तक हमने बड़े ही शांति से काम किया, किसी ने हमारे ऊपर डाउट ही नहीं किया। अगर कर लेते तो हमारे ऊपर सैंक्शन लगा देते। 10 साल तक हम ऐसे चलते रहे। इसरो के 2 चेयरमैन बदल गए और
तीसरे चेयरमैन थे इसरो के सतीश धवन, और उनके अंडर प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे इस पूरे मिशन के कि हम इंडियन सैटेलाइट को इंडियन टेक्नोलॉजी से लॉन्च करेंगे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाज अ यंग मैन कॉल्ड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तब तक वो डॉक्टर नहीं थे। 1979 में हमने डिक्लेयर किया कि श्रीहरिकोटा से हम लॉन्च करेंगे अपना पहला सैटेलाइट, जिसका हमने नाम रखा था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV। और SLV को जब हमने 1979 में हमने सर्कुलर भेजा पूरी दुनिया को, अब तब ट्विटर तो था नहीं, तो आपको चिट्ठी भेजनी पड़ती थी लोगों को, आप टेलीफोन करेंगे आप, तो हमने सारी मीडिया को बुलाया, ज़्यादा मीडिया भी नहीं था, कि विदेशी मीडिया आओ भाई देखो इंडिया जो है लॉन्च करने वाला है 1979 में, वी विल लॉन्च आवर फर्स्ट सैटेलाइट विद इंडियन टेक्नोलॉजी यानी SLV। सारी मीडिया ने हमें डाउट की नज़र से देखा। इनफैक्ट अधिकतर लोगों ने सोचा ये कोई फेक न्यूज़ है, ये कोई फ्रॉड चिट्ठी आई है, ये कोई मजाक है। तो उन्होंने वेरीफाई किया, जब वेरीफाई किया तो सरकारी सूत्रों से पता लगा कि नहीं ये तो सच है, ये तो सरकारी दस्तावेज है, अब तो आना पड़ेगा। और ऐसे होते हैं दूसरे टाइप के लोग। आपकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो शुरू में इग्नोर करेंगे, और जैसे ही आप कहेंगे कि नहीं आई एम देयर, तो कहेंगे नहीं डाउट करता हूं मैं, तो ये तो नकली है, कुछ तो फर्जी वाला है। यू विल कम अक्रॉस सच पीपल। आए भाई, सरकारी इनविटेशन है, न्योता सरकारी है, तो आ भी जाते हैं, देख लेते हैं, कुछ एडवेंचर ही है। व्हेन दे केम हियर, हमने अपना सैटेलाइट जो रॉकेट था पूरा, इट वाज देयर। अब जो रॉकेट होता है, अब आप लोग स्पेस साइंस से वाकिफ नहीं है, बट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि रॉकेट लॉन्चेस इन स्टेजेस। हर स्टेज पे रॉकेट का कुछ हिस्सा टूट करके नीचे चला जाता है, और उससे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, तो बाकी जो हिस्सा है वो और तेजी से ऊपर जाता है। ये जो रॉकेट था ये 4 स्टेजेस में था। स्टेज 1 आधा टूटेगा, फिर आधा टूटेगा, फिर आधा टूटेगा, और स्टेज 4 पे आकर के सैटेलाइट वुड बी इन ऑर्बिट। To achieve orbit, you have to achieve a very ridiculously high speed of 11 kilometers per second. At that speed, you get escape velocity. हमने अभी डाउट वाले लोग बैठे हुए थे, सारी विदेशी मीडिया। 1979 3, 2, 1 लॉन्च करते समय सबसे क्रूशल फेज होता है, जैसे आपका भी फर्स्ट ईयर सबसे क्रूशल फेज होगा, उसके बाद तो आप निकल जाओगे। लेकिन लॉन्च करते समय रॉकेट हैवी होता है, फ्यूल ज़्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, सब कुछ नेगेटिव है, सब कुछ कठिन है, इसलिए ज़्यादातर रॉकेट्स फेल एट लॉन्च। तो लॉन्च हो गया, लिफ्ट ऑफ। जैसे ही लिफ्ट ऑफ हुआ, जनरली उस समय आप अगर आपने स्पेस लॉन्च देखा है कभी टीवी पे, तो ताली बजाने लगते हैं। जैसे ही लॉन्च सक्सेसफुल, हाँ ठीक है, लिफ्ट ऑफ सक्सेसफुल, ताली बजाओ, बिकॉज मोर और लेस श्योर होते हो आपकी आप निकल जाओगे। जैसे ही ये लिफ्ट ऑफ हुआ और 1 किलोमीटर तक पहुंचा हाइट पे, लोगों ने ताली बजानी शुरू कर दी। तो ये जो लोग बैठे थे, जो अब तक इग्नोर कर रहे थे, फिर डाउट कर रहे थे, उन सब ने ताली बजानी शुरू कर दी। उन्होंने भी ताली बजानी शुरू करी। ताली इसलिए नहीं बजाई क्योंकि वो आपकी सफलता से बहुत खुश थे, ताली इसलिए भी नहीं बजाई कि आपकी सफलता में उनको विश्वास था, ताली इसलिए बजाई क्योंकि भारत की सफलता पर और किसी भी सफलता पर ताली बजानी पड़ती है। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो फॉल्स प्रेज करते हैं, सफलता को सलाम करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि अंदर से सलामी देने का मन करता है, बट क्योंकि ये एक तरह का मॉरल ऑब्लिगेशन है कि आपको करना पड़ेगा। और ऐसे लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। आप भी जीवन में लॉन्च होंगे, और जब लॉन्च होंगे तो आपके जीवन में ऐसे बहुत से लोग होंगे। भारत ने अपने अंतरिक्ष काल में भी ये चीज देखी। हमारा रॉकेट स्टेज 1 क्लियर कर गया, आधा टुकड़ा निकल गया, वंडरफुल। स्टेज 2 में जब हम जाते हैं तो हम पहुंच जाते हैं एक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर जिसको स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। स्ट्रेटोस्फियर वो जगह होती है जहां हवाई जहाज उड़ते हैं, बादल के आसपास। वहां पे ऑक्सीजन नहीं होती, ये बात हमें पता है, सभी को पता होती है। तो किसी भी फ्यूल को जलाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो ऑक्सीजन अलग से जाती है। तो रॉकेट पे फ्यूल होता है और ऑक्सीजन अलग होती है, और ये दोनों का मिश्रण करके हम बर्न करते हैं स्टेज 2 में। स्टेज 1 क्लियर हो गई। जैसे ही स्टेज 2 पे गया रॉकेट हमारा SLV-3 1979 में, तो एक वाल्व था, वाल्व होता है नल की तरह, ऐसे खुल जाता है, तो ऑक्सीजन की फ्लो फ्यूल चेंबर में जाने लगती है। तो जो वाल्व जो था उसको खुलना था, लेकिन उस वाल्व में प्रोबेबली, हमें एग्जैक्टली आज भी नहीं पता क्या हुआ, थोड़ा सा पानी रह गया होगा, ऐसा हमारा मानना है कि मॉइस्चर रह गई। और वो मॉइस्चर क्योंकि वहां पे -32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाता है, वो जम गई, वो आइस बन गई। अब वो घूमे ही नहीं, वो वाल्व खुला ही नहीं। वाल्व खुला नहीं तो फ्यूल तो आ गया कंबस्शन चेंबर में, ऑक्सीजन नहीं आई।
और रॉकेट लाइट आउट, मतलब फायर चली गई और रॉकेट ऐसे जाने की वजह ऐसे चला गया और ऐसे जाकर के गिर गया बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। अब जो लोग, यही लोग जो पहले इग्नोर कर रहे थे, फिर डाउट कर रहे थे, फिर झूठी ताली बजा रहे थे, इन लोगों ने कहा आहा, मैंने तो पहले ही कहा था, इंडिया से तो हो ही नहीं सकता था ये भूखे लोगों का देश है, ये कहां से रॉकेट वॉकेट करेगा। पानी में गिरा दिया ना। अगले दिन न्यूज़पेपर में भारत ने इतने करोड़ रुपए लगा दिए और डुबो दिए बे ऑफ बंगाल में। भारत ने मछली मारने के लिए रॉकेट का इस्तेमाल किया, नई फिश रॉकेट ढूंढने के लिए जो है नई मछली बंगाल की खाड़ी में बे ऑफ बंगाल में ढूंढने के लिए भारत ने सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया, दुनिया का पहला सैटेलाइट जो अंडर सी काम करता है। ऐसे ऐसे मजाक किए गए, वी बिकेम अ जोक। दुनिया ने जोक करना शुरू कर दिया। ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो आप एक बार कुछ कठिन लक्ष्य रखेंगे और आप असफल हो जाएंगे तो वो ये बोलेंगे, वो ये नहीं बोलेंगे कि कोई बात नहीं दोबारा ट्राई करना, वो ये बोलेंगे कि मैंने तो कहा ही था, करने की जरूरत ही क्या थी, टाइम बर्बाद कर दिया, पैसा बर्बाद कर दिया। ऐसे लोग मिलेंगे आपको जीवन के अनुभव में, ये भी आएंगे लोग। उस समय इसरो के चेयरमैन थे प्रोफेसर सतीश धवन। प्रोफेसर धवन को ऐसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठती थी, ऐसे ही ऊपर लोग बैठते थे और नीचे सब पत्रकार। तो प्रोफेसर सतीश धवन ने अपनी टीम, डॉक्टर कलाम यंग मैन एंड और भी लोग थे, उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम लोग घर जाओ, रात भर काम कियो, जाओ, आई विल हैंडल। सतीश धवन इसरो के चेयरपर्सन अकेले बैठे थे पूरी प्रेस को फेस करने के लिए। और प्रेस कैसे सवाल पूछेगी, कैसा लगा आपको, कौन सी मछली ढूंढी आपने, 100 करोड़ रुपए, इसमें तो इतने स्कूल बन जाते, इतने हॉस्पिटल बन जाते, इतना खाना आ जाता, कैसा लग रहा है आपको, आपने डुबो दिए इतने सारे स्कूल। इस तरह के जोक्स, इस तरह के कटाक्ष, है ना, ऐसे लोग होंगे। प्रोफेसर धवन ने कहा कि रॉकेट 4 स्टेज का था, स्टेज 1 क्लियर, स्टेज 2 हो तो गई थी, उसके बाद ही कुछ गड़बड़ हुआ, यानी 50% मार्क्स तो मिल गए, तो 50% मार्क्स मिल गए। मैं मानता हूं कि मेरी टीम 50% मार्क्स के साथ पास तो हो गई। हाँ, अभी 50% और लाना है, आप ऐसा करना, आप अगले साल फिर आना। और जैसे ही ये सवाल सुना, लोग हंसने लगे उस हॉल में, और लोगों ने ठहाके मारे और कहा कि अब तो ये बिल्कुल ही पागल हो चुके हैं। मतलब अभी इन्होंने डुबो दिए करोड़ों रुपए समुद्र में मछली ढूंढने के चक्कर में, और अब जो है फिर से करना चाहते हैं। वाह वाह, बहुत बढ़िया, मजा आया। इंडिया तो मतलब एंटरटेनमेंट ऑफ द वर्ल्ड है। चले गए सब घर अपने और हम अब काम पे लग गए। 1 साल बीत गया, 1980, 1980। आप में से 90% लोग बॉर्न नहीं थे 1980s में, मैं भी खुद नहीं था, तो आपको क्या बोलूं। सो 1980s में, 1980 में फिर से न्योता गया कि भाई इंडिया, आप लास्ट टाइम आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद, ये देखिए नया न्योता आया है, अब आप फिर से आ जाइए वहीं पे। इस बार किसी ने डाउट नहीं किया, इस बार सब दौड़े दौड़े चले आए। इसलिए नहीं कि आपकी सफलता पे उनको विश्वास था, इसलिए कि भारत की विफलता पे उनकी पूरी आस्था थी कि एक बार रॉकेट डुबोया है, हर बार डुबोएंगे, ये तो ऐसे ही है, तो चलो देख के आते हैं। तो कैमरे लगाए गए, इधर रॉकेट है, कैमरा इधर नहीं लगा रहे, कैमरा बे ऑफ बंगाल में लगाते हैं, इधर ही गिरेगा, है ना। कोई कहता है वो सर्वे आया होगा, अरेबियन सी में गिरेगा कि बे ऑफ बंगाल में गिरेगा कि इंडियन ओशन में चला जाएगा कि उठेगा ही नहीं कि दिल्ली में घुस जाएगा। इस बार कुछ तो होगा, कुछ फनी होने वाला है, मीडिया मोमेंट कैप्चर कर लेते हैं। जब आप एक भारत देश जैसे जीवन की तरह उठते हैं ना, कुछ नहीं से कुछ बनते हैं, तब आपकी विफलता पे विश्वास रखने वाले लोगों की मात्रा बड़ी भारी होती है और उनका विश्वास भी बड़ा अडिग होता है। तो भाई फिर हुआ 3, 2, 1 लॉन्च। स्टेज 1 क्लियर, स्टेज 2 क्लियर, पता था हमें, वेल्व भी क्लियर। स्टेज 3 क्लियर, वो तो इजी थी। स्टेज 4 क्लियर, एंड इंडिया बिकेम द 4th कंट्री टू लॉन्च सैटेलाइट्स इन स्पेस। उस कहानी की शुरुआत एक कठिनाई और विफलता से हुई थी, लेकिन उस कहानी में 1 साल के दोबारा संघर्ष के बाद हमने सफलता प्राप्त करी। और 2 बातें उससे निकल के और आती हैं।
फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस बार सतीश धवन फिर थे इसरो चेयरपर्सन। इस बार उन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, मैं तो बहुत थक गया हूं यार, तो लोग बहुत काम कराते हो मुझसे। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को छुट्टी दे दी थी, अब मुझे छुट्टी चाहिए इस बार, तो मैं जा रहा हूं। और उन्होंने कहा कि डॉक्टर कलाम, आप और आपकी सारी टीम, जो यंग टीम है, वो बैठेंगे स्टेज पे, और मैं तो जा रहा हूं घर। भारत के इसरो के चेयरपर्सन ने भारत की पहली लॉन्च की सफलता की प्रेस कॉन्फ्रेंस से छुट्टी ले ली, और उन्होंने उस टीम को आगे कर दिया जो यंग टीम थी। और फिर तो क्या है, आप कभी बोर्ड टॉपर के क्वेश्चन देखो, मीडिया वाले क्या पूछते हैं, क्या खाते हो, कब सोते हो, हलवा खाते हो मूंग का या गाजर का खाते हो, है ना, ऐसी ऐसी बातें करेंगे। सफलता को तो सब सलाम करते हैं। तो मीडिया ने ऐसे सवाल पूछे कि आप लोग ने कैसे किया, व्हाट वाज योर शेड्यूल, दिस दैट, आसान क्वेश्चन, और वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे तारीफ के माहौल से जो व्यक्ति इसरो का चेयरपर्सन था वो मिसिंग था। इसलिए नहीं कि वो थक गया था, इसलिए कि उसको पता था कि जब जो जनरेशन, जो आज के पेरेंट्स और टीचर्स हैं, जब वो यंग लोगों को स्थान देंगे टू बी अप्रिशिएटेड फॉर देयर एफर्ट, टू बी रिकग्नाइज्ड फॉर देयर हार्ड वर्क, तो जो वो यंग लोग हैं वो आगे चल के कलाम बनेंगे। सतीश धवन जी ने उस दिन ना सिर्फ भारत का पहला सक्सेसफुल लॉन्च दिया, जो आगे चल के एसएलवी से, आपको पता होगा, एएसएलवी बना, एडवांस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर पीएसएलवी बना, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, फिर जीएसएलवी बना, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो चंद्रयान बना 1, 2, 3, और जो मंगलयान बना, पीएसएलवी से मंगलयान भी बना, और जो भारतीयों को अगले साल तक अंतरिक्ष में लेके जाएगा। वो टेक्नोलॉजी की शुरुआत 1980 में हुई, और वो धवन ने दिया। और धवन ने ना सिर्फ ये दिया, बल्कि सतीश धवन ने, प्रोफेसर सतीश धवन ने भारत को जितने भी साइंटिफिक लीडर आप देख रहे हैं और जानते हैं, वो सब दिए स्पेस में। लेकिन 1980 की जो सक्सेस है, उसके पीछे 1979 का फेलियर था। वो जो फेलियर है वो बे ऑफ बंगाल में आज भी पड़ा है, हम पूरा रिकवर नहीं कर पाए। उस समय हमारे पास संसाधन नहीं थे कि हम जाकर के रिकवरी शिप्स में डाइवर्स को लेकर के अपने रॉकेट के टुकड़े लेकर के आए। समुद्र की गहराई में कहीं वो टुकड़े आज भी पड़े हैं। वो टुकड़ों की सफलता में जो हमारी इवेंचुअल सफलता है और आज तक की सफलता है, उनकी भूमिका उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी उन टुकड़ों की जो अंतरिक्ष में गए। लेकिन अंतरिक्ष में जो चला जाता है, उसके लिए सब ताली बजाते हैं, उसको सब देखते हैं, वो चमकता है। जो नहीं जा पाता, वो समुद्र की गहराई में तो बैठा होता है, लेकिन उसका महत्व कम नहीं होता। आपके जीवन में ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स होंगे अब, जिसमें आप विफल होंगे, जिसमें आप कोशिश करेंगे और आप बे ऑफ बंगाल की गहराई में जाकर के गिरेंगे। लेकिन बे ऑफ बंगाल की गहराई में जो जा सकता है, वही अंतरिक्ष को पा सकता है। और ये एक एटीट्यूड होता है हमारे अंतरिक्ष अनुसंधान में, ये एक एटीट्यूड है। जब हम चंद्रयान 2 जब हमने किया तो वो क्रैश हुआ, सबको पता है। मैं उस समय लाइव था टीवी पर, नेशनल ज्योग्राफिक पे लाइव देखा हमने, कैसे वो ग्राफ ऐसे ऐसे गिर रहा था, क्योंकि वो हाइट गिर रही थी उसकी, फिर एकदम से गिर गई। एंड वी सॉ दैट। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे चंद्रयान 2 के टुकड़े पड़े हैं, आज भी पड़े हैं। लेकिन चंद्रमा के ऑर्बिट में चंद्रयान 2 का जो ऑर्बिटर था, जो उसका साथ गया था, ऑर्बिटर भी गया था उसके साथ, एक ऑर्बिटर था और एक लैंडर था। लैंडर तो टूट गया, ऑर्बिटर चक्कर लगा रहा था। उस विफलता में हम उस ऑर्बिटर की सफलता नहीं भूले, और उस ऑर्बिटर की ही इमेजिंग से हमने 3-4 साल के अंदर चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। और उन्हीं इमेज की बदौलत, उसी की वजह से चंद्रयान 3 सक्सेसफुली सो इजीली लैंड कर पाया, जो कोई और नहीं कर पाया आज तक, उसके बाद भी नहीं कर पाया। 2 साल हो गए, लेकिन आज भी किसी ने उसको रेप्लिकेट भी नहीं किया। हम नंबर 1 है वहां पे, और अभी सिर्फ एक ही है, और हम है। क्योंकि और जब आप ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये वही इथॉस है, ये वही विचारधारा है
कि अगर एक चीज़ 79 में फेल होती है तो उसी की लेसन से 80 सक्सेस होता है। अगर एक चीज़ 2019 में चंद्रमा पे क्रैश होती है तो उसी के ऑर्बिटर से 2023 में सक्सेस मिलता है। जीवन में कभी कभी आपको विफलता और सफलता के बीच में 1 साल का अंतर होगा, जैसे 79 और 80 में हुआ। कभी कभी 4 साल का होगा, जैसे 2019 के चंद्रयान 2 और 23 के चंद्रयान 3 में हुआ, 23 के, राइट। तो इसी प्रकार से ये चीज़ जान के रखिए कि आप सब एक वृक्ष के समान है, एक पेड़ के समान है। एक पेड़ होता है बरगद का, एक पेड़ होता है बांस का। बांस मतलब बैम्बू। बैम्बू का पेड़ शुरू में कुछ हफ्ते तक हल्का सा उठता है 3-4 हफ्ते, और उसके बाद अगले 6-7 हफ्ते वो एकदम बड़ा हो जाता है। बरगद का पेड़ धीरे धीरे उड़ता है, लेकिन वो धीरे धीरे उठते उठते फैलता है, उसको सालों लगते हैं लेकिन वो बरगद बनता है। बैम्बू को हफ्तों लगते हैं लेकिन वो बैम्बू बनता है। बैम्बू में भी कोई बुराई नहीं है, बांस के पेड़ में भी कोई बुराई नहीं है, बरगद के पेड़ में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर बरगद का पेड़ बैम्बू का पेड़ देख करके ये बोले कि मेरी तो उपज ही नहीं हो रही है, मैं तो बढ़ ही नहीं रहा हूं, तो सामने बढ़ा जा रहा है, या बैम्बू का पेड़ बरगद को देख के बोले कि अरे यार मैं इतनी दिन तक बढ़ा लेकिन मैं तो फैल ही नहीं पा रहा हूं, तो ना बैम्बू खुश रहेगा ना बरगद खुश रहेगा। और दुनिया में एक इंडस्ट्री है जो आपको यही दिखा रही है कि आपके पास जो है उससे बेहतर किसी और के पास है। और ये बात सबके ऊपर लागू हो सकती है। किसी के पास धन है, आप में से किसी ने कहा था पढ़ते क्यों है, तो किसी ने बोला कमाने के लिए। सही बोला, गलत नहीं बोला आपने, बिल्कुल सही, इधर से आवाज आई थी, वैलिड है, ये भी एक रीजन है। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं हो सकता। रीजन ये भी है कि जीवन का ध्येय है खुश रहना। हम सब एक पॉइंट पे, अभी आप हैं, अभी आपके पास पूरा रनवे पड़ा है, लेकिन अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो किसी धन की कोई वैल्यू नहीं है। खुश रहने के लिए क्या चाहिए? बिल्कुल कंजम्पशन चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पैसा आपको चाहिए नहीं, बिल्कुल आपको प्लेसमेंट भी चाहिए, आपको अच्छी सैलरी भी चाहिए। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपका प्लेसमेंट नहीं भी होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवन समाप्त हो जाता है। मैं आया मैं अहमदाबाद से हूँ, हमारे यहाँ जिसका सबसे अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, ऐसा नहीं है कि वो इस समय सबसे अच्छा कर रहा है, सबसे ज्यादा सुखी है। जिसका सबसे खराब प्लेसमेंट, जिसका लगा हो ही नहीं पा रहा था उसका प्लेसमेंट, आखिरी दिन कहीं से कुछ हुआ, वो सबसे ऊपर पहुंच जाता है। तो जीवन इज अ लॉन्ग रेस, नॉट अ शॉर्ट स्प्रिंट, पहले तो ये समझिए। दूसरा, जीवन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनकी वैल्यू आपको समय के साथ पता लगेगी। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, है ना। आप लोग बहुत लकी हो। जीवन का चक्र ऐसा होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स देखने, आप कितने साल तक देख लेते हो, ये बहुत बड़ी आपके लिए अचीवमेंट है, और वो आपको तब पता लगेगी जब ऐसा नहीं कर पाओगे। स्पेंड टाइम विद देम। अपने पेरेंट्स को आप लोग आज छोड़ के चले जाएंगे, कल तो मॉल जाना है सबको, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कनेक्शन कट जाएगा या कम हो जाएगा या प्रेम समाप्त हो जाएगा। जीवन में सबसे, अगर मुझसे पूछो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव सिर्फ पेरेंट्स दे सकते हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स भी दे सकते हैं, और कोई नहीं देगा आपको। जल्दी मे बी मिल जाए, लकी होगे अगर आपको मिल जाए, बहुत लकी हो। लेकिन बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो आपको अनकंडीशनल लव दे पाएंगे बिसाइड्स योर पेरेंट्स। इंश्योर दैट यू डू एवरीथिंग फॉर योर। क्या चाहिए पेरेंट्स को आपसे? आपसे पैसा नहीं चाहिए उनको, आपसे थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए कि इस मुकाम तक आपको इस कुर्सी पे बैठा दिया है, अब इसके आगे की जो यात्रा है आपको स्वयं करनी है, तो डायरेक्शन भटक मत जाना। भटकना नहीं है बस, और थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट चाहिए होता है, और कुछ नहीं चाहिए होता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। मेरे साथ मैं इतने बच्चों को देख चुका हूं 25-30 साल में जो हेल्थ आउट होने लगते हैं। अपने फिजिकल हेल्थ वेलबींग, अपनी मेंटल वेलबींग, और अब आपके जीवन में एक चैप्टर शुरू होगा आपकी इमोशनल वेलबींग। वो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आप अकेले रहोगे, आपकी इमोशनल वेलबींग भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करिए, अगर आपको लगता है कि आप कहीं स्ट्रेस्ड हैं, किसी बात से परेशान हैं, अपने टीचर से डिस्कस करिए, अपने पेरेंट्स से डिस्कस करिए, लेकिन डिस्कस करिए। घुटने की आवश्यकता नहीं है। अगर घुटन महसूस होती है तो आप अकेले नहीं हैं, सारी दुनिया आपके साथ है, आपको प्रेम करती है, आपके टीचर्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपका इकोसिस्टम है, आप अकेले नहीं हैं। ये इंपॉर्टेंट है। हेल्थ, ऑल काइंड्स ऑफ हेल्थ, लव which you have with your parents, with your grandparents, with your siblings, with your family, with your future family.
एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू डू वेल, यू हैव टू स्टडी वेल, यू हैव टू गेट अ गुड जॉब। ये सारी चीजें पे आप ध्यान दीजिए। जीवन लंबा है, 100 मीटर रिले की तरह मत दौड़िए, बहुत बड़ी मैराथन है, और सब लोग अलग अलग तरीके से उगेंगे, सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, और फेलियर्स सबको मिलेंगे। जो ज्यादा ऊंचा एम लगाएगा, जो ज्यादा दूर निशाना लगाएगा, उसका निशाना उतनी ही बार मिस होगा। छोटा लक्ष्य रखोगे हमेशा पालोगे, लंबा लक्ष्य रखोगे मुश्किल से पाओगे। बट इस डर में कि विफलता हो जाएगी, लक्ष्य को छोटा नहीं कर सकते ना। लक्ष्य तो ऊंचा रहना चाहिए, क्योंकि यू डिजर्व टू हैव अ ग्रेट लक्ष्य। आप डिजर्व करते हैं अ ग्रेट एम्बिशन इन लाइफ। और एम्बिशन सिर्फ अपने तक सीमित मत रखिएगा। एम्बिशन में आप अपने परिवार को तो शामिल करिए ही, आप समाज को शामिल करिए, आप ह्यूमैनिटी को एज अ होल शामिल करिए, आप देश को शामिल करिए, आप विश्व को शामिल करिए। एम्बिशन ऐसे रखिए, अगर आप बीसीए या एमसीए कर रहे हैं, आप लोग कितने बीसीए और एमसीए वाले स्टूडेंट हैं? कंप्यूटर वाले कितने हैं, है ना? और कितने मैनेजमेंट वाले हैं? और भी कोई प्रजाति है यहाँ? नहीं, ठीक है। आज मैनेज ह्यूमैनिटीज वाले भी हैं। अच्छा, ह्यूमैनिटीज वाले कहाँ हैं? हाथ ही नहीं उठा रहे, एक दो बस। ह्यूमैनिटीज इतनी कम, इंसानियत कैसे चलेगी? अगर आप जो भी हैं, अगर आप कंप्यूटर वाले हैं और आप कोडिंग में जाना चाहते हैं, तो सपने ऐसे रखिए कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशनल चीज बनाएं। क्या हम इंसानियत को कोडिंग से बेहतर कैसे बनाएं? क्या हम इंसानियत की बेहतर हेल्प कर सकते हैं? क्या हम एक ऐसा टूल बना सकते हैं, लोग बना रहे हैं एक्चुअली, जो डिजिटल एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके कैंसर डिटेक्शन कर सके स्टेज 0 पर? एक्चुअली कर रहे हैं लोग ऐसा, एआई का इस्तेमाल स्टेज 0 कैंसर में। तो क्या मैं लोगों को ये प्रोडक्ट दे सकता हूँ या दे सकती हूँ? अगर आप मैनेजमेंट में हैं, तो आपके एम ऐसे होने चाहिए कि क्या मैं ऐसा एंटरप्रेन्योर बन सकूं जो ऐसा प्रोडक्ट दे भारत को, भारत को जिस पर गर्व हो, और हम दूसरों के कॉपी कैट आइडियाज ना डालें, बल्कि हम अपने ओरिजिनल आइडियाज को दूसरों से कॉपी करवाएं। क्योंकि अब स्टेज आपकी है। भारत के आपके ग्रैंडफादर के जनरेशन ने एक अस्थिर देश को स्थिरता दी। आपके फादर और मदर के जनरेशन ने एक स्थिर देश को समृद्धि देने की पूरी कोशिश करी। अब इस रिलेटिवली समृद्ध देश को सफलता तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। तो ऐसे सपने देखिए। और अंत में मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं। पूरी चीज पे आपके अंदर हम सब के अंदर एक डीएनए होता है, पता है ना? डीएनए ऐसे करके होता है, डबल हेलिक्स, ऐसे करके, है ना? आपके डीएनए में आपकी पूरी इतिहास होती है, और आपका ही नहीं, आपके माता पिता का, उनके माता पिता का, उनके माता पिता का, और उनके करते 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 सैकड़ों जनरेशन का इतिहास है। और आपके हर सेल, आपके पास 28 ट्रिलियन सेल है, और 28 ट्रिलियन सेल में हर एक सेल में 5 मीटर का डीएनए है। अगर आपका डीएनए खींच करके मैं एक के बाद एक लगा दूं, तो आपकी बॉडी के अंदर इतना डीएनए है कि मैं सूरज के 28 चक्कर लगा करके वापस आ सकता हूं। 28 बार, 28 बार मैं पूरे सौर मंडल का एक चक्कर ऐसे लगा सकता हूं बाहर नेपच्यून से। इतना डीएनए है, धरती के सैकड़ों चक्कर लगा देगा, इतना आपके अंदर डीएनए है, इतनी हिस्ट्री आपके अंदर है। आप इतिहास के चलते फिरते एक प्रतिबिंब है, अपने खुद के इतिहास के और अपने सारी जनरेशन्स के। और आप भारतीय हैं, और भारत का इतिहास पिछले 6000 साल में पूरी दुनिया में 96% टाइम, मतलब 1200 से लेकर के 1947 का काल छोड़ दीजिए, तो भारत 96% टाइम ऑफ सिविलाइजेशन, भारत एक अग्रणी देश था। भारत हर चीज में अव्वल था, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो चाणक्य की, चाहे वो रिसर्च हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो मेडिसिन हो आयुर्वेद की, चाहे वो ब्रह्मांड का ज्ञान ऋग्वेद में हो, चाहे वो शून्य के ज्ञान आर्यभट्ट में हो, चाहे वो नालंदा की यूनिवर्सिटी हो या तक्षशिला की यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो दक्षिण भारत में सिंगल रॉक से बने हुए इतने विशाल टेम्पल्स हों, आर्किटेक्चर से लेकर के सी फेयरिंग तक, मतलब शिपिंग तक, ट्रेड से लेकर के साइंस और सर्जरी तक, भारत एक अग्रणी देश है। ये हमारा इतिहास है।
और वो इतिहास आपके अंदर है। उस इतिहास के ऊपर गर्व करिए, और उस इतिहास के साथ जस्टिस करिए। भारत ने कभी किसी पे इन्वेजन नहीं किया, और अब इस भारत में हम किसी का इन्वेजन झेलेंगे भी नहीं। अब हम वो भारत नहीं है जो कोई व्यक्ति हमारे अंदर आतंकवाद करके चला जाएगा और हम चुपचाप सिर्फ निंदा करते रहेंगे। हम दूसरों पे आक्रमण नहीं करते, लेकिन हमारे पास वो क्षमता है कि अब हम जवाब तो दे सकते हैं साहब, और बढ़िया जवाब देते हैं। लेकिन उस डीएनए की आपको आगे बढ़ाना है, उसकी रक्षा करनी है, और उसके गौरवशाली इतिहास को, अपने भविष्य को अच्छा बना करके उस गौरवशाली इतिहास में एक और चैप्टर ऐड करना है। तो ये चैलेंज मैं आपको देता हूं, और इस चैलेंज के साथ अगर यहाँ पे डॉक्टर कलाम होते, जो मेरे गुरु थे और मेरे हमने किताबें भी लिखी, हमने साथ काम भी किया, अगर डॉक्टर कलाम होते तो वो ज़रूर आपसे कहते कि आप एक छोटी सी ओथ लीजिए। ये डॉक्टर कलाम के शब्द हैं, मेरे नहीं है। तो यदि आप सब रेडी हैं, और आपने तो बहुत सारा ब्रेकफास्ट खाया है और उससे भी ज़्यादा आपको डिनर और लंच आपको प्रॉमिस्ड है, सो बुलंद आवाज़ में यदि आप सब रेडी हैं, आप बैठे रहिए। एक ओथ हम लेते हैं, और उस ओथ में पेरेंट्स भी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यंग तो सभी हैं। डॉक्टर कलाम के हिसाब से वो सब युवा हैं जो मन से युवा हैं, और जो मन से युवा नहीं हैं, जो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, वो सब युवा नहीं है। तो जो युवा है वो सब ओथ ले सकते हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलेंगे आप? इंग्लिश में करते हैं इसको, क्योंकि डॉक्टर कलाम ने उसको इंग्लिश में कंपोज किया था। रेडी? ओके, रेडी? ऊपर वाले रेडी हैं? चलो ठीक है, ओके। आई विल हैव अ लार्ज एम in life. I realize that small aim is a crime. Small aim is a, क्या है small aim? तो कोई यहां क्रिमिनल नहीं बनेगा, स्मॉल एम ही रखेंगे। और आप उस स्थिति में हैं, आप एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट बन गए हैं, आपके लिए तो स्मॉल एम बिल्कुल ही क्राइम है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आई विल बी अ गुड मेंबर of my city, of my state, of my nation, and be a global citizen. तो आप सबका ध्यान रखना है। आप पुणे में आ गए हैं, जो लोग पुणे के हैं वो ठीक है, जो नहीं आए हैं, जो बाहर से आए हैं, अब आप इस शहर के पार्ट हैं, और ये बहुत ही रिसर्च वाला शहर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शहर है, डिफेंस वाला शहर है। इस शहर की ध्यान भी रखना आपकी जिम्मेदारी है, और वो शुरू होता है आपकी यूनिवर्सिटी से, आपके हॉस्टल के रूम से। ठीक है। थर्ड, I will work with integrity and succeed with integrity. Succeed with integrity में डाउन आवाज डाउन हो गई। Succeed with integrity, succeed भी इंपॉर्टेंट है। कोशिश तो करेंगे ही हम सच्चाई और ईमानदारी से, बट सफलता भी प्राप्त करेंगे, है ना, वो इंपॉर्टेंट है। Today onwards, I will ensure that I make my mother happy every day. अब सब मदर बैठी हुई हैं, सबने नोट कर लिया है, और आप बच नहीं सकते, है ना। डॉक्टर कलाम कहते थे, when mother smiles, family is happy. When family is happy, the state is happy. When the state is happy, there is order in the nation. नेशन में ऑर्डर हो जाता है, व्यवस्थित हो जाता है। अगर फैमिली व्यवस्थित है तो राष्ट्र व्यवस्थित रहेगा। And when there is order in the nation, there is peace in the world. You know, Chancellor sir was talking about ऐसा वर्ल्ड जहाँ कौन किस पे मिसाइल डालेगा समझ में ही नहीं आता। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है परिवार से, और परिवार कहाँ से शुरू होता है? माँ से। तो अपनी माँ को रोज मुस्कान आप देंगे तो आप विश्व में शांति लाएंगे। अब मम्मी को मुस्कान लाने के लिए पापा को परेशान मत करना, है ना। पापा के में खर्चा बढ़ गया मेरा, तो आपको मम्मी को मुस्कान लाने के लिए, अभी मम्मी देखो चली जाएंगी घर वापस, आप फ़ोन करना रोज़ उनको, और बताना कि आपने क्या सीखा, क्या अच्छा किया। उनको बताना कि आपकी याद आती है ना। बस इतना ही बताना है, लेकिन रोज़ बताना है। अच्छी प्रैक्टिस की प्रॉब्लम क्या होती है, रोज़ करते रहोगे तो ठीक है, जिस दिन नहीं की उस दिन छूट गई तो फिर छूट जाएगी। अगर ये सोचा कि आज नहीं कल कर देंगे, कल नहीं परसों कर देंगे, वो होता ही जाएगा।
और फिर जीवन निकल जाएगा एक दूसरे डायरेक्शन में. सो इंश्योर दैट यू हैव मोबाइल फ़ोन पे अलार्म लगा लेना, रोज़ रिमाइंडर आएगा, मम्मी को कॉल करना है, रोज़ करेंगे आप लोग? हाँ, तो जो नहीं करेगा उसकी मम्मी पकड़ लेंगे उसको, ठीक है. अच्छा, अब लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी हमने बात करी राष्ट्र की, तो राष्ट्र के लिए क्या करेंगे हम? माई नेशनल फ्लैग flies high in my heart, and I will bring glory to my nation. क्या लाएंगे आप लोग ऊपर वाले? ग्लोरी टू माई नेशन. तो लाम बंद हो जाइए, कमर बंद हो जाइए, लग जाइए. अब आपकी ड्यूटी चालू होती है इस राष्ट्र के लिए. ये राष्ट्र अब आपके हवाले है, ये किधर जाएगा ये आप डिसाइड करेंगे. धन्यवाद. Thank you, sir, for not just being here today, but for being a source of vision, values, and inspiration. We are truly grateful. It is now my great honor to invite our chief guest for the day, a distinguished leader and an inspiring figure, Mr. Suresh Mahalingam, Chairman of the Aviva Group India, to address the gathering and share his valuable insights and words of wisdom. First of all, it's unfortunate that I'm the last speaker, because you've heard 6 terrific speakers, and each one of them gave their own perspectives of what you need to do. So when I come last, I have to reinvent, reimagine, rethink, and say some things which possibly either adds on to what they say, what they have said, or possibly leave a mark. So you can understand my position that being the chief guest is actually not the best thing to do, right? It's good to be a dean, it's good to be a chancellor, it's good to be a vice chancellor, you get to speak first. But all said and done, I think every speaker today spoke so beautifully about their values, their life, their experiences. And in each of those stories, I think there is a great perspective for each one of you to learn. So let me start beginning first by why am I here, right? It's not the first time that I'm standing on this stage. I've stood on this stage a couple of years ago and have addressed a similar audience. And when I got this call from Mr. Sanjeev Kumar Dash to saying, Suresh sir, can you please come? My first memory went back to Bala sir, right? Because in my lifetime, I've seen many leaders who have done extremely well, but there are few leaders who have aura, right? You can see that little bit of shine on their perspective. And so when this invitation came on behalf of Balaji University, I did not say no. I was spontaneous in my positive yes. And this is for me a tribute to Bala sir, right? I'm here simply because this man is an institution, this man is a legend in his own right. And the fact that there are so many bright students here and so many bright students that have graduated and gone, these are the true potential leaders of India. And so when I was thinking, what is it that I need to communicate with you all today? I told myself that possibly the journey that I'm going to talk to you is about how do you transform yourself from being who you are to a leader. Ignore the word MBA there. I just put the word MBA as a metaphor because this is purely education. There are multiple people here. So before I forget my manners, I think it's important for me to recognize the respected people on the dais. And thank you, Chancellor sir, for inviting me. It's an honor to be here, and it's an honor to communicate my 2 bits to each one of you. I also would like to thank all the people on the stage, Mr. Biju Pillai, Dr. Dimple Saini, Dr. Agase, Dr. Shurade, of course the Chancellor,
And some names that I may have not taken, please excuse me. That's not intentional. That's possibly not there in this list right now or as speakers. But more importantly, I think the guest of honor, Dr. Srijan Pal Singh, and I think his speech was inspirational, right? His speech was something that many people can learn and relate. And I, for sure, I'm going back today, very learned, learning the aspects of what leadership is all about. So my story to you today is going to be a little bit of interaction. I did this entire presentation yesterday from 7 to 11 o'clock, and I was thinking, what is it that I need to communicate to you all? And the answer that came to me instantaneously is, if I were sitting in your shoes on the other side, and I was young as you are, and if I have to traverse a journey going forward in my life, in my career, and with the things that have changed in the world today, how do I become a good leader, right? And therefore, how do I translate my knowledge of what I have, what I will acquire, and therefore, when I go to this volatile world, right, how is it that I will prepare myself? So before I begin, I want to ask you all a simple question, right? The first slide, please. Imagine you're the captain of your IPL team, and it's the final over. A lot of cricket has been spoken today. It's the final over. It's the final over of the final match. Your team is looking at each one of you. People are nervous. Some are excited, and they're waiting for each one of you to lead. Right? You're the captain of the team. Is the final over of the final match. In one word, what do you want your team to say about you as their captain at that moment? Understood? Yeah. Each one of you is a captain in your own right. You're in the final row of the final match of the IPL team. Everybody's nervous. Everybody's excited. What would you want your team to say about you? Any answers? Describe it in one word. You're the captain. What will they tell you? Shout. Okay, I'm with you. Okay. I believe in you. I'm with you. I believe in you. Come on, guys. There are some attractive prizes. We will win. Be happy. You're the captain. What are they going to say about you? It's the final over. You can do it. Do your best. You're a team. You can do it. We believe in you. We will. We can. Oh, you've already won. Okay. Okay. Now, understand all these attributes that are coming in as possibly the dimensions of what a leader is. We will win, we can do it, we believe in you, we trust you, we are a team. Okay, all those things that you spoke about is basically the attributes of what a good leader is. So therefore, when you graduate, when you go through the course of your studies for the next 2 years, all of you will become leaders. The story that Dr. Singh was also talking about is in terms of putting the young leaders in front of the press is an indication of what leaders can do, right? So therefore, go to the next slide, please. Do you have a... Can I move it myself? Can I move it myself? Okay. So leadership is not a title you get later. People think, I graduate, I become a leader. Leadership is not a title you get later. It's a journey that starts the day you choose how to learn, how to act, and how to influence others. Okay? Now, many people will not, and all the things that I'm going to talk to you today is about how I became a leader, right? What did I do when I was sitting in your shoes?
And in my journey of 40 years, as I graduated out of college and went through my journey, what are some of the things I learned? What are some of the things I unlearned? And therefore, I'm giving you a perspective what leadership would mean, and therefore start preparing you for becoming a great leader as you move around. So leadership is not a title that you get later. It's a journey that starts the day you choose to learn how to act and how to influence others, right? Now, ignore the MBA there, right? It's all the courses that I'm talking about here. So every course that you do is not a course, right? It's act one of your leadership story. So whatever you do, you're preparing yourself to become a good leader as you go. What you choose to practice now in the 2 years that you're studying will actually start shaping your future. So please understand that everything that you do, I heard some that your parents will go away, you'll start going to the mall. That's fun. It's okay. But if you're going to make fun your part of your life, will that shape you as a leader tomorrow? I'm not too sure, right? So therefore, it's important for you to understand that if you want to become the person you want to become at a later point of time, the years that you spend through these academics, you will have to start creating habits, form behavioral things, look at learning, look at doing things which will shape you as the person you want to be as you graduate out, right? Now, now that you have joined Balaji University, right? Imagine this entire 18, 19 acres or whatever piece of land is there is actually the soil, and you are the seed. So you have come here, you have planted yourself in this huge, humongous ground, right? Now you will have to grow. So over the years that of your studies, you will start growing. So what will you grow? So when you grow, what are the things that you want to look at? Now, some of the things that you'll all get used to is academics and books and tests and the case studies and a whole host of other things, right? But the fundamental thing today in today's life, where most leaders are failing in businesses and companies, is their ability to not to learn more. So if you do not have the habit of continuous learning, then your ability to succeed at a later point of time is not enough, is not adequate. And therefore, it's important for you as students, for you to immerse in knowledge. And knowledge not necessarily into textbooks alone, but with so much of information that's available today, it's important for you to dig deep and understand why something is being done, and so on and so forth. The second big thing that you need to look at is to acquire skills and master them. And the skills that you pick up here. But if you purely look at, hey, I need to pass my exams, I need to get a job at the end of the day, and this is what I've come here for, probably you will succeed. I'm not saying you'll not succeed, but if you want to become a better person, immerse yourself in trying to understand and get some skills and master those skills. And more importantly, whether you're in BBA, whether you're in any other forms of studies that you're getting into, you need to have the razor focus approach. And I think a lot of insights came in from Dr. Singh's communication in terms of how they launched the satellites, what was the focus behind what they did, how they did, what kind of attention they gave, the ability to fail and learn as they go on. So it's important for you to understand that if you do not focus on things that you're looking at, you will fail. You will not succeed. And therefore, treat these years of studies
as in a single-minded fashion of I want to become a better person, I want to learn, I need to immerse in knowledge, knowledge makes me powerful, I need to get a skill, whether it's in any particular area that you want to do, and this skills and this knowledge will hold me in good stead as I go forward and look forward to multiple things in my life. 2 years from now, or whatever years from now, when you live with a degree, you have to live, you have to learn to live to tell your story. And your story should actually be you should actually start writing your story today. Yeah? So that's what is planting the seed mean. Because once you do that, once you've acquired knowledge, once you've acquired skills, once you've acquired the razor sharp focus, then you become what is called leaders. Sorry, what the hell? Why is it not moving? Yeah. Leaders are trusted because they know deeply, they can do what they talk about and focus on what drives results. And these are called leaders, right? And therefore, you need to understand that you can do what you talk. And as a consequence, that focus will take you to higher places. Now, I want you to take a moment and look at what is one skill that you will want to acquire in your stream of lines of business that you're in, whether you are a BCA, MCA, BBA, BA Liberal Arts, or BSc Actuarial Science, or MBA, on BBA and MBA. What is one skill you are determined to master? Pick up your mobile phone and write it down. What is one skill that you want to master in the next 2 years? Any thoughts? Any skills you want to master? Communication, okay? Why? Sorry? It is? Okay. Communication is pervasive, right? So what will you use communication for? It's pervasive, all right. How will you excel? What will communication do for you? Okay. To make better relations with one is a good answer. But please understand, when you're a leader, if you're able to communicate well and if you can influence well, your ability to story tell a strategy, a business plan, an idea goes so strong that people will start looking at you as a person who's intellectual, who's got clarity of thought, who's a person who can deliver and make things happen. Right? Now, you just said communication, but the deeper insight of knowledge, understanding the skill and the focus that I spoke about a little while ago is about the ability to understand what communication can do. Many leaders in in middle management and senior management in organizations lack the fundamental skills of influencing and the art of communication well. And communication does not mean write in an email. That's also part of it. But the communication in its true sense means the ability to influence without authority and ability to tell a story well. Right? So fantastic. Please give her a hand. Yeah. Okay. What other skill? Any other skill? Yeah. Personal approach. Beautiful. Why personal approach? Fantastic. Beautiful answer, right? Now, why is personal approach important for a leader in the sense as you go to work that most of the work that we do when you finally get into a role is the entire aspect of collaboration. So when you will learn all these things, I'm sure, in your management courses, but if a leader does not connect well and does not collaborate well and does not do good teamwork well, he will not be able to do great things in life. Now,
And so because of that, what that gentleman said, in your 2 years, it's important for you to collaborate as much as you can with your professors, with your lecturers, with your team members, in your case studies, in whatever you do, and acquire this skill of interpersonal relationships. And that is what is called collaboration, right? Any other skill you want to acquire? Sorry? I heard somebody say? Okay. So when you say leadership skills, what are you referring to? Yeah. Okay. Nice. So leadership is a lot many things, right? Leadership, and that's exactly what I'm going to talking throughout today. Yeah? Okay. One skill of result driven in management parlance is called result orientation. Why is result orientation important? Okay. Without outcome, things will not run. For result orientation, what skills do you need to get? Okay. So now all that you're saying is correct, right? But for result orientation, you have to understand the skill that you need to acquire is how do I do things? Why do I do things? In what way can I do things? What is the process of things getting done? Exactly, even in your studies, how do I master a particular subject? What process should I follow? How much should I read? How much deep should I go? How much knowledge should I acquire? Right? How should I attempt multiple questions? If your outcome is to get good marks, for example, the question is good marks will not come by reading the book. The good marks will start coming in by practicing, by reading, by acquiring, by understanding the process. It may be sounding a little boring to you in terms of what I'm trying to communicate to you, but please understand that these are the fundamental things that you need to acquire. And then whilst the business schools and the schools will teach you the tools to get there, but a lot of it comes through experience, a lot of it comes through your practice, a lot of it comes through your habit. And so therefore it's important for you to understand that this is important. I shall just move forward in the interest of time. Okay. Going fast. How do I go back? Not moving, is it? Which side? Okay. Now, let's say you entered Balaji, you planted the seed, right? Now you are on the path of growing. Now you're walking around the entire Balaji campus, right? Multiple classes, multiple recreation places, lots of things to do, okay? Now, how are you going to find your path and purpose as a leader? What will you do to find your path and your purpose as a leader? All of you have come here for what? Right? All of you have joined the course for what? To get success. What else? To acquire knowledge. I'm seeing the same speaker speaking. Let's hear some from this side. Sorry? I heard somebody say something. Yeah? Exposure, okay. What else? I think the fundamental, yeah, lady. Shape your future. Yeah, perfect, right? As you're in the studies, as you are acquiring the knowledge, as you're trying to understand and get the focus right, I think you've got to ask yourself, why are you here? Right? How many of you ask yourself, why are you here? What makes you come alive? Right? You took the pledges towards the end of doctor's speech, right? What does that pledge mean?
The pledge means that there is a discovery that you need to do. There is an act that you need to do. There is something that you want to achieve. And therefore, it's important for you to understand what will make you alive while you're studying. And then therefore, find that path. Find that path, okay? And when you find that path, you'll find the going sometimes extremely difficult. Lots of exams, lots of tests, lots of study material, lots of work to do. You have to burn the midnight oil. All that will happen, right? And then, therefore, when you do all that, the most important management lesson that will help you going forward is how do you manage your time? How do you prioritize your work? What will you do first? What will you do last? And therefore, what is important? What is not important? All becomes critical parameters for you to understand. And therefore, in that point of time, you may turn around and say, बहुत काम हो गया यार, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, मतलब दुखी कर दिया यार प्रोफेसर ने, right? And so your emotions, and you'll call up your mother and say, very tiring, I have no time to talk to you. And I think doctor has said every day you must talk to your mother, right? If you don't talk to your mother. So how do you manage those emotions, right? Now, nobody's going to tell you this. Nobody's going to teach you this. Because when you go into the real world, you will be under constant pressure. While you're studying, there may be pressure. If you learn to manage the pressures well and your emotions well while studying, your ability to acquire the skill when you go out as a leader will become very easy. And therefore, it's important for you. I think some of the speakers spoke about managing health, right? Health is also a manifestation of how you manage your emotions. Okay? When do you get angry? Why should you get angry? When do you become stubborn? How do you become stubborn? And why am I stubborn? Why am I showing a different body language? Why am I not being seen by the professor? What can I do to please the professor? How shall I get more marks? How do I manage that? All are manifestations of emotions. And it's important for you to understand that if you learn to manage stress, you will start becoming a better leader. And the last point is also about your mindset. All of the things that we do is a manifestation of how your mind tells you what to do, what not to do. And therefore, while you're studying, while you're at it, always have this mindset of growth that I want to do better. I will not have, I have done this before, this is the right way to do it. I have got years of experience, no one can do it better. This is the way I will learn. Those are all fixed mindsets. In today's day and world, any leader who comes with time-tested experience and practice, who feels that itna mein itna hi hota hai, is a fixed mindset. The real world is asking you to do great innovative things, think out of the box, move out of your comfort zone, get into a zone which is discomfortable, but in that zone of discomfort, you will start thriving. You will start becoming successful. And therefore, it is important for you to turn failures into fuel. Exactly the way after phase 2, when the satellite went down and there was an issue of oxygen not flowing into the pipe, and it failed. The failure taught them to look at a growth mindset of coming back after 1 year and lifting the rocket off. And so it's important for you to understand the lessons that you have to continuously grow with a growth mindset, and that will propel you to go to greater heights, right? So purpose-driven leaders, So purpose-driven leaders inspire others. Dr. Satish Dhawan, I'm sorry I'm borrowing your examples very freely. Dr. Satish Dhawan was a purpose-driven leader who inspired an entire generation of great scientists, great astronauts, great in the astrophysics space. And there cannot be a better example than Dr. himself, right?
he's a great, I mean, the fact that he's worked with Abdul Kalam, the fact that he's inspired by Dr. Abdul Kalam, okay, is a manifestation of you becoming one of those people. And therefore, purpose-driven leaders inspire others. Leaders who manage themselves only can manage teams. Is because Dr. Satish Dhawan said, please go, I will manage the press. And because he managed the press the first year of failure, in the second year, he allowed his team to talk to the press when there was success. And therefore, that's a great it's a great example of leaders who manage themselves can manage teams. And like in this journey, again, there will be lots of challenges. Moving too fast. Yeah. Okay. Like the SLV went into the Bay of Bengal and there were multiple challenges, and the foreign press were laughing at India, right? You will also face a lot of challenges. Yeah. And if you think that your couple of years are going to be easy, there'll be no challenges, you'll be surprised, right? And therefore, where there is leadership, the muscles must grow. You must become powerful, right? Every hero faces a storm, and in your journey, there will be late night, difficult teammates, self-doubt, right? You'll start doubting yourself. Am I good enough? Can I do this? Can I not do this? And so on and so forth. I want you to focus on a couple of things in your journey which will hold you good when you go out, right? Life is all about excellence, right? We talk about doing things in a good way. We talk about excellence in achievement, excellence in execution, excellence in studies, excellence in cooking, excellence in whatever you do, right? And therefore, it's important for you to understand that the journey is of excellence, and excellence means knowing and going beyond, right? It's the ability to do things properly and act in a particular manner that excellence is all about. The second thing that no business school or no school teaches you is something that you need to acquire so deeply, so intensely, that when you become a leader, when you go out, you have to understand the word empathy and selflessness. I think the Chancellor spoke about it in a different context of the word balance, and he also brought in the aspect of being happy and being balanced and get things done, right? Many leaders use power and independence to get things done. They become toxic to the extent of saying, this is the way to do it. Sometimes you'll face these kind of situations even in your studies. And the ability to understand and relate and become humble, be with all humility, and show that empathetic nature of yours will hold you in good stead. Because at the end of the day, a good leader is not about himself. A good leader is all about being selfless. And if you become selfless, then you're thinking about others. And therefore, in your classroom, look at bonding, look at working together, look at sharing your knowledge, be empathetic with everyone that you are. And if you practice these skills day in, day out, you will start these behaviors will start getting into you, that when you go to the real world, when you face challenges of a toxic boss, or a boss who says just get it done, or you work in a situation where you find the environment not very conducive and you ask yourself, what the hell am I doing here, right? Those are the situations when you learn to be empathetic, and this is something that you need to have. Thirdly, I think most speakers spoke about it. One of the things that a good leader displays, and what you need to do when you get out, is be authentic. This has become a world of pleasing. It's become a world of demonstrating and showing. It's become a world of one-manship, that I'm smarter than you and that I can do things better than you, which will also happen in a competitive world in a classroom, right? But more importantly,
do a lot of self-reflection and ask yourself, hey, is it me? Is this the real me? Am I changing because somebody is asking me to change? Am I becoming fake? The moment you start demonstrating these qualities as a leader, as a student, at some point of time, it gets ingrained in you as a habit. And when it gets ingrained in you as a habit, it's very hard to change habits. And therefore, it's important for you to understand that you need to be authentic always as a leader. You have to be who you are, what you are, but start the process of learning. And secondly, it's important for you to take decisions and demand accountability, right? It's important that you should take decisions in your life. So storms test characters. These moments build leaders who are trusted, followed, and respected. Right? Now, I just want to jump into something else that might... how do you discover your superpower? Okay. Now, all of you will become great. The whole purpose of talking to you today is to take you through a journey of how you'll become a great leader, from a student to a great leader. Many of the speakers spoke about technology. Many of the speakers spoke about embracing technology, right? In your journey, as you exit out, the words that you will constantly hear wherever you work is the word innovation. Again, it's a very highly misused word because nobody knows what innovation is all about. And then therefore, you need to ask yourself, what is it that I will do differently? What is it that I'll do something in a different way that can create a momentum of change, a momentum of something that you can contribute? And therefore, in your journey of discovering yourself, it's important to influence, innovate, and inspire. Yeah, the 3 I's you need to keep in mind: influence, innovate, and inspire. And so the lady who spoke about communication as an important tool, communications and influence indicates your ideas need a voice. And therefore your skill that you spoke about, communication, was it was an excellent point. The third thing that you need to do when you become a superpower and discover yourself is also, many of us have forgotten how to listen. We like to talk. We love talking. We love communicating. We cut the other guy. We just don't have the habit of listening. As a student, you have to listen. You have to understand. And therefore, it's important for you to develop. Leaders hear what others miss. And so it's important for you to listen and develop this art of listening, because when you go into your workplace, you have to listen because you're going to execute some things done. And if you're not listening well, you will not execute well. And therefore, it's important to look at it. Yeah? So great leaders shape the future by influencing others, staying ahead of change, and daring to try new things. And finally, how do you look yourself in the mirror? Who are you becoming? At the end of the day, you planted a seed. You walked around the garden of Balaji University, right? You faced a storm, you faced some challenges, and now you're coming to the fag end of your academics, and you've got to look at yourself in the mirror. Who are you becoming? When you exit this place, would you want to be the way you are right now? Or you want to be just happy that I've come here, I've graduated, I've got good marks, I'm leaving, I will hopefully get a job, or I will try to get a job, or someone will get me into a company, right? You got to ask yourself from a self-reflection perspective, am I better than yesterday? I think doctor spoke about 1% calculation to the power of 365 and came to 45% change, right? It's the same thing in a different way, that if every day there is an incremental improvement in who you are as a student, as a leader, as somebody who can imbibe all the things that I spoke to you about, and you're making a difference
to the word maturity, that when you walk out of this place X years from now, how do you see yourself? And it's important for you to know. And sometimes it's important for you to reflect and say, this is what I want to be. So therefore, keep your purpose in sight. When I was you, I was very happy. I joined a company called ITC. The branch managers in ITC were about 50 years old, and I was all of 26, 27. So my purpose in life at that point of time was, if I retire as a branch manager of ITC, I would have achieved something in life. Okay? But it was a very narrow purpose and a very narrow vision. I never even imagined to become a managing director, a chairperson, and so on and so forth. I was very happy. And so therefore, purposing changes as you excel, as you become successful with the changing environment that's around you. So keep your purpose in sight. You have come here to achieve something. Do not forget that. And therefore, act accordingly in terms of making sure that that purpose is in sight. Because leadership is not a journey. It's a journey. It's not a title. And so therefore, you need to consistently work in doing what you want to do. Okay? At the end of your studies, people are not going to ask you for your marks, right? They will look at your habits, your values, your stories. No company looks at your marks when they interview you. They will test you for your behavior. They'll test you for your values. They will test you for your clarity of thought. They will test you for your values. That is what they will actually test you for. And so therefore, real leaders grow because they keep checking the mirror. Now, I want you guys to write one leadership habit you will start practicing from today. What is one leadership habit that you'll start practicing from today? Anybody? Listen, okay? And now I'm testing you guys, how much you've heard my speech and how much you've not heard my speech. Okay, one leadership habit you'll start practicing today. Sorry? Positive approach, listening, okay? Compassion, terrific. Yes, lady there. Manifesting the ideas, okay? Perseverance, okay? Time management, resilience, okay? The upper deck seems to be very active. Huh? Patience, dedication. Sorry? Okay, being better than what you are today. Determination, okay? Calm. Okay, now okay. Let's do a simple exercise, yeah? 30 seconds. Take out your mobile, write it down. Yeah, take one leadership habit I'll start practicing today. 30 seconds, write it down in your notes. All written? Then I'll start hearing the voices. Yeah, done? 30 seconds? Okay. Let's hear from the middle row here. Let's hear from the middle row. Or middle, yeah, please. Keen observation, okay? Responsibility, okay? Some more from the back. Sorry? Okay, stop procrastinating. Lovely one. Yeah, lady at the back. Consistency. Okay, upper deck. You're going to be a class champion, boss. Huh? If you're not already the leader, you already become a leader. Huh? You're leading. All answers are coming from you. Huh? Okay. Yeah. Somebody. Yeah. Yes, please, at the back. Okay. This side. Yeah, lady. Yeah. Be. Okay. Ready for change. Okay. Nice. Be confident every time. Determination.
Multi-dimensional. You are AI guy, yeah? Interrelationship, multi-dimensional approach. Huh? Well said, yeah? Good. Okay, Connor, this. Okay, how will you do it? Nice. You're talking like a coach now. Yeah. Managing journaling and all. Very good. Very good. Yeah. Okay. Last. Okay. Any more? Okay. It's enough. All I wanted was to try and get you guys to understand that's important for you to look at what leadership habits that you will generate. And I would urge you all in your entire studies that every month ask yourself, what is one leadership habit that I've picked? And what is one leadership habit that I want to go? So, ladies and gentlemen, I'm not too sure whether I entertained you or I bored you, but my idea was to give you some perspective of as you study and as you exit, that at the end of the day, you will become a leader. And in becoming a leader, it's important for you to understand that it is not the degree that matters, right? It is not the degree that matters. So leaders, okay, leaders aren't born when you get your degree. Leaders are built every day in how you learn, how you help others, how you focus, and how you grow. So start writing your story now, and the world will read it later. So your leadership story must be written in the years that you're studying here. And once you've done that, somebody will read it later. Okay? Now, I want you guys to do a little bit of exercise. Okay? Close your eyes for 30 seconds. Yeah? Picture yourself on graduation day. Right? You guys I've already taken you to graduation day, right? Picture yourself on graduation day. What kind of a person have you become? Yeah? Close your eyes for 30 seconds. Picture yourself on graduation day. What kind of person have you become? Okay? When I say open your eyes, you can open your eyes and then we can have some answers. Don't do yoga and don't do pranayama. Okay, 30 seconds over. Okay, what kind of a person have you become? Let's start from this corner now. Multitask person, multitasker. Okay. Anyone else in the corner? Yes, Mr. AI. A person? Okay, so you want to be a leader of that sort. Okay, nice. Okay, anyone else? Okay, so you're not confident, you're not bold, you're not mature right now. More. Okay, more. Okay. Never be critical of yourself. Say you're confident. Say you're confident, and you will achieve. You through knowledge, you will build your confidence. Yeah. Okay. Yes. Somebody else. Sorry. Owning responsibility. Yeah. You. House. Outspoken. Okay. Outspoken. Okay. Now I'm not going to keep asking, but I just want you to understand that it's a huge audience, there's lots of people, and so therefore getting everybody to interact will always be a difficult thing. But it's important for you to understand that it's not about what you do or what you study, it's about what you acquire from that knowledge that you're picking up, and as a consequence of that, how will you become a different personality when you go out to the real world. It's very easy. It has taken me 40 years of learning and unlearning to even communicate to you this in as simple as I could. But I do understand that if you do not take this
in the way that needs to be taken, then there will be struggles as you move forward. And though these are the life lessons that I have learned over the 40 years, and I therefore put myself in your shoes and said, okay, this is how I moved step 1, step 2, step 3, step 4. And eventually, if I'm able to speak to you today, these are the learnings and the unlearnings that I have picked up. So I wish you all the very best in your entire course. Yeah. I'm also confident there are 800 plus leaders in this room who will go out and become the champions, undertaking huge responsibilities and making a difference to the nation, making a huge difference to the nation. And the proudest moment could be when each one of you actually write an aspiration for yourself and ask yourself what that aspiration is. Aspiration could be the words that you used, but fundamentally, the aspiration should ultimately lead to leading a team, leading others, managing a team, becoming a senior manager, becoming a CEO, becoming a domain leader in whatever you want to do. But once you have scripted your aspiration, these years are the years for you to plant that seed and build into those aspirations. Never forget purpose, never forget the aspirations, and always work towards achieving your aspirations, because your aspirations will actually always come true. But you need to work hard to reach there. I wish you all the very best. Thank you so much. Thank you so much, sir, for gracing us with your presence and enriching this occasion with your perspective and vision. Ladies and gentlemen, at this moment, we have a little surprise in store for you, one that reflects the creativity, hard work, and innovation of the students and faculty of the School of Commerce and Management. It is time to unveil a proud initiative, a digital platform that captures our journey, achievements, and ideas. Presenting to you Vivardhanam, the official e-magazine of the School of Commerce and Management. To mark this special launch, we now request all the esteemed dignitaries on the dais to kindly do us the honor of inaugurating the e-magazine with a round of applause. Go ahead, dive into the world of student stories, insights, and creativity. This is more than a magazine, it's a mirror of who we are. Now, moving on to a very special moment of the day, felicitation of our distinguished guests. It is a tradition we deeply value at Sri Balaji University, Pune, to express our heartfelt gratitude and appreciation to the dignitaries who grace our occasion with their presence. I now request our Honorable Vice Chancellor, Professor Dr. G.K. Shirude Sir, to kindly felicitate our guest of honor, Dr. Srijan Pal Singh Sir, in recognition of his inspiring presence today.
Thank you so much, sir. May I now request our Honorable Chancellor, Professor Paramanandan Balasubramanian Sir, to kindly felicitate our esteemed Chief Guest, Mr. Suresh Mahalingam Sir, as a token of our respect and appreciation. Thank you so much, sir. As we conclude this formal inaugural function, I'd like to invite Dr. G.Y. Shitole Sir, Advisor, SBUP Schools, to deliver the vote of thanks. Good afternoon, everyone. Friends, it is 5 minutes only. I am between you and your lunch. Honorable Chancellor, sir, Honorable Vice Chancellor, sir, Chief Guest for today's function, Mr. Suresh Mahalingam, sir, who is a Chairman, Viva Life Insurance Group. The guest of honor, Dr. Srijan Pal Singh, sir, who has worked with our President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, and he has a long association, written so many books on Dr. APJ Abdul Kalam, sir. Registrar, sir, Deans, SBUP, principals, my faculty members, students, and parents. We already welcomed you in the SBUP family, and friends, today's inaugural function of induction program, which has been roped in by the excellent team of Chancellor's office. Friends, it was indeed a pleasure to listen to Mr. Suresh Mahalingam, sir, who explained various qualities of the leader. And my dear students, you are the future leaders. He compared the student as a seed in SBUP land, soil, and we always call the students as the student managers. They are leaders, and we prepare them with the leadership qualities. Friends, so many leadership qualities the students have learned, and they have given response to the Honorable Chief Guest, Mr. Suresh Mahalingam, sir. The guest of honor, Dr. Srijan Pal Singh, sir, he took us in the space age. He explained about the Satish Dhawan's failure story and leading towards the success. Sir, आपने हिंदी में बहुत अच्छा समझाया. Our students were very happy to listen to you in Hindi. Friends, our Chancellor, sir, always is supportive to us. The team of faculty members under the leadership of Honorable Vice Chancellor, sir, they have worked a lot for planning this today's program. And my dear students, CCT members, they are working hard for last so many days for today's function to make it a grand success. Of course, teachers, the team members, committee members from Chancellor's office, Dean's office, they have made today's function a grand success. I thank every one of the member who has planned this program, and my principals, my faculty members, and every one of you people have contributed.
I extend a thank from SBUP family to all. At the last, I thank the students who have joined SBUP family, their parents, and you are enjoying the induction first day inaugural function since morning with puja and thereafter in the auditorium. Once again, I thank you all for being a part of today's function. Thank you. We request the audience to kindly remain seated until the dignitaries have exited the auditorium. Then from that 20 students, they've identified 7 students and 1 faculty. We went to Japan for a 7 days stay over there. Now I was also accompanying them. Now this year, again, they have come back. This time, this is little more structured program. Now the Japanese team will be coming, one lady from Japanese Kyoto Sekia University coming from Mumbai, and another person from the Kyoto Sekia University, Mr. Shin, he will be joining online. This is going to be on 24th of July at 12 in the noon. They'll explain what is the collaboration which you are going to have in the future. I'll just explain that in a nutshell. There will be a selection process which will be conducted in the month of July, this month itself, towards the end. I want it is Japanese proficiency test. There are 3 type of tests. It is available. It is going to be an online test. I want each one of you. This is the first opportunity you are going to get. Please grab it. Appear for the test. If you are not clearing it, it's fine. If you clear it also, if you are not interested, don't join. Now on 7th, the Japanese team is going to come. 5 students will be coming here. They will be staying in our hostel for a month. Every Wednesday and Saturday, apart from the class hours, they will be taking classes. Wednesday, they will be taking 2 hours. Saturday, they will be taking 4 hours. Now, the students, those who have visited Japan, are they here? So some of them have already passed out, but still some of them are there. So they will also be the part of this exercise. And on September, they will conduct a test. People, those who are clearing the test, clearing the test, another 10 students will be selected and they will be given advanced program. Within that 10 students, 2 students will be taken into Japan Kyoto Sekia University, of course with your permission. Without that, it is not going to happen. They will be taken to Japan for a 6 months duration, 1 semester exchange program. That is what this time, that semester exchange program is under discussion. But this time it is not completely free, of course. Last time it was, entire expenditure was taken care of by Japanese government. But this time, your food and accommodation and travel expenditures which you have to take care of, and program fees is completely waived off. So you take a decision whether you wanted to join this initiative or not. On 24th, there will be a function. I thought of just to inform you. Thank you very much. And stay back, they will give you the necessary instruction where the lunch will be served. Thank you. I'm sure it's been amazing listening to all these wonderful people, but I'm sure that you
I request everyone to please settle down quickly. Hello. I would request everyone to please settle down. Echo, echo. थोड़ा होता है, थोड़ा होता है. बोल के देखो. It's a request to please put your phone on silent mode. Good. Good. Yes. I would request CCT members to please handle the crowd. Tell them just a minute. 2 minutes, 2 minutes. Everyone, please settle down quickly. CCT members, please handle the crowd as quickly as possible. Wait. Teachers to take. I would request faculty members to help the CCT members if they want any in the backside and in the balcony. Good afternoon, everyone. We hope your lunch was as amazing as this day has been so far, and that you are recharged and ready because the second half of this incredible induction day is about to unfold. We are your host for this evening, ready to keep the energy rolling and the vibes high. But before we begin, let us quickly introduce ourselves. I am Karan, a proud CRT member. And I am Silky Pandey, Student Council member and a proud student of MCA second year. It's our pleasure to be your host for the second half of Diksharambh 2K25. Yes, the morning was full of insights and introductions, and now the afternoon promises to be equally vibrant with inspiration, culture, celebration, and heartfelt messages. To begin with, we are deeply honored to hear from the Dignitary
Start from that previous one. No, it's fine. Start. To begin with, we are deeply honored to hear from the dignitaries who guide the vision and mission of our academic institutions. Their leadership forms the backbone of our university's excellence. Let us welcome the principals of different schools of our college as they address our freshers with their words of wisdom. To extend a formal welcome to all present here today, I would like to invite Professor Rekha Kumar ma'am, in charge principal, School of Commerce and Management. Good afternoon, everyone. Hope you all had a wonderful lunch. Enjoyed? Super. Hope you will not be sleeping after having a heavy lunch. All right. Today morning we had lot many speeches, but now post lunch there'll not be. I promise there'll not be a long speeches. We have a wonderful evening plan for all of you. Over here, I mean, I need to say a few words to welcome all of you. So first thing that is coming to my mind is, looking at the full Audi. It's really, really special day for both of us. When I say both of us, definitely for you as a student, you as a parent, and we as an faculty, we as an college authorities. You are starting altogether a new chapter, new journey, a new journey that will lead you to your desired future. And for us it's a special day because we have extension to SBUP families. Since morning it was, everyone spoke about lot many things, and one thing which is common which we actually follow, that in this whole journey, whatever it will be for 3 years period of time or 4 years, the time that you'll be spending here with us at SBUP, you will not be alone. We will be there at each and every step, each and every day, and to give you some key takeaways. First and foremost thing, you've come up so far from your families to join our college, to join the new programs. So make each and every day worth. Is it easy to stay away from the family? Can you imagine staying away from your family, mother ka khana nahi, and no one is taking care of your laundry, staying in the hostel? It's not gonna be easy job, right? घर पे होते हैं तो सब कुछ मम्मी पापा देख लेते हैं. But then when you are gonna be on your own, so definitely it's you and your parents are gonna sacrifice a lot for this day, for all these years. So what we expect from you, that let this whole effort pay you in a very, very positive way. Let's be very productive. Let's be very enthusiastic. At SBUP, at various schools, we don't only conduct the academics, we conduct lot many different activities. Our focus is always on the transformation. When we say transformation, our main objective is not only to give you a degree certificate, that at the end of your academic journey, you will be given a BBA ka degree or BCA ka degree or BA ka degree. Of course, you will be given a degree, but the main idea, the main objective of all the schools is to enhance your personality, to give you a transformation, a complete transformation that actually starts from the head and that ends till the toe. So we claim it to be a head to toe transformation, so that you shall be able to make a difference. When I say difference, normally वो TV में दिखाते हैं ना कि पहले ऐसा, बाद में ऐसा, before and after. So today I want you to click your photo and see that where you stand today, and after spending 3 or 4 years with us, then where you will be.
So that change definitely is gonna be from our side also. But we always say that teaching and learning is a two-way process. Teaching and learning is a two-way process. Just by mere taking admission, your part is not over. So at colleges, at the campus, in the classrooms, our teacher are gonna add value. They're gonna take all the efforts. But then on the same point of time, we expect the same cooperation, same coordination from your side also. As in parents, I will request each one of you to stay in contact with your wards and check with them whether they are attending the classes, whether what they are up to. You can always check the teacher's phone number. You can be in touch with the teachers, but at least be aware that what's going on, because we conduct lot many activities. We try to work on the holistic development of the students. So that's not one day job. So for that, we work each and every day. So that's why I claimed in the very beginning that it's going to be a journey. So that is starting today, and that will be ending maybe after a period of 4 years if you have opted for a 4-year degree program. So let this journey be very enjoyable, very memorable, very transformative, very productive. And we, both the parties, we as a teacher, you as a student, need to take each and every effort. And I assure you from our team, we work, with full heart, with full dedication to make you have a bright future, so that you can be very happy in your future, and we can be very proud to have you as an R alumni when you'll be actually rocking in the corporate world. So over here, I'm representing here today principal of School of Commerce and Management. As I told you, we don't only focus on the academics, we focus on the overall holistic development. So our students have prepared a small quick video just to show you a quick glance that how things work. So let's have that video so that you can also get an idea that how your life will be, what all things are there for you that are waiting. So welcome each one of you. Really happy to have all of you here with us in this auditorium. So that makes us really proud, very delighted. वो जैसे बोलते हैं ना कि घर में अगर एक बच्चा आता है, if any newborn is born in a family, so there's a lot of celebration. तो हमारे यहाँ पे तो आज more than 500 students are there. So it's a really huge proud moment for all of us. So thank you for trusting us. Thank you for being with us. We assure that we'll give each and every best possible effort and make your ward journey very beautiful, very productive. Thank you. Can we have a quick video? Let's have a quick glimpse of what we, our students, have brought for you. हम सब जो साथ में रहे, खुशियाँ सब हाथ में रहे, हम पे बस फासले रहे, हर तुरंत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूसरे से कहें, ये बातें छोटी मोटी बातें याद जाए जैसे कि दिन और रातें रातों से लगाना कभी ये बरसाती मेरे यारों, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, जियो तो पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो. So hope you all are excited to see what all are there for you here. And with that, I take it. And only one thing I would like to say over here is we do everything with full dedication. So whether we do study, we study very hard. If we party very hard. We celebrate with full josh. So these were the few glimpses of the same.
So next glimpses, we'll be having all of you with us. Thank you. Thank you, ma'am, for your thoughtful words. Now, I would like to invite Dr. Richa Purohit ma'am, in charge principal, School of Computer Studies. A very good afternoon to Honorable Advisor, SBUP Schools, Dr. Jiva Shitole sir, Principal Ma'am, Dr. Preeti Ma'am, in charge Principal Rekha Ma'am, all my dear faculty members, respected parents, and dear fresher students of academic year 25-26. As we welcome a newborn child in our family with lots of love in our heart, with lots of emotions filled with pure love for the child, and with the vision of what can we give to the child when he will grow up. With the same zeal, with the same feeling, we all are welcoming all our new students with lots of love filled in our hearts, with the vision of giving them a bright future in terms of their academics, in terms of their placements, to my MCS students and to all other UG students as well, and with inspiration of giving them growth from all the dimensions. As Rekha ma'am has wisely said, that we don't only believe in giving the academics, we don't only believe in academic growth, we also believe in holistic development of our students. So putting few more words with what Rekha ma'am has elaborated, what SBUP school is doing. Because we will not be having another chance to meet with parents. We will be doing this kind of activity and telling our students many a times throughout the academic year and after that also. But because parents are here with us for the first time and probably for the last time like this in the auditorium, so this is a good chance to elaborate what do we do in our academics, and apart from those academic activity, how do we play our specific role in growing a child, in developing his skills from all over the dimensions. So we have various clubs: BizBuzz Club, Techno Tuner Club, Vasundhara Club, Abhivyakti Club, and Rhythmic Fusion Club. Every club has a specific role for development of a student. Like BizBuzz Club is dedicated for business-oriented seminars, conducting sessions which are related with mostly with BBA and MBA integrated students. Similarly, Techno Tuner Club is with School of Computer Studies majorly, and we do our flagship event was Tantra Udgam last year, where we invited other colleges, other universities also, and we conducted 3 different types of activities related with computers, where we asked students to develop AI models, and the predictions were done and coding competitions were done. Similarly, School of Computer Studies under the banner of Techno Tuner Club also organizes Code Fusion, which is our in-house activity. So how they are learning and how they are expressing is again a part of how they are doing with these kind of club activities. Now, BizBuzz Club is dedicated to BBA with their management skills. Techno Tuner Club is dedicated to SCS with their technical skills. Apart from these 3 clubs, these 2 clubs, we have Vasundhara Club, where students can take initiative to get towards the environment safe behavior, how to save our environment, how can we give our best to do for environment conservation. Then we have Rhythmic Fusion Club, where we do conduct various type of activities. Like on 2nd of August, we are going to conduct for SCS and School of Actuarial Sciences students a band activity. And also School of Commerce and Management is also going to, and SHSS and School of Liberal Arts, they are also going to have a band circle for them. So these activities, apart from other academic activities, are also taking place for your kids.
Also, we are focusing on learning via various MOOC channels like LinkedIn Learnings. Our students are having individual learning licenses for tech courses through LinkedIn Learning. They are also having licenses for other courses through Coursera portal. For their laboratory practicals, they have individual licenses for Coursera guided projects. So classroom learning is one single part. Apart from that, you can learn from various different portals, and colleges, university is giving you the opportunity, the students the opportunity to learn from different portals, so that single concept can be understood and taken ahead through different approaches. Also, we promote the entrepreneurship development skills, and I'm proud to say that we have already imbibed 3 students led startups. One startup has already been registered under a company name, and 2 are in the process of being registered. So in this way our students are growing, and I just want to make all the parents present here just assure that we will take care of your wards, provided they are also following the rules. I hope the juniors have already met with senior students and they have told them about the attendance criteria, about conduction of lectures, being present in the labs, the lectures and everything. So because the facility that university is providing is on the cost of attendance and is on the cost of students' performance for every activity, be it in the lecture room, the practical lab, or in the auditorium sessions or any other session where the student is there for another kind of activity, be it a IT expo, be it a industry visit, the YMCA camp. So we are doing a lot many things which probably your wards will be keep on telling you throughout the semesters, the academic journey of their 2-year for MCA, 3 or 4 year for other UG programs. So please be assured that this university that you have chosen for your kids is the best one for their growth, and we will take care of every aspect of their personality, from their academic journey to their overall development. Professionally, how do they behave after they pass the university, and what skills do they carry? We will take it as our own responsibility. So as I'm representing School of Computer Studies as in charge principal, I would like to show just a small video which will showcase what the activities are being conducted by university. As I told you, under Techno Tuner Club we are conducting Code Fusion and Tantra Udgam. Apart from that, in the morning only we have been the witness of launching of the e-magazine of School of Commerce and Management, Vivardhanam. Similarly, School of Computer Studies also has its own e-magazine. So the purpose of these e-magazine is to showcase the talents of students. So if you are earning, if there is any achievement, if you are earning any award, if you are writing something good, if you are drawing good paintings, you can submit to the e-magazines, and then those magazines will be pasted on our magazine boards and they will be printed again, and soft copy is also provided in terms of soft copy books which you can share with your parents. And I'm very sure that when parents see such a book having some write-up written by their kids or some good achievement being mentioned for their kids, they feel very proud. So please try towards this section also, try doing everything best for your academic growth in this institute, and try to get showcase in those magazines also for these schools, and give them as a link to your parents and make them happy. I just welcome every one of you here and thank you for being a part of SBUP schools. Now let's have a quick video from School of Computer Studies.
So this video could give a short glimpses of what we did last year, because the images were from last academic year 24-25. And I would like to have the pictures of this batch also when we will be showing the same video to our next batch 26-27. So I hope the pictures of this academic year taking admission sitting here in the auditorium will be there in our next video. Thank you so much. Thank you, ma'am, for your profound words. Now, I would like to invite Preeti Joshi ma'am, Principal, School of Humanities and Social Sciences. Hello. Hello. Yeah, thank you. Hello, good afternoon. Yeah, you had some test lunch, I know that. Where is the energy? Very good afternoon to all of you. Yes, that's the spirit. I can see this. See, that balcony has more energy than this lower house, I think. Upper house is just dominating everybody. Not a problem. Thank you. Thank you, guys. So you might be wondering now, two speeches are already done. Now one more is coming, and one more is coming, and one more is coming. So don't worry, I'm not going to take much time of yours. But being teachers, you might have seen that movie Andaz Apna Apna. In that there is one character which talks about Goga karke. He says that आया हूँ तो कुछ लेके ही जाऊंगा. In the same way, we being teacher, आई हूँ तो कुछ बोल के ही जाऊंगी, बोलना तो पड़ेगा ही. But the thing is that I'm not going to give you any orientation session over here. Already both the professors have given you clear idea what clubs are there, how orientation is being done, what kind of discipline is required here at the SBUP University. And all these activities and orientation sessions, induction sessions will go on for next 15 days for all of us. So I am representing School of Liberal Arts, School of Humanities and Social Sciences over here. But rest assured that liberal arts is just not limited to the School of Liberal Arts only. It is been percolated in all the schools. Whatever videos you have seen now, we always were part of it. Whether it is Vipani, whether it is dance competition, whether it is hackathon, we always are there. So whatever two videos are shown by both the schools, liberal arts was part of it. And I think big kudos to faculty and students of liberal arts, humanities and social sciences. I know that our school is, as compared to number, I would say that it's very small. It's very small. It's very tiny. But the impact what is going to leave, that's going to be very amazing. Why I say? Because you all are going to be an expert in your lives. Somebody will be in management, somebody will be in computer studies, but at the same time, you need to be a good friend. You need to be a good spouse. You need to be a good neighbor. You need to be a good teammate. You need to be a team leader also. And all these characteristics, all these qualities can be imbibed only with humanities and social sciences. So we all are going to be there with you in this journey of your graduation, and for MCA people it's post-graduation. We have planned drum circle activities for you. We have planned origami for you. So we are trying to take out the creativity from you. We are trying to understand what exactly you want in your life, and that will give you a chance to get to know yourself basically. Sometimes we just follow what others are doing, but what exactly I want here, if I ask you like talk about Shah Rukh Khan, Hrithik Roshan, or for like Katrina Kaif, you all will be able to talk a lot about them, their songs, their personalities, their likings, what they like, what they eat, where do they go. But when I ask you about yourself, sometimes we find it very difficult. We'll just start with 4 or 5 sentences and then we'll get stuck. And that exactly we don't want. We want you to explore yourself, and that's why we all are here. I'll not take much time of yours, but here one important thing I always tell my students, every induction I keep talking about you, about this story. And I'm also just 1 year old in this university. So I'm also learning a lot like you all. But this story I think made a very, very big impact on me. And I always tell my students to follow this story, what message is being given through it. There is a moral that knowledge application is much, much important, because everybody gets the knowledge. We are repository of knowledge, but if it is not being used, then it's of no use at all. For example,
you know how to drive a car, but when you go on the road, especially in Pune traffic, and if you start driving, knowing is not enough. Application is important. Experiential learning is important. Boys here, how many of you can make tea? Chai, coffee, कितने लोग बना सकते हैं? Oh, good. Actually, you know it or you actually prepare it? Okay, so you know that milk is required, coffee powder is required, then milk, coffee powder, water, sugar if possible. But what is the quantity? How it is to be made? Gas on करके कितनी देर तक उसको उबालना है? All these things are very, very important. So it means experiential learning is very important. And here at SBUP, we focus more on experiential learning, innovation, and research. So here is a story. There was a big giant ship and which came to a halt. There was some problem in the engine and that's why it was not working. And the owners were very desperate to start the ship because they were bearing heavy losses due to the ship. There was a problem in the ship engine. So they invited all the so-called experts to fix the ship. They came all in suit boot, very good attire, people from different eminent universities who had a very good experience, so-called. They came there, but they couldn't do anything in that. They couldn't repair the ship. And these owners were really in trouble. And meanwhile, there was a crew member, ground crew member, who said that I know one person, one garage person, who might be able to check the engine and see whether he could fix it or not. Then those people said, anyways, if so many people have tried, let's give him a chance. If he can do it, that will help us out. So that crew member got that garage wala. That was a very tiny, shabby person with a very dirty clothes because he was working in the garage. And when he came, these people didn't pay attention to him because they thought that such so-called good people, good engineers couldn't do anything to the ship. They couldn't fix it. How could this shabby person would do that? But he was given a chance. He went to the engine. He went very close. Then 10-15 minutes he examined the engine and then he came back. He came only with a small toolkit in his hand. See, he opened the toolkit. He got the small hammer from that toolkit. Again went back to the engine. Then he tapped the engine at 2-3 places. And for the surprise of all, that engine came back to the life. They all were very happy. They rejoiced. And they said that, okay, finally now ship is active. Just pay the bills and let's go. And they said, what's the bill? Then this fellow gave the bill of 10,000 rupees. So those owners and staff members were really very surprised to see that. Just tapping with a hammer, why should we give him 10,000 rupees? Then they said, give us an itemized bill, what items you have used. So just show us the bill. This fellow was very smart. He said, he just wrote 2 lines on the billing paper and said that tapping with hammer costs rupees 1. And to know where to tap with the hammer, that costs 9,999 rupees. So that's the power of application of knowledge. So I feel that here SBUP will give you ample opportunity to learn and experiential learning that will make a difference in your life. And I'm very sure that you are going to be one of the best citizens of this globe. So I wish you all the very best. I welcome you in SBUP family wholeheartedly. And again, congratulations to all of you. Thank you. Thank you so much. Thank you, Dr. Preeti ma'am, for your inspirational words.
that is working or not. Now, I would like to invite Dr. Jeeva Shitole sir, advisor SBUP schools, to give briefing about School of Actuarial Science. Good afternoon. Good afternoon. Friends, I am representing School of Actuarial Science to you, but SBUP, Sri Balaji University Pune, has so many other activities. We have a student council for each school. We take the students to YMCA Lakeside, which is our prominent activity, and each class was taken last year to YMCA Lakeside for 1 day overnight trip, whereby the excursions were given to the students. In addition to that, sports activities are in good number. Some of the activities are given to you by some of our other members. As we welcome you today, first day, and parents are with us, students and parents. Every year we try to add some more activities, and I am representing today to you the School of Actuarial Science, which is an interdisciplinary approach school, and students are taught about financial maths, statistics, risk analysis, which is required for insurance business. Then this school has a very good association with Institute of Actuaries of India, and our course structure for all the schools, course structure is designed as per the National Education Policy 2020, whereby actuarial science also has a 4-year degree program as per the National Education Policy. And friends, this is a booming field whereby actuaries are given a good opportunity in insurance industry, finance industry, and second batch is now some of the students who have been given admissions, and their batch is going to be started, which is a second batch. I welcome you all once again. Thank you. Thank you, sir, for your wise words. Now, I would request, there is one announcement for you guys. Those who are interested to participate in the traditional dress competition can give the names to the committee. Sheets will be passed. Thank you. Let's be honest. Nothing burns off a good lunch like some jaw-dropping performances, right? We are all set. We are, just a second, guys, sorry. It's fine, it's fine. Hello. We are all set to entertain you with the cultural performances that brings together rhythm, expression, and spirit. Let us take you on a train journey through SBUP, where each station is having some surprises for you. So, our first station is the School of Commerce and Management. Sit back tight and relax, and of course, be ready for the amazing ride. Let us welcome the students for their cultural performance. हेलो 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 हाँ थोड़ा थोड़ा हेलो 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 उसके बाद सीधा डांस आएगा. हेलो 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 हेलो
hello, 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 hello. ख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए, क्यों बिछड़ना है जरूरी ये सवाल आए, तेरी नजदीकियों की खुशी बेहिसाब थी, जिसने मैं फासले ही तेरे बेमिसाल आए। मैं जो तुमसे दूर हूँ, क्यों दूर मैं रहूं, तेरा गुरूर हूँ। आ तू फासला मिला, तू ख्वाब सा मिला, क्यों ख्वाब तोड़ दूं। जिस राह पे है घर तेरा, अक्सर वहाँ से हाँ मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा, तू मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला, जानू ना मैं जानू ना। संभल जा जरा, मोहब्बत करने जरा, यही रुक जा जरा, मेहरबानी जाते जाते मुझ पे कर गया, गुजरता साल एक दामन भर गया, तेरा नजारा मिला, रोशन सितारा मिला, तकदीर की कश्तियों को किनारा मिला। कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो तुझसे राबता, तू हम सफर है फिर क्या फिक्र है, जीने की वजह यही है मरना इसी के, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सबके लिए किसी न किसी को है बनाया है किसी के लिए। है तो टेढ़ी मेढ़ी राहें, उल्टी पुल्टी बातें सीधे लगती है, तू है तो झूठे मूठे वादे, दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं,
जो दिल में तारे बारे दे जगा वो तू ही है, रोते रोते दे हंसा तू ही है वही, जाने क्यों दिल जाता है, तू है तो I'll be alright, जाने क्यों दिल जाता है, तू है तो I'll be alright. So guys, this is our final act and I want you to join with us and clap with us. Are you ready? Louder, are you ready? Kick, kick, clap. 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 Clap. Kick, clap. Buddy, you're born with a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face. You keep disgrace. Bring it all over. Sing with us. We will rock you. We will rock you. We will rock you. One more time. We will rock you. Thank you guys. I need the mic to be set. उसने settings change किए mic नहीं किया. सीटी कोई नहीं मारेगा. Audience. Audience. It's not working. एक ही चालू है बस. वही बंद कराना है क्या? Audience, it's a request. Please no howling and no whistling. नंद नंदन कान्हा रे, नंद नंदन परम निरंजन, हे दुख भंजन कान्हा रे. कोई हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग ले समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन मदंग और पतंग में संग और खाना. मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके. धुन सांस सांस में बुन के, धुन सांस सांस में बुन के, कर दे प्रेम का गीत का मोह का शब्द. मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली
सुर राधिके मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना सुन मेरे ढोलना सुन मेरी चाहते तो फिजा में बहेगी जिंदा रहेगी होके मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना ధని ధని సగమ మగ సని ధని సగమ గ సని ధని సగమ గ మ గ సని ద మగ మ ధని సని ద మగ మ ధని సా ని ధ ని ధని స ధని స ధని స ధని స మదని 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 పని ని స పని ని స పని ని స పని ని స గమ పదని ద పదని ద పదని స గమ పదని ద పద స మగ మ ధని ధని సని సగ మగ సగ మ పద పదని గమ పదని ద ప మగ పదని ద ప మ పదని ని స సగ మ గ मेरे ढोलना सुन मेरे प्यार की धुन मेरे ढोलना Guys, please no whistling. Please, I'm requesting you again. सुरमा बटोरे चल जाती चाहे मैं डूबा रिश्क हो गया
புள்ள தமிழ் தெரியாதா ஹிந்தில ஒன் செகண்டா के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के छुपा दे मेरे भाई तू ही बता जाऊं मैं कहाँ मुझको जुआ किसकी लगी भाई आके बता रहा हूँ जो यहाँ ले फिकर आजा इधर जीत पे लगा ले 1 2 3 4 get on the dance floor తరుణ తుడిచినప్పుడు అన్నం కలిపి నోట్లు ముద్ద పెట్టినప్పుడు ఎంగిల మూతితో నువ్వు ముద్దు పట్టినప్పుడు సవరించినప్పుడు వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి ఫీలింగ్స్ వచ్చి వచ్చి చంపేస్తుంటాయి ఫీలింగ్స్ ఫీలింగ్స్ వచ్చుండాయి चाहे तो क्यों मैं तू थोड़ी चांद की एक चांद की कश्ती में चल पार उतरना है तू हल्के हल्के के ना दरिया चढ़के मैया मैया गुलाबी तारे चुने तारे चुन मैया मैया दिखते मुझे भारत में दर्द की मारे That was a beautiful performance by the students of Commerce and Management. Now, I would like to welcome Dr. Dilpreet Kaur ma'am, in charge, Balaji School of Sports Science, to address the gathering. Hi, everybody. A very good evening to all. Sorry. Yeah, it's good evening. Okay, so hi, a very good evening to all of you. Good evening. Actually, बालाजी ना बहुत अच्छा खाना खिलाता है. इसकी वजह से क्या होता है, sometimes हम आगे से respond नहीं कर पाते. So I'll wish you again a very good evening, everybody. नहीं, अभी मजा नहीं आया. अभी बात नहीं बन रही है कि UG वाले बच्चे नहीं लग रहे हैं ये. Good evening, everyone.
राज सर अभी बेटर है ना? ठीक है. So 5 marks to me out of 10, right? Okay. So on behalf of Balaji School of Sports Science, I would like to give a very warm welcome to all of you. I just want to tell you a few things about my department. So we are having two different domains. The one is Department of Sports, Recreation and Wellness, who is going to take care of your physical as well as your mental health. And we have taken a lot of initiatives in the past. And along with that, I can also, I wish to also tell you that we are having scholarships for outstanding sports persons. How many of you have ever played sports, any kind of sports? Okay, very few. Falsi. Anyone? Can we get the switch on the lights, please? I'm not been able to see. Yeah. Okay, so now I can see you. So I'll take a two steps backward. Okay, so how many of you have ever played sports, any kind of sports? Okay, that's great. That's great. So guys, for you people, we are having, I have seen that some of my bachelor's of physical education students were sitting in the balcony. And I would like to tell you that we are having scholarships up to 100% depending upon the level of participation achievement. Okay, this is the first time ever in Maharashtra that one university, a self-financed university, is giving scholarships in sports category up to 100%. So a big hand for Sri Balaji University. So last year, we have introduced one course, that is Bachelor's of Physical Education and Sports, which is after 12th standard. I have seen some of my students are sitting here. So in this course, we are only going to study about sports and sports. Now, अभी mind में पहली चीज़ क्या आती है, ये sports वाले हैं, ये पढ़ के क्या करेंगे, right? So guys, I just want to tell you, sports वाले जो लोग होते हैं ना, I always say we are from the field of human engineering. आप लोग research पढ़ते हो, हम भी पढ़ते हैं. आप physics पढ़ते हो, हम biomechanics पढ़ते हैं. आप ट्रेनिंग आई डोंट थिंक पढ़ते हो, लेकिन हम ट्रेनिंग भी पढ़ते हैं. उसके बाद आप में से जो लोग मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं वो एनाटॉमी पढ़ते हैं, किन्जियोलॉजी पढ़ते हैं. यकीन मानिए हम भी स्पोर्ट्स एनाटॉमी पढ़ते हैं, हम भी स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी पढ़ते हैं, हम बायोमैकेनिक्स भी पढ़ते हैं और किन्जियोलॉजी भी पढ़ते हैं. सो वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फील्ड्स. सो हमारा काम सिर्फ खेलना नहीं है, एंड हम पढ़ भी लेते हैं, राइट? सो आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू as doctorate. The reason is because हमारी studies भी होती हैं, हमारा काम सिर्फ खेलना नहीं है. But yes, यहाँ पे हम आपका ख्याल जो रखने वाले हैं, we are going to take care of you, of your physical and mental health. आपके पास 48 games के options होंगे. आप अपनी choice से, आपके home department में, I think Ajit sir is here. Anyone? Okay. Ajit sir is not here. Okay, he's in the balcony. Okay. Okay, Ajit sir is here. Purushottam sir is here, I guess. Hi. Okay, yes, I know, bhai, I know. Okay, so Ajit sir, Purushottam sir, Sheetal ma'am, they all are here to help you out. They will give you an option of 48 games. आप अपनी choice से कोई भी game opt कर सकते हैं. Evening में you are having an option to participate, to practice. It is not only for the boys, it is for the girls also. So you can choose your game yourself. You can go to the center, contact the coach and start practicing, right? We will float a Google form in few days, and you are supposed to be there, present there for the trial. On the basis of trial, you're going to select for All India University teams. First, you will select for the Southwest team. Then again, the trial will be conducted by the coach itself, and then you will be selected for All India. Because we are new into the sports, and there are some of the achievements that we have last year, because only last year we have started full-fledged into sports. So last year we are having 3 international players who have gone for an international tournament at Nepal, and they have won 2 gold medals in each category of kata. Then at present we are having one international player from badminton whose name is the Chancellor.
from the Department of Liberal Arts, and his ranking is 386. World ranking is 386. That means वो world के top 400 dangerous players में है badminton doubles में. So not only this, we are having a lot of people now. अभी BPS के new students आए हैं. We are having South Asian medalists also in karate. We are having a team of kabaddi. We are having volleyball kids. आपके coaches आपको DSRW department में ही मिलेंगे. If you require any kind of assistance related to sports, we are here to help you out. Not only sports, now coming to the recreational part, we will have some fun activities for you. Fun activities, it can be like Zumba, aerobics, or like team building activities we can conduct. And along with that, we are having some outbound activities. I think Shitole sir has already told you about that. YMCA, we take people to YMCA. There's a place in Nilshi where we conduct some kind of activities. You are supposed to go along with your batch, and there you can do wall climbing or different type of kayaking and different type of sports activities. So many of your seniors have already gone there. You can ask them. You can you can ask them and know what kind of place it is and how they enjoy, right? So हम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, हम थोड़ी सी बात खेल कूद की भी करेंगे. I think parents are sitting here so they know how important sports is, how important the physical and the mental health is. Okay, so we are going to take care of that aspect. Thank you so much for listening to me, and a very warm welcome to you all on behalf of Balaji School of Sports Sciences. Thank you. Thank you, ma'am. Now let's continue with the cultural performances. So audience, are you ready for the next station where students from the School of Humanities and Social Science and School of Liberal Arts will greet you with different surprises. Technical team ready? A smart step for a man, a jump leap for mankind. Houston, faculty base here. The Eagle has landed. Yeah, Hampton.
कर लिया तेरे नाम का टैटू serve exactly what you are. Cut! हाथ खुर में से भर के तैयार किए खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती हाथ खुर में से भर के तैयार की खींच खींच के निशाने हूँ मैं मारती खुद ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने ज्यादा तो उम्मीद मत रख सोने तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा गब्बरू दे सीने विच ठा ਵੱਜਦਾ की तलवार वर्गा गब्बरू दे सीने विच ठा ਵੱਜਦਾ ਨੀ तेरा नखरा की तलवार वर्गा मुंडियां ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਗੀ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਨਖਰਾ की तलवार वर्गा मुंडियां ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਕੰਗੀ ਰੱਖਦਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਨਖਰਾ की तलवार वर्गा बारिशों की ताल पे ये खनक मेरे धड़कनों की कह रही है झील तो जरा बार बार साथ मेरे सारे अब थिरकने लगे डोले जमीन आज आसमां मैं तो हवा हूँ हाथ न आऊं मर्जी से अपनी उड़ ही जाऊं खुद की करूं मैं क्या प्यारी रात में चुराए मेरा काजल मुझसे नैना मिला के मौसम होने लगे पागल अब से होके बेफिक्र नाचूं मैं आज छम 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 मैं नाचूं आज छम 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 तो आजा बेबी मुखड़ा दिखा जा बिना पीते ही मुझे तो यार चढ़ने लगी आँख तेरी है बदतमीज रे बारी बारी कर दे शर्म से है ऐसी चीज रे हो साजनों में आँख तेरी है बदतमीज रे पानी पानी कर दे शर्म से है ऐसी चीज रे है नियत की खोटी कर दी बदमाशी बेईमान भी है ये हाँ अच्छी खासी करके जाने ये शैतानी खुद की कैसे करूं निगरानी घूर जाने नॉन स्टॉप मुझे डट के पल्लो लटके रे मारो पल्लो लटके बड़ा तू आई सोनिए जगदी तू सुरतां भलाई सोनिए अग जी तू शहर च फलाई सोनिए तेरे चढ़दी भी पूरी है चढ़ाई सोनिए कल तेरे पिछे सिद्धे किते मैं किन चाहनी दस किवें मैं किन करदा प्यार नी तेरे नाल जुड़ गया दिल दी तार नी आ छत वाला भी पागल चढ़ार दिलों बहुत ते परंदा तेरा करदा कमाल मिलियां बलौरी अखां करदी सवाल तेरे मटक नी तू किन्नी दी चाल नी गल्लां दी लली ने तां कीते बुरे हाल
Yo, just beats. ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਨੀ ਤੂੰ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਠਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਬਿੱਲੋ ਪੇਪਰਾਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਕਮਾਲੇ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੌਰੀ ਅੱਖਾਂ ਕਦੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਮਟਕ ਮਟਕ ਨੀ ਤੂੰ ਫਿਰਨੀ ਦੀ ਠਾਲੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਘਰੋਂ ਨੀ ਬਿੱਲੋ ਹੋ ਗਏ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਦੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਡਾਰ ਤੇ ਕਨਕ ਜੱਕੂਆਂ ਨੀ ਤੇਰਾ ਕਰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੇ ਕੱਢੇ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਕਪੀ ਚਾਰੇ ਕੀ ਗੁੱਚੀ ਅਰਮਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੈਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨੀ ਆਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ 350 ਯਾਮਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਲੈਗ ਨੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਐ ਕੈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਹਿਮ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜਮੈਨੇ ਜੈਜ ਕੀ ਗੁੱਚੀ ਅਰਮਾਨੀ ਪਿੱਛੇ ਰੋਲਦੀ ਜਵਾਨੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਬਰੈਂਡਾਂ ਵਾਲੇ ਟੈਗ ਨੀ ਆਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀਏ ਨੀ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਯਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ ਨੀ ਉਹ ਕਾਲਾ ਕੁੜਤਾ ਪਜਾਮਾ 350 ਯਾਮਾ ਸਰਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਲੈਗ ਨੀ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਐ ਕੈਮ ਸਾਰੇ ਕੱਢ ਦਈਏ ਵਹਿਮ ਪੰਗਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਹੈ ਜਮੈਨੇ ਜੈਜ ਨੀ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਸਵੈਗ 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 ਨੀ Swami
Wow, so that was indeed a great performance. Now it's time for another station where students from School of Computer Studies will grace the stage with their cultural performance. So please welcome the students on stage. टेक्निकल टीम रेडी? लो गाइस, लाइट बंद हो जाएंगे, आ जाओ। हाँ हो जाएंगे सर, आ जाओ, हो गई। बोल बोल, अंदर रुको। क्या कर भाई? 7 मिनट है तुम्हारे पास। आज इस स्टेज पे कैसे डांस करना है ये मैं तुमको नहीं बताएगी। अरे आप नहीं डिस्टर्ब नॉट प्लीज। ओके। तो जाओ और खेलो। मेरा मतलब है नाचो। हाय हाय मैं तो मर गई, हुई अम्मा मैं तो टूट के बिखर गई, हुई अम्मा, हुई अम्मा, हुई अम्मा, हुई अम्मा, चुई मुई से हिरनिया, हुई अम्मा, कल भेड़िया से डर गई, हुई अम्मा, हुई अम्मा, हुई अम्मा। చుట్టమల్లి చుట్టేస్తావే తొంటరి చూపు ఊరికే ఉండదు కాసేపు అస్తమానం నీ లోకమే నామై మరపు చితనైతే నువ్వే నన్నావు నా నిద్ర చులాసా నీ కలలకి చేసా నీ కోసం వయసు వాకిలి కాసా मोहिनी बोल ना, आती क्या अपन लोग को डांस सिखाने? इजी लगता है क्या मोहिनी का डांस? इजी नहीं है। दुनिया में 2 ही लोग कर सकता है मालूम, एक जेलो आणि एक शकीरा। डांस ना एक पूजा है, डांस एक आर्ट है, आर्ट। तो अपन ने कहा बोला 9 है। चल निकल यहाँ से। எங்க போற என் அன்புக்கு நீதாண்ட ஆளு வந்து கட்டிக்கடா என் குடும்பெல்லாம் காயுது பாரு. புள்ள தமிழ் தெரியாதா? ஹிந்தில 1 செகண்டா. कि चांद को घूंघट के नीचे छुपा के लाई तेरे लिए दुनिया से नजरें चुरा के। पीछे कुआं आगे मेरे खाई, तू ही बता जाऊं मैं कहाँ, मुझको दुआ किसकी लगी भाई, आके पधारा हूँ जो यहाँ।
इल्ले फिकर आजा इधर बीट पे लगा ले तू ठुमका 1 2 3 4 get on the dance floor 1 2 3 4 get on the dance floor put the shake on the hard rock show hit it to the party hit it give me 1 2 3 4 get on the dance floor put the shake on the hard rock show hit it to the party hit it give me some more ओ बिल्लो तेरी अख कतल करे लख कतल जदों मूव करे करे लख कतल असला भी लोड करे टाले जा छड़ कराले करनी तू बस कतल हैंड ग्रेनेड वांगू ताड़ कहीं जावे कह आईब्रो दी बनी तलवार कहीं जावे लगे पीले सूट विच पस्तौल वर्गी बोर झांजर दा बत्ती बोर पार कहीं जावे देसी कट्टे वांगू हत्थां विच चलण नूं फिरे बसूके दी तू था कुड़े पल्लण नूं फिरे तेरी चेहरी स्माइल वत कारतूस तू वार्निंग रशिया नूं गोरे गोरे हाथ कतल तेरे पट कतल किला में जड़े पट कतल दिल रोनी दुनिया ते दिसदा नहीं कर गई तू दा जच ओ बिल्लो तेरी असला भी लोड करे डाले जा छड़ कनाल करने तू पास What should I feeling? So what you just say? What I feeling? What should I feeling? That was some performance by the students of computer studies. The next station we are having pioneers of the School of Actuarial Science to grace the stage with their wonderful performance. देखो जाती रे पढ़ाई चली देखो जाती रे स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? ऐसा तो नहीं कहा था। अरे रास्ता रास्ता देखो आज मेरी लड़ी है। रास्ता रास्ता देखो आज मेरी लड़ी है।
आज से लड़ी है वो पास मेरे खड़ी है मुझे जानती है जब से ये मरती है तब से गली से चोरी छुपे जाता हूँ तब से दिल में ही मेरे बस गई खामोश तो देखो You just punched. Let him hear that word. Just let him hear that word. Chamachello, 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 chamachello. मैं डालू ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चल रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं इस मांग में भर दूं तारे हेलो हेलो तू फ्लोर पे जब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो टू मच है तुमने लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई रात बड़ी है देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल पर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज जमीन पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो होशन में डालम हम हैं हर जानम बस दीवानगी 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 है ना कोई हमारे पर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है Hot girls put your hands up and say boys, all make some noise, they'll say. That was a lovely performance from the students of Actuarial Science. Now, I would request Pushkar and Kushagri from NSS Central Unit to take over the stage. ये वाला नहीं होगा ये वाला नहीं होगा इसी पे बोलना पड़ेगा उसको निकाल लेते हैं वैसे नहीं निकालते पागल नहीं बोल बोल
Hello, freshers and respected dignitaries. Hope you had a great fun now. I am Pushkar Saxena, And I, Kushagri Nama. proud NSS volunteers. We feel honored to stand before you today to introduce one of the most impactful and purpose-driven student initiatives of our college, the National Service Scheme, widely known as NSS. Here at Sri Balaji University, Pune, NSS plays a vital role in shaping young minds beyond academics, helping us serve society, understand real-world issues, and grow as empathetic leaders. So, if you are someone who likes to help others, make new friends, or just want an excuse to get out of the class in a socially acceptable way, guys, NSS is the place for you. क्योंकि कॉलेज एक मसालेदार मूवी की तरह होती है, ड्रामा कॉमेडी एक्शन सब मिलता है, बस इंटरवल के बाद अटेंडेंस लेना मत भूलना. Join us and let's do some good. With a smile, some sweat, and maybe a glass of juice at the end. तो जूनियर्स तैयार हो जाओ कॉलेज लाइफ के लिए, क्योंकि यहाँ प्यार भी मिलेगा. टीचर से ओके हाँ हाँ टीचर से असाइनमेंट भी मिलेगा और कभी कभी दोनों एक साथ भी मिलेंगे. Welcome to a place where friendships are forever. Night before exam studies are real, and memories are made over chai and Maggie. कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए जनाब, क्योंकि अगले 30 मिनट होने वाले हैं धमाकेदार. Now, I would like to hand it over to NSS members Tuti Paul and Soumya Suman to carry forward the event. Thank you so much, Pushkar and Kushagri, for that powerful start. I am Stuti. And I'm Soumya. It's an absolute honor to stand here as an NSS Central Unit member of Sri Balaji University, Pune. We are thrilled to introduce you to an inspiring initiative that goes beyond textbooks and classrooms, the National Service Scheme, fondly known as NSS. Before we dive deeper, let's open up to all of you. Does anyone here already know about NSS or has been a part of NSS activity before? Feel free to raise your hand. Thank you. So let's start what NSS actually is. सेवा ही सर्वोपरि है. The National Service Scheme is a central government backend program under the Ministry of Youth Affairs and Sports. It was introduced in 1969 to honor Mahatma Gandhi's legacy of service and simplicity. NSS is designed to ignite the spark of social responsibility in students, turning awareness into action and learning into leadership. The spirit of NSS is captured in its motto, not me, but you. These four simple words carry a profound meaning, reminding us that true growth happens when we look beyond ourselves. When we serve others, we strengthen the fabric of a nation. It is a call to rise above self-interest and take responsibility for the world around us. Some core objectives that shapes every activity under NSS are as follow: to identify community issues and find practical solutions, to foster leadership skills, to develop discipline, dedication, confidence, and a deep-rooted commitment to service. What makes NSS special is how it blends learning with doing, be it organizing health and sanitation, environmental conservation, Swachh Bharat Abhiyan, rural development programs, special camping, blood donation camps, awareness drives, environmental initiatives, or working closely with local communities. Every NSS volunteer carries the spirit of service in real world challenges. In closing, NSS is not something you join, it's something you become. It shapes your personality, builds your resilience, and leaves you with stories that really matters. You doesn't need a title to make an impact, just a willing heart. Whether it spending time with children from unserved areas, promoting environmental awareness, or simply listening to someone who need to be heard, NSS is where change begins with you. We invite you to be a part of Legacy, one where every NSS badge holds a story, every activity creates a ripple, and every volunteer becomes an example of purposeful youth. Let's dive into the heart of NSS where every action counts and every voice matters. So without further delay, I invite our enthusiast NSS team on stage to present this kid. Let's cheer them on as they begin the message to life. Over to you. Thank you. Jai Hind.
वेलकम टू श्री बालाजी यूनिवर्सिटी पुणे। एक नई शुरुआत, नए सपने, नए चेहरे और नया जज्बा। ये कैंपस सिर्फ पढ़ाई का नहीं, यहाँ जिंदगी जीने का स्टाइल है। देखिए कैसे कुछ नए जूनियर्स अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं, कंफ्यूजन के बीच और दोस्ती के निर्माण के साथ। और क्या चल रहा है तेरा? एक्सक्यूज मी। यस। आपको पता है रूम 405 कहाँ पर है? हाँ हाँ, बस 1 मिनट। हाँ बाय। मैं भी 4th फ्लोर पे रहती हूँ, चल मैं दिखा देती हूँ। हाँ यार चलना, मुझे भी दिखा दे मेरा रूम कहाँ पे। इतना बड़ा कैंपस है, मैं तो कंफ्यूज ही हो गई हूँ। सही बोला। शायद जूनियर है ना, फोटोज क्लिक कर रहा है। जूनियर? हाँ। अरे जूनियर, तुम्हारी पूरी गैलरीज भर जाएगी फोटोज पे। एसबीयूपी बहुत बड़ा कैंपस है। कोई ना juniors, click the photos and do mention us also. चल bye यार, we have lectures now. दोस्ती कॉलेज की असली पहचान होती है। हॉस्टल के मेस से लेके ग्राउंड तक वही यादें बनती है जो जिंदगी भर साथ रहती है। देखिए ये नए दोस्त एक मैच के चेयर के साथ अपना रिश्ता बनाते हैं, मस्ती में, चुटकुलों में और एक नए परिवार की तरह। यार आज तो मैच भी है, बहुत मजा आएगा। में खाना भी खाएंगे अच्छा अच्छा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई बैठा है? नहीं नहीं, बैठ सकते हो। थैंक यू। That's cleanly struck. अरे वाह! 4-6 for Rohit Sharma. अरे वाह! रोहित ने मारा सिक्सर। ए हिटमैन फैन। यस, तुम भी? हाँ, मेरा नाम प्रिंस। मेरा नाम जय। मेरा नाम डॉली। मेरा नाम नैना। नैना नैना तलवार, लाइफ में कितना भी ट्राई कर लो बनी, वो वाली। अरे नहीं भाई। अरे भाई ये कोल्ड ड्रिंक देखना। यार पनीर इतना टेस्टी है ना कि ऐसा लग रहा है कि इसकी फोटो खींच के इंस्टा पे डाल दो, बट क्या करूं, टेस्ट तो नहीं डाल पाऊंगा ना। कुछ भी बोलो, एसबीयूपी का मैस बेस्ट है। हाँ यार, घर की याद दिला दी। अरे वो देख, ये कौन से कोर्स का यूनिफॉर्म है? अरे उनके ब्लेजर पे कुछ लोगो भी है यार। ए रुक रुक, मैं पूछता हूँ। एक्सक्यूज मी, ये कौन से कोर्स का यूनिफॉर्म है? ये किसी कोर्स का यूनिफॉर्म नहीं है, ये एनएसएस वॉलंटियर्स का इवेंट यूनिफॉर्म है। एनएसएस का फुल फॉर्म है नेशनल सर्विस स्कीम। ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसमें स्टूडेंट को कॉलेज के साथ साथ सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए भी काम करने का मौका मिलता है। इसका मोटो है नॉट मी बट यू, यानी कि अपनी कंफर्ट से निकल के दूसरों के लिए सोचना। हाँ, लेकिन बस सोशल वर्क नहीं, एनएसएस तुम्हें लीडरशिप स्किल सिखाता है, टीम वर्क की वैल्यू समझाता है, और हाँ, रियल वर्ल्ड स्किल्स जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, इवेंट मैनेजमेंट और इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज भी सिखाता है। और हाँ, तुम्हें कैंप्स, नेशनल सेमिनार्स और बाकी ऐसे और कुछ चीजें को जाने को भी मौका मिलता है। मतलब यहाँ पे कैंपिंग वगैरह भी होती है क्या? बिल्कुल, हमने चांदखेड़ में 7 डेज एनएसएस कैंप किया, प्लांटेशन करी, स्लम किड्स टीचिंग करी, और एक बार हमने गांव में जाकर नुक्कड़ नाटक भी किया था। Yeah, that's quite interesting. Actually, guys, आज हमारा एक इवेंट है and we are getting late. So, bye guys. Bye. ये एनएसएस कुछ ज्यादा अच्छा लग रहा है।
हाँ यार, इंस्टा के रील्स भी बन जाएंगे। बस तेरे रील्स नहीं, अपने रेज्यूमे का कंटेंट भी बन जाएगा। हाँ बिल्कुल नैना। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमारे रास्ते बदल देते हैं। जब आपको मौका मिलता है सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कुछ करने का, वही पल होता है ट्रांसफॉर्मेशन का। देखिए कैसे जूनियर्स को एक चांस मिलता है एनएसएस के थ्रू। यार कितने बजे आया तू आज? 7:30 बजे। पर तू तो लेट आया है, कुछ भी बोल रहा है। मैम आ गए। गुड मॉर्निंग मैम। थैंक यू मैम। यार कौन से आईडी कार्ड्स हैं? ये मेरा आया पहला। रुक जा, मेरा है। दिखा दिखा। ओह अच्छा है यार, ये ले। ये कोई तो आया है यार, देखना कोई तो आया है। चुप बैठना, कभी भी बोलना चालू कर देता है। हेलो जूनियर्स, वी आर फ्रॉम एनएसएस डिपार्टमेंट। सो जूनियर्स कल एनएसएस यूनिट का इंटरव्यू है। ओके, सो आप में से जो भी कोई इंटरेस्टेड है वो अपना नाम एनएसएस सेक्रेटरी को दे। उसके बाद एक फॉर्म फिलअप करना है और एक शॉर्ट इंटरव्यू भी। तो आप में से कौन कौन इंटरेस्टेड है? कर ले क्या? अरे अगर एक्टिंग का हुआ ना तो मैं तो जीत ही जाऊंगा भाई। हाँ, और अगर इंस्टा रील्स का हुआ तो मैं ही विनर हूँ। रहने दे भाई, रहने दे। कितना इंस्टा करेगा अभी। फॉर्म ले रही हूँ पर थोड़ी सी नर्वस हूँ। मैं तो पक्का जाऊंगी, मुझे एंजॉय इवेंट्स का बहुत शौक है। मेरा नाम लिख लो ना, मेरा नाम प्रिंस। मैं जय। इंटरव्यू यार कैसे होगा इंटरव्यू यार कल का? कामयाबी सिर्फ मार्क्स से नहीं मिलती, आपका जज्बा, आपका विजन और आपकी सोच भी इंटरव्यू क्लियर करवा देती है। यहाँ शुरू होता है एक ऐसा सफर जहाँ स्टूडेंट सिर्फ फॉलोअर्स नहीं, चेंज मेकर्स बनने वाले हैं। मेरा पहला। सो एनएसएस के लिए बस पैशन नहीं, पेशेंस की भी जरूरत है। सो लेट्स बिगिन। जय, तुमको क्यों ज्वाइन करना है? मैम पहले लगता था कि सिर्फ रेज्यूमे के लिए कर रहा हूँ, पर अभी लगता है कुछ अच्छा करने का टाइम आ गया, इसलिए मैम। ओके। डॉली? मैम मुझे सोशल इम्पैक्ट बनाना है। पहले मैं वॉलेंटियर थी, अब कॉलेज में भी करना चाहती हूँ। नैना? मैम मैं हमेशा से बैकग्राउंड में रही हूँ, अब मुझे खुद पे विश्वास चाहिए। एंड प्रिंस? मैम बचपन से ही पब्लिक स्पीकिंग में इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लगता है एनएसएस मुझे वो प्लेटफॉर्म दे सकता है। ग्रेट। सो रिजल्ट्स कल अनाउंस हो जाएंगे। थैंक यू। थैंक यू मैम। पल वो होता है जब मेहनत, जज्बा और थोड़ी सी डेयरिंग मिलकर एक नया सफर का दरवाजा खुलता है। इंटरव्यूज खत्म हो चुके हैं, दिलों में बेचैनी है, पर उम्मीदें भी है। ये वो वक्त है जब एक छोटी सी हाँ जिंदगी का नया रास्ता दिखा सकती है। आए देखिए कौन बनेगा इस नए परिवार का हिस्सा, एनएसएस के नए वॉरियर्स। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन, प्लीज सिट डाउन। सो एनएसएस के रिजल्ट्स आ चुके हैं। प्रिंस, नैना, जय एंड डॉली। अरे भाई हम सब सिलेक्ट हो गए। हाँ यार विश्वास ही नहीं हो रहा। यस गाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये सीधा सिलेक्शन है। कॉलेज स्टार्ट होते ही बहुत अच्छा हुआ, कुछ अलग ही जर्नी शुरू हो गई। कहानी जूनियर्स की थी, पर मैसेज सबके लिए है। अगर नए हो तो डरो मत,
हीरो बनने के लिए एक्सपीरियंस नहीं, बस विश्वास चाहिए होता है। Every leader was once a newcomer. Welcome to NSS, welcome to Purpose. Wow, it really did create an impact on us, isn't it? To add more meaning to this, occasion, let's invite the NSS Unit Student President of Sri Balaji University Pune, Khushi Gurbani, to grace us with her inspiring words. Good evening, everyone. It's an absolute honor to stand here as the NSS president of Sri Balaji University Pune and share my journey. One that began as a volunteer in the first semester with nothing but curiosity and a willingness to serve. In the beginning, I simply wanted to be a part of something meaningful, but NSS gave me much more than I expected. It gave me purpose, confidence, and a platform to contribute to society while developing my own leadership. From cleanliness drives and blood donation camps to taking part in awareness programs, I realized the true impact we could create. And by the second semester, I was entrusted with the role of NSS president. With that came greater responsibility, planning, leading, and executive initiatives. Some of the highlights included a tree plantation drive where we planted over 200 saplings, participating in Vari procession, connecting with our rich culture, and proudly contributing to the Deeksharambh program, representing NSS in front of new MBA batch. All these experiences helped me grow not just as a leader but as a more grounded individual. To all the juniors here today, I urge you to be a part of NSS because it's just not about volunteering, it's about character building and becoming a more responsible citizen. And now, as we move from a dose of motivation to celebration, get ready for a vibrant and energetic Bollywood dance performance that brings the spirit of NSS alive in full rhythm. Thank you. गली में मारे फेरे पास आने को मेरे, गली में मारे फेरे पास आने को मेरे। कभी परखता नैन मेरे तू, कभी परखता तोर, कभी परखता नैन मेरे तू, कभी परखता तोर। अंबर सरिया मुन्निया बेकचिया कलिया ना तोड़, अंबर सरिया। हुआ छोकरा जवारे, हुआ छोकरा जवारे। अरे जूझा जूझू करता है गलियों और चौबारों में, फेंका भागी करता फिरे तू तो अपने यारों में। कभा की कुछ नहीं सच बात जो बयां की, दहाड़ है जवां की परदान की मस्तान की। अब तू भी मान ले नैनों के जाम दे, ओ आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे आजा।
हुआ छोकरा जवारे 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 हुआ छोकरा जवारे हिरनी बेचारी साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी। लड़के और लड़के कहाँ से है शक्ल से अकल का तारा है रे तू। हाँ चल गई मेरी बातों से तू चल गई हाँ खल गई तुझे खल गई मेरी बेपरवाही खल गई मोहतरमा तू किस खेत की मूली है जरा पता टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बगदाद से लेकर दिल्ली आगरा टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज बगदाद से लेकर दिल्ली आगरा। जाने कितों आया है सबने दिलों से चौकी कुकू इन्ना सोहना इन्ना कूल मुंडा इन्ना वंडरफुल इन्नू वेखे जे कुड़ियां तो कहंदी हाँ मुंडा सब में सब तो बेस्ट मुंडा बेटर देन द रेस्ट इन्नू वेखे जे मुंडे तो कहंदे ओ माय गॉड ओ सीना चाहे बिस्कुट दा ओ मुंडा चाहे फुट दा ओ धीरे धीरे करे दा धमाल तना होना चाहिए राजी तू तो खामे का डर की तना होना चाहिए राजी तू तो खामे का डर की कभी हड़वे हड़वे चले की या प्यार की गाड़ी रे इन्हें भीतर बढ़ जागी तेरी सॉलिड बाटी रे इन्हें भीतर बढ़ जागी तेरी सॉलिड बाटी रे। होतोय थंड लाली गालावर आली अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली होतोय थंड लाली गालावर आली अंगात भरलंय वार ही कीर्तीची बाधा झाली आता धीर झालो या अगबधीर झालो या आणि तुझ्याच साठी बनवून मजनू माग आलो या आनं उडतोय नट पळतोय चिंगट रंगात आलं या झालंय चिंग 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 चिंग
Wow, that was simply amazing. A big round of applause for our talented students. Like a hello. Like a canvas of cultures and a runway of roots. Yes, it's time to celebrate tradition with flair. Presenting to you the much awaited traditional dress competition, जहां हर पोशाक एक कहानी कहती है और हर मुस्कान हमारे भारत की झलक देती है. From shimmering shararas to elegant dhotis, from turbans to tassels, हर पोशाक में बसी है एक संस्कृति, एक गर्व की भावना. It's a ritual to celebrate the diversity of India as we organize this event every year for the new batch. Now, it's time to introduce the esteemed judges of our traditional dress competition. Dr. Rachna Singh ma'am, Senior Assistant Professor BIMM. Dr. Neera Singh ma'am, Associate Professor BIMM. Mrs. Professor Aditi Adeep ma'am, Assistant Professor BIM HRD. Now, I would request Dr. Richa Purohit ma'am to felicitate Dr. Rachna Singh ma'am. सारा तो ऋचा मैम ही कर रही है. Wait. Hello. I would now request Dr. Richa Purohit ma'am to felicitate Rachna Singh ma'am. Now, I would request Richa Purohit ma'am to please felicitate Neera Singh ma'am. Shivam Singh from BCA. Now, I would request Dr. Richa Purohit ma'am to please felicitate Professor Aditi Adeep ma'am. Thank you ma'am for doing the honors. अदिति मैम अदिति मैम चलो आ जाओ सेंटर आ जाओ. So कहाँ है पार्ट? Okay, good evening everyone. What an awesome performance, isn't it? A big round of applause for the performance. Awesome, right? So I'm Dr. Rachna Singh. It's my privilege to judge the program, that is a traditional dress competition, along with Aditi ma'am and Neera ma'am. So let's start the event, right? So juniors, this is your first day and you have started with the competition, right? So really big round of applause for the students who are participating. Please, ma'am, come. All the students who are participating, can you please stand up? Would like to see your faces. Please participant, please stand up. Those who have given their name for this program. Yes, all the contestants. Oh, they are standing this side. We'll be calling you by name. Start coming from this side. Yeah. Shri Krishna Dhumal. So please come on the stage. Shri Krishna Dhumal. Dhumal. Omkar. Omkar Sarvade from BCA. Rajat Varude. MCA. MCA.
Nikhil from BBA. I hope everybody is coming, right? They all are there? I'll repeat. It's Rajat Varude from MCA, Nikhil from BBA, Sandipam Chaudhary from BLA, Japesh Dhamani, BBA. Please come forward quickly. Aryan from BBA again, Varun Shevani, BBA, Shivam Singh, BCA. I'll be calling all the girls contestant. Vaishnavi Arnale, MCA. Yes, beautiful girls, please come forward. Siddhika Asati. Oh, that's Barbie. Barbie Balsuyag. Bhavika Guru, BBA. Siddhi Deshpande, BCA. Arthika Upadhyay, MCA. Hiral Vakharia, BBA. Johnny Joffe, BBA. Anshika Agarwal, BS. These are the contestants. So apart from these, if any students are interested to participate now, you're most welcome. So you can come and join the team. Anybody wants to come? Whoever has come in the traditional and not given their name, a request from our side, they can still participate now. Is there anybody? So before starting the competition, so let's announce the prize. The prize will be for the winner, it is 3,000 rupees for boys as well as for the girl, and the runner-up will get 2,000 each. So total 10,000 rupees will be divided among 4 winners. So all the best. As per my list, I could see 9 participants as a boys, but there are only 6. Anybody is yet to join? Please join us fast. Okay, I'll wait. Now I would request Vice Chancellor Sir, Dr. G.K. Shirude Sir, to please felicitate our dignitaries. Hello, sorry for interference. I know that everybody has excellent lunch, a good snap also, and you are happy now to observe, to listen, and to cooperate and clap also for the events which is for everybody, all the students coming from different regions, different states, and presenting their traditional dresses. So I wish you all the best. Before that, we are having 2 distinguished guests, those who are associated with Sri Balaji University, Pune. One is the बहुत ही पुराने हमारे फ्रेंड है, फिलोसोफर है, डायरेक्टर है और चीफ कमिश्नर भी हैं और अच्छे ऑथर भी है. हाँ, झा सर, please come here. Yeah, please come here, sir. I request Richa to felicitate the Jha sir, a retired chief income tax commissioner. He is an economist. He writes in our corporate citizen, and he is the member of board of management as well as the finance committee. The another dignitary which we are having, first time coming in Balaji, but closely associated with me since last more than 3 decades, and he is a practicing chartered accountant, Arun Joshi ji. Please do come. He is also the member of our finance committee, and today he has attended, participated, and suggested a lot of things to improvement for our finances. So now, Rekha, please. She is the principal, commerce. Yeah. Thank you very much. And now, take it. Sir, they are requesting to have a good photograph.
Thank you very much. And all the best to my young, very dynamic heroes and heroines. Okay? Enjoy this and remember, this is the first day of Balaji. You remember it after 3 years or after 5 years. Okay? When you will get your degree, passing out. So all the best. Yes, so we will have a ramp walk where all the participants will be walking. And so I will tell from girls, you can start. And boys from that side, you can just start. Yes, students, the participants, both the boys and the girls, looking very vibrant in their colors and their costumes. But see, you would not be judged just on the basis of how you look. It would be your confidence, the way you attire, these all would be counted, and the way in which you would be walking. So what we'll be having after this is, the boys and the girls together would be coming and doing the ramp walk. They will be moving in the circle. And then simultaneously after that, we'll ask to stop, and one person will be asking the questions to the boys. And the way in which you would be answering, you'd be judged on that. Okay? So can we have a big round of applause for them? I know it's the end of the whole program and everybody must be very tired. But at least for them and the way in which they have attired, we need to give them applause every now and then. Right? Deepta, 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 na den den da no, ta na den den da no, ta na den. Big round of applause. So each one of them will introduce themselves and you have to talk about your attire and which religion or culture you are representing. So we start with. Hi, my name is Harjot. Hi, my name is Harjot and I am joining the BBA batch. I am wearing a sharara today and I am from the Sikh religion.
So currently representing the Punjabi culture of in terms of attire. Thank you. Wait there. We'll request Akash Bhattacharya. We'll request Professor Akash Bhattacharya sir to raise your question for her, please. Akash Bhattacharya sir, are you around? We'll request Preeti Joshi ma'am, please go on for the question. Okay. Um, it's really fantastic and very wonderful to see wonderful attires over here and congratulate each and everyone. My question to you is that India is full of diversity and we always feel that there is unity in diversity. So how do you feel that how Punjab contributes to this, what we say, world peace or unity for our nation? That's Yeah, it would be a little difficult, I know that, but you know world peace, what it is and how you all are contributing to it. You are representing Punjab. So what do you think about it? So basically, if in terms of world peace and all, our Punjabi history, in terms of Sikh history, if I should say, really represents the power, strength, wars, and all of that. And honestly, I should be saying that I am not exactly representing the world peace and all of that in terms of the attire, because the appropriate attire for that question to answer would be something like a Gatka Chola. So basically, Gatka is a form of what should I say, martial arts that is produced by the state of Punjab, and in that is a form where you use weapons and all of that. So yeah, that would be it. And in terms of world peace, how we represent it, we basically believe in all. So sorry for that. Yeah. So like the Amritsar Gurudwara that all of us are aware of has four doors to it, right? It's in the center of a pond, a sorovar, and it has four doors representing that all the human beings, despite of whether what their background is, what their culture, what their religion is, all are equal, and they all stand equally, and they all get to have all of the opportunities in the entire world. So yeah, thank you so much. Yes. Wonderful answer by Harjot. Thank Big you, clap guys. to her. So second girl, please come forward. So you all will be getting 1 minute to. Good evening, tell everyone. them. I am Anshika Agarwal and I am representing Uttar Pradesh. I am pursuing actuarial science from Sri Balaji University. The official language of Uttar Pradesh is basically Hindi, so I would like to continue in Hindi. I am wearing a sari that is of an orange color, and orange color signifies the purity and remove impurification. एंड मैंने चूड़ियाँ पहनी हैं जो कि मैरिटल स्टेटस बताती हैं, जो मैरिड वुमेन्स होती हैं उनकी एक पहचान होती हैं चूड़ियाँ, नोज पिन्स एंड जो नेकलेसेस देते हैं, ज्वेलरीज होती हैं, ये प्रॉस्पेरिटी बताती हैं, हमको वेल्थ बताती हैं. एंड आई हैव अप्लाइड Atar, that is a goddess Lakshmi. Goddess Lakshmi used to wear it, and goddess Lakshmi का ये symbol होता है, and goddess Lakshmi अभी भी इसको wear करती हैं. Thank you. We will request Professor Ajay Kumar sir to please ask one question. So maybe किसी को बोलो ना, क्या नाम है? Richa Purohit ma'am, we request you to please ask one question. Hi, you have already told about chudi and nose pin and your hair. Yes, ma'am. So, what are other attire that are popular in UP apart from this orange color sari, and what do you put on as jewelry with those dresses?
Ma'am, in Uttar Pradesh, bridal look or the red sari is very famous with Sola Singar. That is the main tradition of Uttar Pradesh for married women, mostly at the time of wedding. They used to wear sindoor. That is the most precious nishani of married women. But if I used to apply it, then it would be disrespect for that because I am not married. And apart from that, the चूड़ा इट कम्स चूड़ा जो प्रॉपर चूड़ी का सेट होता है जो कि मैरिड वुमेन शादी के बाद पहन के रखती हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेहंदी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट etc. Okay, good job. Thank Thank you. you. Big clap for her. It's not easy to come here and speak like this, right? It's first times. Hello. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. I'm from Kerala. I'm Joanne Jofi. I'm from Kerala, Trishur. And I am in attire, in a beautiful attire from Kerala, known as Set Sari. All of you, some of you might have been knowing it. So Set Sari is basically a colorful blouse and a white sari, a plain sari to be honest. So we have this and like for boys, we have plain color white plain munda, lungi you say, and colorful kurti or shirts. So this is the traditional wear of Kerala. So as you can see, I'm in that attire. So Kerala's known for lush green places and the backwaters, and it's known for its beautiful, what do you say, beautiful place, and it's very rich in spices and a very well known Onam Sadhya. So it's very like it's very known for its sadhya all over the world. So yeah, I represent Kerala. Yeah. So the next faculty I request is Sir Bapurao Bangar sir for the question. So please. Pass it on this one. ये वाला pass करना, ये वाला pass करना. Ladies and that, but still I have the chance of staying in the Trivandrum, and I observed the event of that Pongal. So many ladies comes on the road and they cook the rice that. But I found that as a we know that the state of as a literacy is the highest literacy state and where the maximum ladies are literate, and they come to the and they have the along with that they have the more cultural like environment is there, and they maintain that. They put the hair oil on that. That is that is coconut oil on the hairs with that. I just wanted to ask that, like people, most of the like in Kerala, they utilize the oil that what that coconut oil. Okay, what is the specialty of that they use in any various, including cooking and all that? What is the importance of that? Like, I just want to ask about. Thank you. So Kerala's like known for coconut trees basically. So like 33% of spices from India is exported from Kerala, and about coconut trees, coconuts, about 65% of coconuts are imported is from Kerala. So like Kerala is very important for the oil, the copra what you say, and yeah, all the foods made from coconuts are like very important in Kerala. Yeah. Thank you very much. Yeah. Hello. Yeah, Zofi, for a moment. Uh, your dress doesn't define to be the Kerala sari, is it? Yes, it is the Kerala sari. Normally, like Okay. brides for the That Kerala wedding. white sari, is it different from that? The It usually is the little Kerala different, white sari, the but people. this is like the better version. Like This is normally you use the white sari. okay. This the brides use as the Onam sari itself. But Okay. like yeah, Okay. brides in Kerala use this. Good. Thank you. Sure. Yeah, the next one. And please, you'll be getting just 1 minute to say for the question answer round. We have long list to go. Jai Shri Krishna to all the respected members and all my dear friends and all my seniors present here. So myself Hiral Vakharia, I am a BBA student and
I'm wearing a Ghagra choli, which represents Gujarat. As all you know, જ્યાં ગરબા થાય છે, ye Gujarat છે. We are Garba lovers. I'm wearing the Ghagra choli and all this necklace. And the jewelry is very famous of the glass jewelry. And except for Ghagra, we also wear Patola sari, which is handmade. And I am representing our culture, and people in Gujarat are very sweet. And thank you. Yes, may I request Professor Ashwini Shinde ma'am to ask question? Hello. My question is, you have mentioned when you are introducing yourself, Jai Krishna. So, what is the significance or importance of Ras Leela when you are playing Garba also? So, what is the importance of Ras Leela? Actually, the importance of Ras Leela is from Sri Krishna's time. They were doing Ras Leela. So it is very important for our culture because it is coming from our history. And we have to, we have to follow our history and we have to respect our culture. So I think it holds a very important place in all of our hearts whenever we do Ras Leela. And also in history, it was not allowed to see Ras Leela when Sri Krishna was doing it with all the gopis. So yes, it holds a lot of importance in our life. That's it. Thank you. A big round of applause. Next participant. A very cheerful evening to everyone present here. Let me introduce myself shortly. My name is Kumari Arthika Sanjay Upadhyay. I'm a national black belt karate player. Also, thank you so much. A proud NSS volunteer with a lots of hobbies. I have also represented my previous university in Republic Day Parade, Mumbai. Thank you so much. Talking about my attire, today I am wearing a Kori look. It is basically from Maharashtra. It represents the strength of fisher community, and fisher women wear this attire for fishing, and it is basically a coastal community outfit. Thank you so much. First, Namaskar to you. Question to Varsha Bhagwat ma'am. Please, ma'am. हेलो अर्तिका माय क्वेश्चन फॉर यू इज मैं मराठी में बात करती हूँ तुला कोळीमध्ये गणपती आणि गौरीचा सण कसा साजरा करतात तू डिटेलमध्ये थोडं सांगू शकतेस का मॅम मला एवढं माहिती आहे की कोळीमध्ये कल्चरल इम्पॉर्टन्स खूप आहे आणि फोक डान्सला खूप इम्पॉर्टन्स आहे तर आय गेस की कोळी नृत्य आणि कल्चरल इम्पॉर्टन्स लाईक गणपती आणि गौरी जे तुम्ही म्हटलं याला खूप व्हॅल्यू असते आणि आपल्या महाराष्ट्रात हे सगळं फेमस असल्यामुळे ते आपल्यासाठी पण खूप हिस्ट्री आणि व्हॅल्युएबल आहे थँक्यू सो मच ओके नमस्कार नमस्कार माझं नाव सिद्धी देशपांडे आज मी ही नऊवारी साडी घालून आली आहे ही नऊवारी साडी नुसतं महाराष्ट्राचं प्रतीक नव्हे तर सुंदरता संस्कृती आणि स्त्री शक्तीचं एक प्रतीक आहे ही साडी घालताना मला अभिमान वाटतो की मी एक मराठी मुलगी आहे आणि आज मी महाराष्ट्राला रिप्रेझेंट करते May I request Manisha More ma'am to ask question? येस ऋतुजा सिद्धी सिद्धी सॉरी सिद्धी मराठीमध्ये पहिला प्रश्न माझा असा आहे तू जो काष्टा घातलाय तो काष्टाचा कोणता प्रकार आहे मस्तानी ओके आणि दुसरा प्रश्न असा आहे जसं की आपण समोर पहिल्यांदा एकमेकाला भेटतो तेव्हा आपण ग्रीट करतो गुड मॉर्निंग वगैरे तसं मराठीमध्ये काय म्हणतो नमस्कार सुप्रभातम और अजून राम राम मंडळी येस बोलो बोलो जोर से जोर से बोलो राम राम मंडळी कसे आहात कसं काय बरं आहे का कसं काय बरं आहे का Great, great. Big clap for her. Next participant.
Good evening, dignitaries, my seniors, my fellow batchmates, and the parents. I am Sindhi, just koki chai, trying to be jalebi fafda. I am representing Gujarat. It is already done earlier, but yeah. Done. Okay, may I request Rekha ma'am to please ask one question? So you've been Sindhi, but I heard that you are representing the Gujarat, right? Yes. So Gujarati attire, normally people wear lot of ornaments. So Yes. that's missing. So could you please name all the ornaments that goes with the Gujarati female attire? Uh, Actually, I don't carry so much knowledge about jewelry because I'm a minimalist. So I carry my jewelry very minimal. So I just don't carry so much of knowledge. All right, but whatever the odni that you are having, Yes. so the addition to that, that fall or the lace, what it's called? Sorry, I did not get it. Any particular name for that? Addition to your chunni, the side lace. कुछ बोलते हैं सिंधी में? Any pattern for this ओढ़नी? Like Punjab में we say फुलकारी. Um, You just like that dress you wore? yes. So there's no actually traditional value, correct? No, it carries a traditional value. I am open to every culture that No, comes no, in. I'm talking specific to this dress that you are wearing right now. Okay. No, it carries So a you don't know very which pattern significant it value. is, which fabric it is. No? It is cotton that I'm wearing. All right, no worries. Thank you. Yeah, thank you. Okay, Bhavika, wait for a while. Let us forget all of that and something coming from your own syllabus now. As you said, you are from Siddhi. Siddhi, right? Sindhi. Siddhi. So we have Sir from Siddhi background. So he'll be saying one question to you. First of all, Jai Jule. Jai Jule. Can you speak two lines in Sindhi, like if you can? छा ॻाल्हायां तव्हां ॿुधायो. Mast tव्हां ॿुधायो. Thank you. अरे Wow. Big clap. That was good one. I missed What that. it means? Can you please tell us what it means? I asked her how is she, or I told her to tell two lines in Sindhi. She was like, "How are you? And what are you doing?" So I was like, No. "Yep." I said. You said. I said. न छा ॻाल्हायां तव्हां ॿुधायो. Okay, she said. I heard. अच्छा okay. She ठीक said, आहे. हले. "शा ॻाल्हायां तव्हां ॿुधायो," which means क्या बोलूं आप बताओ. Okay. I said whatever you want, you can speak. Okay. Namaskar and good evening to one and all present here. I am myself Barbie Bashir and I come from a tea state, Assam, Guwahati. And the attire I'm wearing today is a mekhela chador. It's a two-piece sari and I'm pairing this with some traditional jewelry. I'm wearing a bangle which is called as muthi kharu in Assamese and earrings which is called as kanful. Thank you so much. So may I request Debasita ma'am to please ask one question from your state? Actually, ma'am, she is not from my state, but she is from Northeast, and I am as well from Northeast. So I would like to ask you how Northeast culture represents all over the India. What are your thoughts regarding that? So, Northeast is not that well known in the North. Like people don't really know about the culture of Northeast, but Northeast is like very diverse. Different tribes, even in Assam, like there are different tribes. I'm just wearing a Assamese attire, but there are hundred of different tribes wearing different, having different culture and having different attires. But I truly think that Northeast is a great place to visit. People are really good there. The food is a little less masaledar, but people here in North have a lot of masalas. But you'll surely find good food, good people. Please do visit Northeast, and thank you so much. Yes, big clap for her. Next participant.
Sat Sri Akal to everyone. My name is Sitika and today I am representing Punjabi culture and I am wearing Punjabi fulkari chunni, Punjabi kurti and Punjabi that not a place, that's emotion. We are uh, like we listen sound that dhol we makes garba not sorry like bhangra and thank you. So may I request Priyanka ma'am to ask question? Good evening to everyone. You all look very beautiful and smart. Welcome to SBUP family. My question is that you belongs to Punjab. So I don't want to ask a question. I want you make a dance two step of Bhangra. So everyone enjoy. You want to give my एक्चुअली मैम मैं पंजाब से नहीं हूँ बट लाइक आई एम ट्राइंग Yes, she can dance like whatever she feel like. Music, please. Good. Big clap for her. Our last female participant. Last minute. मला फक्त एकच परमिशन पाहिजे टीचर्स कडून घेऊ. जय महाराष्ट्र पब्लिक. छत्रपती शिवाजी महाराज की. जरा मोठ्याने महाराष्ट्रामध्ये आपा. छत्रपती संभाजी महाराज की. थँक यू सो मच फॉर रिप्लाइंग दिस. तर आता मी कम्फर्टेबल मराठीमध्येच कारण की मी लुक महाराष्ट्राचाच केलाय बट बेसिकली मी महाराष्ट्राचा नाही केलाय मी थोडासा काय बोलतात कोल्हापुरी टाईप केलाय. साज माझा थोडासा कोल्हापुरीचा आहे. ठुशी बोलतात ज्याला कोल्हापुरीमध्ये. इयरिंग्स तर मी मिसमॅच केलंय अँड नथ वी ऑल नो. सो या दॅट्स इट. बांगड्या वगैरे तर तुमच्या सगळ्यांना माहितीच आहे. या. So may I request Varsha ma'am to please ask one question? Yes, you're looking so nice and you so much. Nath and my favorite Nath. I would like to ask one question. Whatever the necklace you wore, what is it is called as? ठुशी. Tushi. And one more question that Maharashtra is said as land of saints. Can you talk something about saints in Maharashtra? सॉरी. सेंट्स संत महाराष्ट्रामधले जे संत आहेत आपण म्हणतो महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे तर संतांबद्दल तू एक 2-3 वाक्य बोलू शकतेस. संत जेवढं मी ऐकलंय ते संत तुकाराम एवढंच ऐकलं आहे ज्यांनी आळंदीमध्ये समाधी घेतली आहे आणि वी ऑल नो तर त्याच्या पुढे तर एवढं जास्त मला काही माहित नाहीये. Okay, yeah. Thank you so A much. big round of applause for all the female participants. It doesn't look like it's their first day, isn't it? Big clap for their confidence. Guys, please. Now, we will start with male student. Good evening, everyone. I am Varun Chevani, and I am not representing any culture or tradition. I am just representing India, so I need to talk in Hindi. Actually, मैं यहाँ पे BBA कोर्स में एडमिशन लिया है जिसके लिए मैंने यहाँ पे BBA कोर्स में एडमिशन लिया है और आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि स्टाइल मैटर करता है ना ही कोई कल्चर या ट्रेडिशन. उसे आप अलग अलग कल्चर या ट्रेडिशन में परफॉर्म कर सकते हो. Just say your name again. वरुण शेवानी. Varun sir. May I request Argadeep sir to ask one question? Hello Varun, tell me your favorite festival and why? My favorite festival is Chalia Sahib cause I own a temple of it. I own a temple of Julelal, and from my childhood I have celebrated it in much more celebrated way. Means more than Diwali. So my every wish is they complete. That's why. Thank you, Varun. Next contestant, please.
Good evening, everyone. First of all, thank you SBUP to give me this opportunity. I am Jay Rathod from Surat. ड्रेस कोड देख के तो आपको पता ही चल गया होगा कि गुजरात से है. My dress is represent kurta pajama or KDU is represent for Gujarat. Thank you. I request Professor Ravindra sir for a question. Hello. Yes, sir. So how would you define your personal fashion and style? Yes, sir. Sorry. How would you define your personal fashion and Personal style? fashion. Yes. Personal fashion, my fashion so मतलब ramp walk. Fashion, not passion. क्या? Fashion, your dressing. क्या सर? Sorry. नहीं सर, समझ नहीं आ रहा है. How would you define your personal fashion? Your dressing. ड्रेसिंग मतलब ये ड्रेस कोड मतलब ये जो Yes, है yes. ये टीका है, Yes. ये कार्ड है, ये पूरा मेड बाय माय सिस्टर. What is the importance of this? इम्पोर्टेंस इसका ये है कि ये देख के ही सबको पता चल जाता है कि ये गुजरात से है. और यही है सर. Yes. Is this Gujarat's traditional attire? Yes. What is the Gujarat's traditional attire called? केडियू और पायजामा, so कुर्ता is it पायजामा. that? यस, कुर्ता पायजामा सर. Kurta pajama is not Gujarat ka traditional attire. केडियू ही है. केडियू. Kediyu is different. That ghera wala. हाँ. So that's the one. Is it that? थैंक यू. Okay, big round of applause. Hello everyone, good evening. My name is Ans Rakesh Bhai Parmar. I am from Surat, Gujarat. First of all, કેમ છો બધા મજામાં ને? मुझे मैं यहाँ पर सच ही बता देता हूँ, इतनी इंग्लिश कंफर्टेबल नहीं है, इसीलिए मैं अभी हिंदी में ही बात करूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे हो आप सब? हमारे गुजराती में एक वर्ड है ना, बहुत फेमस है. कोई भी कहीं भी जाता है ना तो पहले यही पूछता है, पहले जय माता जी, जय श्री कृष्ण, केम छो बदा. ये हमारा जहाँ भी जाते हैं हम लोग, वहाँ पर सबसे पहले किसी का हालचाल पूछते हैं, क्योंकि कोई कौन सी कंडीशन में कैसे, वो सब पहले पूछना जरूरी है. ठीक है. अंश. अंश, ओके. आपके लिए क्वेश्चन पूछेंगे हमारे फोटोग्राफर सर अमर सर. प्लीज सर, एक क्वेश्चन हो जाए. पूछ लो उनसे प्लीज, एक छोटा सा क्वेश्चन, कुछ भी. गुजराती में टोपी पहनते हैं ना? लाउडर इनफ सर. गुजराती में टोपी पहनते हैं ना? हाँ, वैसे बहुत बाल कट कहिए हो तो टोपी पहनते हैं, लेकिन टोपी पहनाते भी है दूसरे को. क्या बात है. और टोपी पहनना कम, पहनाना ज्यादा, क्योंकि वी आर बिजनेसमैन. क्योंकि गुजरात में जो भी है वो ज्यादा नौकरी से ज्यादा बिजनेस करता है, क्योंकि बिजनेस वो गुजराती के खून खून में होता है. थैंक यू सो मच. वेरी गुड. कौन से प्रोग्राम में एडमिशन लिया है? एमसीए. एमसीए. थैंक यू. वेरी गुड सेंस एक ऑफ सॉफ्टवेयर ह्यूमर. का कंपनी खोल लेना. गुड इवनिंग, माय नेम इज़ जपेश धमनानी. मैंने बीबीए इंटीग्रेटेड में एडमिशन लिया है. मैं नॉर्मल अटायर पहन रहा हूँ, ट्रेडिशनल का. मैं कोई भी मतलब कास्ट वास्ट नहीं मानता, जो हर कोई पहन सकता है मैं वैसा पहन रहा हूँ. सर जी, कोई कास्ट नहीं करनी थी, रिलीजन कल्चर फॉलो करना था. कल्चर, कास्ट वी हैव नॉट आस्क्ड फॉर. कल्चर, एनी कल्चर यू हैव. और I am belong to Sindhi, but I am not wearing any Sindhi, a normal traditional costume. Can you tell your name again? Japesh Dhamnani. So may I request Purushottam sir to ask? Ajit. Ajit sir, to ask one question. Okay. I would like to know the meaning of your name, Japesh. Chanting of God's name.
Okay, can you elaborate it? कोई भी भगवान के नाम का जपना. Okay, good answer. Thank you. So may I request next participant to come fast? Good evening, my respected dignitaries, teachers, and my dear friends. My name is Sandeepan Chaudhary, and today, with pride, I'm representing the culture of Bengal. Bengal, since the 12th century, has been at the crossroads of several cultures. But through that, we have made our own identity. And this dress is a proof of that. Every Bengali dress, especially the kurta and dhoti, is carved with intricate carvings which depict a story. That's why every dress is not a dress. It's a struggle, it's a story which tells a lot about the people who have made it. Thank you. Thank you so much, Sandeepan. Question from Gayatri ma'am. Gayatri Naik ma'am, please. Hi, good evening. Good evening, ma'am. So I would like to ask you, could you describe मैं ही भूल गई question. हाँ, could you describe key element or features of your traditional attire and what make you different from other contestants? Thank you. First and the most important thing which sets apart the Bengali clothing or the traditional clothing or other clothing is the rich amount of storytelling that goes into it. Normally in men's clothing across cultures we don't see that much storytelling, but even in my dhoti there is a local folklore embedded into it. This makes us proud of the fact that we are wearing a dress which not only is a dress but is depicting our background, our roots, and where we are from. This keeps us grounded in our approach and lets us not forget who we are. The second most important thing of this is that this is not just a dress, but it's a continuity of history. As we know, briefly, Calcutta, under the British Raj, was also the capital of India. But at that time, several practices were taken to break apart Bengal. This is at this time we see several reemergences in Bengali culture, and this simple kurta and dhoti is a significant part of it because this was a clothing not only Sandeepan, worn by aristocracies just a moment, just a moment. It would go on and on. We'll hear the whole of the Bengal history. So kindly give time for just in 1 minute, not even in 1 second, you can just complete the answer. Okay. Okay? So yeah. So it was worn by both aristocracies and by the common class. So it gives a uniting factor. And lastly, the third feature is that this dress reminds us who we are actually. Thank you. Yeah, big round of applause. Bachelor Liberal Arts. Okay, next participant, please come forward quickly. Good evening, everyone. My name is Aryan. I am from Surat, Gujarat. I wearing a kurta and pajama. I will continue in Hindi क्योंकि इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है. गुजरात में सब लोग ज़्यादातर ऐसे कुर्ता पायजामा सब फेस्टिवल में पहनते हैं. थैंक यू. So may I request Purushottam sir to ask one question? Hello. Good evening, everybody. First of all, I would like to say that all the boys and girls are looking very nice and confident, and the efforts you have taken for your dressing is very nice, appreciable. Coming back to you, you said you are from Gujarat. I would like to ask that I know that Gujarat has a good dishes, different types of food. Culture is very rich in Gujarat, but and Gujarat has very different types of what we say utsav also. Okay, so I would like to ask that what is your favorite utsav among them? My favorite festival is Ganesh Chaturthi. Okay, Thank you. Okay, big round of applause. Namaste everyone. I'm Shri Krishna Vikram Dhumal from Pune, Maharashtra. So basically, I've dressed in Maharashtrian dress. Like I have a rose pink color kurta, a Maharashtrian jacket, and a paisama. To introduce myself, I've
done my 12th, like 11th and 12th from military college in Loni. Thank you. Shri Krishna, Dumal. So may I request Babu Rao sir to ask question again one more time? As you said, you are representing the Maharashtra and you are wearing a paisama and kurta. Yes, sir. But generally, we know that Maharashtrian style we have the topi and all that. It Yes, is sir. there. But anyway, okay. Okay. Most of time we see that these political people wears this jacket and for the this costume like that. Yes. So I just want to know like how this signifies that like people attach the significance of this wearing jacket and this kurta for the any festival that like. Okay. Can you say that what is this significance or importance of that? So basically, I don't know political side well. Like I'm not interested in that field. Okay. Sorry, but yeah, like to enhance and we say that first impression is last impression. So for the politicians, their first impression, of course, is what matters more. So basically to enhance more and express more, they wear the jacket. Okay, along with the jacket and pajama kurta, generally they wear the Kolhapuri chappal, something like Yes, that. yes, yes. Yeah, that type. But I saw that you wear the shoes Yeah, that. I just that is, gave a modern touch to it yeah, yeah, by yeah. adding a shoes. Yeah. Okay, okay. Thank you, Thank you. Thank you. I thought even Kolhapuri chappal will be in his pocket, second pocket. Kolhapuri chappal has become pricey these days. I hope everybody knows. Reason being Prada, right? So that's the reason. Chalo, next one, yeah, please. नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम शिवम संतोष सिंह है। मैं वैसे तो मैं यूपी से हूँ, उत्तर प्रदेश से, पर आज मैंने आउटफिट राजस्थान का पहना है। इसको जोधपुरी कुर्ता बोलते हैं। रॉयल्स में ज़्यादा है और मैं वैसे भी राजपूत हूँ तो मेरे में तो और जचेगा ही। So may I request Danaji sir to please ask one question? राजस्थान की ऐसी कौन सी विशेषता है जो भारत देश की विशेषताओं को उभरने का कार्य करती है? सर उधर ओल्ड ट्रेडिशन बहुत है, सबसे ज्यादा उधर ही कल्चर ज्यादा मानते हैं और उधर ओल्ड टाइम में मतलब प्रॉपर कल्चर अभी भी उधर मान रहे, मॉडर्निटी उतना नहीं आया है। अपना इंडियन के लिए वो बेस्ट जगह है कल्चर दिखाने के लिए, टूरिज्म के लिए हो गया, वो प्रूफ करेगा आपको जो इंडिया जो रियल है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। Thank you, sir. Yes, big round of applause for all the participants. You all are looking so lovely. Big clap for yourself. You can clap for yourself. So just give us 2 minutes. We will be announcing the winners. We are requesting ma'am, Preeti Joshi ma'am, to come on the stage. You can just play the music so that they can walk again. May I request Richa ma'am to come on the stage?
I want you to work it for me like this. Yeah. Yeah. Show me what you got. Come on, show me what I'm working with. Yeah, show me what I'm working with. Yeah. Show me what I'm working with. Do it, mama. Yeah. Hello. So we have got the results. Judges have done their part. Now we have to announce the result. But before we announce the result, let us tell everyone present here that you all are looking fabulous, wonderfully. You have answered the questions that the judges have asked you with your culture, with your attire that you are wearing, or with any other part of related with your attire. Or how have you come here? Because we have told this to everyone of this junior batch, this freshers batch, that on this first day, on 18th of July, we will be having traditional day competition. But see, only 8 students and 10 girls, 10 or 9 girls are here who have followed the instructions, the statement that we have given in our offer letter. For all of us, you are already winners. See, everyone got this opportunity, but they did not come. You only came and you are already our winners. Congratulations. So let's move towards the result declaration. So we'll first announce the second positions. For boys. Yeah. Yeah. What is the name that you are saying? Boys. For boys category, na? I couldn't hear it. Parmar. Tell me some another name. Acha, they don't remember the name now. So I'll request. They don't remember the names. Okay. Okay, so I'll request Preeti ma'am to announce the second or the runner up for boys. Shri Krishna Dhumal. Girls, boys, yes, Shri Krishna Dhumal. Okay. This. Okay, second, okay, let me find out what's the name because I'm not wearing my specs, so I need to take help of somebody. What's his name? Shri Krishna Dhumal. Okay. So second prize goes to Sri Krishna Dhumal, BCA.
So runner up, he has got the prize money worth rupees 2000. He can collect it from the department later. Seniors, don't drag your juniors. Parents are here. Teachers are also here. Okay. So runner up in girls category is, can you name? Runner up in girls category is, now she can read it out, I think. She doesn't need specs. No, Why you are revealing all the age factors? Yeah. Okay, we have the second runner up in the girls. Okay, we have only two prizes. Okay, one runner up. Barbie Basija from BA Psychology. Considering the issue of specs, I'll announce just two names. So the winner in boys category is, who is the winner in boys category? Our Mr. AI, Sandesh Chaudhary from Liberal Arts. Congratulations. Don't do this. See, students, you don't have to touch the feet of your seniors. This is not the tradition of SBUP. Okay. So the winner in girls category is who? Karate? Miss Karate? I don't remember her name. Let's see. So it is from MCA, Arthika Upadhyay. Congratulations, Arthika. So both winners will get 3000 rupees cash and both runners up will get 2000 rupees cash. Our winner in boys category Sandesh na? Sorry, Sandeepan would like to thank her mom. Mama, love you. That's it. Congratulations everyone, and congratulations and thank you for being in the traditional attire. So today's event is over. Thank I have already given the thanks. Okay, thank you all the judges for being a wonderful judge and making this entire event wonderful. Thank you, ma'am. Okay. Let them take the photos. बिठाओ बिठाओ बिठाओ. Guys, please wait, please wait, please wait. Calm down, calm down, calm down, calm down, calm down, calm down. Closing ceremony is remaining. Please wait. We will take 5 to 10 minutes of yours. That's it. बताओ. स्टैंड पे लगा दो इसको. स्टैंड पे कर दो.
लगे नैनो की बुलेट दिल पे खाए लगे